Hello, chat. We are live with day number 4 of the Prague Masters, Prague International Chess Festival. And this is the next round. And हमारे सामने है गुकेश डोमाराजू जो कल बुरी तरह हारे, if I can be honest and not mince my words. But hopefully आज बुरी तरह अपने opponent को भी हराएंगे. उनके सामने बैठे हैं David Navara, who at one point was like a 2750 player, yeah, close to that, and world top 10 player थे. And उनकी एक famous game है जहां पे मिडिल गेम में वो अपने किंग को कुछ पता नहीं E1 से लेके G8 पे लेके जाते हैं लिटरली फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड एंड विंस द गेम बाय प्योर प्रिपरेशन. इनफैक्ट इतनी तगड़ी प्रिपरेशन थी कि भाई उनके ओपोनेंट, उनको लग रहा था कि भाई मेरा ओपोनेंट चीटिंग क्लेम कर लेगा. इतनी क्रेजी प्रिपरेशन थी वो. एंड सो ही इज वेरी 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 वेल प्रिपेयर्ड. सो ओपनिंग में हराना उनको आसान नहीं रहेगा. वेलकम चैट, वी आर रेडी. एंड एक बार चैट सब लोग हाई लिख दो भाई, जो लोग आ चुके हैं भाई. एक बार नमस्ते, प्रणाम, प्रकार, जो भी है. दुनिया में बहुत चीजें चल रही हैं आजकल, ऊम धराम. सो कुछ काम देखने के लिए हम आए हैं शतरंज के बोर्ड के ऊपर. मीनवाइल गुकेश व्हाइट पीसेस आज जीतने के चांसेस हायर बिकॉज व्हाइट है. सामने प्लेयर है डेविड नवारा, नॉट एट हिज पीक नाउ, ही इज इन द लैटर हाफ ऑफ हिज करियर जस्ट लाइक मी. तो हराना में भी शायद आसान है एज कंपेयर टू मेनी ईयर्स अगो. When checkmate is India, पता नहीं यार वो कब होगा, बट अभी तालियां बज रही है तो I'm guessing very very soon. होला बिल्कुल भाई. Vanakkam. Well, let's go. Is Gukesh now really below Russian GM Karyakin? Yes, Chad. By the way, I saw a tweet by Karyakin on Twitter today, and apparently he's now in the world top 10. He's active in the March rating list. तो March की rating list कल आएगी. How does he have access to rating list before us? I don't know. ये मुझे नहीं पता. बट अगर वो खेल चुके हैं एक भी टूर्नामेंट तो वो एक्टिव हो गए होंगे और उनकी रेटिंग 2750 थी. तो इसका मतलब वो वर्ल्ड नंबर 10 हो जाएंगे. एंड इंडियन कोई भी प्लेयर टॉप 10 में नहीं होगा अनलेस गुकेश विंस टुडे. दैट इज द ओनली वे वी गोना. Oh, we can't have it even then actually because he will not win enough points. So definitely tomorrow इंडियन कोई भी टॉप 10 में नहीं होने वाला है भाई, because Karyakin will take that spot. But okay, I don't know if he's actually playing, if he's actually played. So let's see क्या होता है. Meanwhile, but 2 दिन में वापस जरूर ले सकते हैं. So yeah, let's go full stream because game starting. By the way, let's not forget 3 और games है. We also have Aravindh Chithambaram. By the way, काफी जंप मारा वहां पे उन्होंने. क्या कर सकते भाई, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा हाँ, गुकेश के बोर्ड पे नहीं हूं मैं. Oh my God, मैं सूर्य के बोर्ड पे हूं. Let me go to Gukesh's board. Yes. Okay, so we have E4, E5, Knight F3, Knight C6. एक और E4, E5 typical opening. ये यार arbiter of cameraman गलत साइड बैठ जाते हैं भाई. वो कैमरा, बड़ा कैमरा जो है उसको देखें. But okay, now bishop to B5 I can see on the board. Knight F6 and D3. We've already seen this exact opening before in the tournament. So David Navara will be well prepared. Bishop C5. आई थिंक हैंड्स ने भी खेला था उनके साथ. सो फिलहाल के लिए हम सेम ओपनिंग में हैं. एंड ऑफ कोर्स चैट वी हैव अरविंद चिदम्बरम अगेंस्ट विंसेंट काइमर. दैट्स गोना बी अ फैसिनेटिंग गेम. वी हैव दिव्या अगेंस्ट फिनिक वाकलाव. आई थिंक 2565 आईएम. बाप रे, 2560 का आईएम भी है दुनिया में भाई. क्या हो गया भाई राकेश भाई, कितनी रेटिंग वाले जीएम से बड़ी रेटिंग है इसकी. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव सूर्य गांगुली अगेंस्ट स्टेफन हर्बेक हुज 2478. वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट. लेट्स होप नॉट भाई, लेट्स होप नॉट. लेट्स होप कि सारी वॉर्स चेस बोर्ड के ऊपर ही हो. एंड मीनवाइल C3 के बाद डेविड नवारा हैविंग हिज फर्स्ट लाइट थिंक. दे कैन एटलीस्ट पुट ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस भाई. कई बार मैं रिग्रेट करता हूँ सारे कमेंट्स पढ़ना. थोड़ा फिल्टर करना चाहिए मुझे दिमाग में. बाय द वे चैट, कैसल्स प्लेड बाय डेविड नवारा. थोड़ा बोर्ड की मूव्स पहले आ रही है, कैमरा थोड़ा सा 10 सेकंड डिले लग रहा है. बट या बोथ प्लेयर्स प्लेइंग वेरी वेरी क्विकली. एंड चैट, क्या हाल चाल भाई,
कैसा गया आपका कल का दिन? अब वीकेंड आ चुका है, क्या प्लान्स है वीकेंड के? क्या किया आज, क्या प्लान्स है कल के? कल ऑफ कोर्स इंडिया वेस्ट इंडीज भी है, एंड यू गाइस आर गोना वॉच इट एंड मुझे अपडेट्स दोगे आप लाइव. But the castles played, and now apparently d5 could be the main way to play. कोई यहाँ पे यूजुअली यहाँ पे a6 b5 के प्लान होते हैं, बट यहाँ ब्लैक ने कोई भी ऐसी जरूरत नहीं करी धक्का लगाने की. And now he plays d6 defending the e5 pawn. So yeah, काफी solid choice by David Navara. Of course, rook e1, e4 pawn defend करते हुए d4 की तैयारी. So maybe now a6, yeah, giving the bishop the a7 square could be very, very crucial. बोर्ड एग्जाम टीटी, अरे भाई कोई बंदा बोर्ड एग्जाम में फंसा हुआ है, कोई बंदा श्रीलंका में फंसा हुआ है, क्या करे? Who do you think will be world champion if it weren't for Gukesh? I think the winner of the candidates, Koisman bhai. I think that I'm kind of sure कि जो कैंडिडेट जीतेगा, and Gukesh अगर नहीं जीता तो वो बंदा जीतेगा. प्राग के कैंडिडेट्स प्रिपरेशन में क्या क्या चेकलिस्ट होगा भाई? I think it's not a checklist you can have, because different players के लिए आपकी opening preparation different है. And also I think there'll be common elements to middle game and end games and tactics and theory, but then there'll also be specific elements, specific checklist for different players कि ये बंदा ये opening खेलता है, ये बंदा ये opening खेलता है. And you also have to preempt कि कई लोग नई opening खेलेंगे जो आज तक नहीं खेली है, because that's very common for the candidates, right? Because आप चाहते नहीं हो कि आप प्रग हो, आप चाहते नहीं हो कोई और ओपोनेंट आपकी ओपनिंग्स गेस कर ले, तो आप कुछ नया खेलोगे और वही बाकी लोग भी करने वाले हैं. सो इट्स गोना बी अ बैटल ऑफ विट कि भाई कौन किसको ट्रिक कर सकता है. भाई जाके पढ़ाई करो, ये डेली का वही ड्रामा है. नहीं भाई, आई थिंक आज जीतेंगे भाई. अगर आज नहीं जीते तो आई स्टार्ट क्राइंग ऑन स्ट्रीम भाई. मैं वो कार्लसन की पीछे वाली फोटो तोड़ दूंगा भाई, लिटरली फ्रस्ट्रेशन में कि भाई कार्लसन भाई कैसे खेले हम आपकी तरह, बताओ यार. How many cameramen they need? I don't know. I think they're not just cameramen in general. These are also fans who've come there to have watched the games actually. And yeah, सारे लोग पहले 5 मिनट के लिए आई थिंक कुछ यूजुअली अलाउड होता है, 5 से 10 मिनट के लिए. यू कैन टेक फोटोज, यू कैन रिकॉर्ड वीडियोज, उसके बाद यू हैव टू स्टे पिन ड्रॉप साइलेंट. सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग द फर्स्ट 5 to 10 minutes टू रिकॉर्ड फोटोज. एंड यूजुअली आई थिंक लोग सेल्फी लेते हैं, लाइक दे विल टर्न अराउंड, point the camera towards the player, and then they will take a selfie. That's how I've seen most players do it. What is next event? Next event after this is actually the candidates chat. So it's going to be a big one. And we all know candidates kitna important hai. Last time it was an absolute treat to watch for us. But is saal, if I have to be honest, we've not seen happy signs for any of the Indian players. But we also didn't see any crazy signs before candidates 2024. I don't remember as such कि 2024 में before candidates या 2023 के end में कोई ऐसा कुछ crazy wow, like मतलब जो we all remember. So I think of course ratings बढ़ रही थी players की उस time पे, but in terms of winning events there were not many big things happening. So maybe the candidates is the screw we need, to turn in the right direction and then things go correctly for us. Prague के चेस कैम्प में क्या होता है? I'll tell you something, not something which is, so maybe it's a secret, but maybe it's not a secret. So basically, जब I think before the World Championship, I think we were covering an event, and उस time पे मैंने पूछा था कि why did you not invite Gukesh to this event? And for some random event, and उस time पे गुकेश का कैंप चल रहा था पूरे महीने का. So you know कि भाई कैंप चलता है, and it involves many players, many coaches. And it can happen in different cities also, sometimes in local cities, मान लो चेन्नई में, या in the actual place also जहाँ पे tournament होने वाला है. So I would just say कि it involves the team getting together, चाहे online, चाहे offline, and just working hard on every part of your chess. That's basically it. प्राग के चेस कैंप में क्या होगा, वही मैं कह रहा हूँ. I think it will involve a lot of preparation भाई. और क्या, every part of chess. I think Magnus से पूछा गया था, what's the difference between you and a world top 100 player? So Magnus कहते हैं कि I am basically slightly better at everything than them. Basically every chess skill you can imagine, calculation, opening, endgame, whatever it is, he's slightly better than them at everything. And then world top 10 से 20 में of course there are subtle differences कि Magnus का जो intuition ability है, जो experience है, then that comes into picture.
सागर भाई, अरे सागर भाई कहाँ है? सागर भाई तो भाई अभी रेस्ट पे है, ही इज टेकिंग सम वेल डिजर्व्ड रेस्ट। तो साहिल भाई से बात क्वेश्चन पूछ सकते हो। हैव यू सीन द क्लिप गोइंग वायरल नाउ ऑफ नीश स्कोल्डिंग हिकारू नेपो? नहीं, ये कौन सी क्लिप है भाई? मैंने देखी नहीं है। एक बार सारे गेम दिखा दो। बिल्कुल देखेंगे भाई। आई थिंक ओपनिंग थोड़ी थोड़ी जम रही है यहाँ पे, सो लेट्स लुक एट ऑल द फोर गेम्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे विद अरविंद चिदम्बरम, बिकॉज सरप्राइज सरप्राइज, ही इज द वन हु इज लीडिंग द चार्ज अमंग द इंडियंस राइट नाउ। जितना भी बोल दो, अरविंद ने वो गेम में कमबैक तो किया, बट अब है असली टेस्ट। इट्स ई फॉर डी। अरे फिर से वही ओपनिंग भाई। I have to say this is extremely risky. You know what? Like तीसरी बार D6 खेल रहे अरविंद इस टूर्नामेंट में, and to play this again and again and kind of not be phased by what your opponent might prepare against you is insane. So full kudos to Arvind for finding. But if he loses somehow, then of course it's going to be questioned. But if he wins, oh my god, this is crazy. Meanwhile, we go to Surya Shekhar Ganguly, who of course lost yesterday, needs a win under his belt, has played some fascinating attacking chess, but finishing off में problems आई हैं, and the opponent has created counter chances at once. So यहाँ पे Surya with the black pieces, hopefully he can counter. And then of course Divya, after that loss yesterday, वो बहुत important game थी उनकी। हाँ, तो दिव्या कैम नहीं है, वो आ जाएगा। फोर नाइट्स ऑन द बोर्ड, दिव्या अगेन ट्राइंग टू अवॉइड ओपनिंग प्रेप, S3 D5 टेक्स, एंड यहाँ पे काफी सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर बोथ प्लेयर्स, एंड वील ऑफ कोर्स कवर दिस। ये भी बहुत टफ मैच है, बिकॉज सामने 2-5-6-5 बैठा है, एंड वो टूर्नामेंट लीडर है भाई। 2-5-6-5 रेटिंग है बंदे की, एंड इज एन IM। समझ रहे हो? 2-5-6-5 रेटिंग, एंड GM भी नहीं है, तो ये बंदा रेटिंग इतनी तेज बढ़ा रहा है, like he's speed running FIDE ratings right now. So insane, bhai. So will be a very tough match for Divya this one. And now we go back to a case जहां पे rookie one के बाद David Navara is thinking. Bullet on D6 खेला, exactly my point, भाई. He's playing D6 in the entire event, Arvind. So it's crazy. Did you see कि भाई हमारे वापस आ रहे हैं वो, क्या नाम है उनका, कयाकिन? बिल्कुल भाई, सरप्राइज सरप्राइज उन्होंने कुछ ट्वीट किया था। And if he is back indeed, that means he's played an event and his rating has been counted for FIDE. I think he'll be the world top 10, world number 10, sorry. And कोई भी इंडियन टॉप 10 में नहीं होगा tomorrow, that is 1st March. That's a sad detail. Actually, there is a rest day, chat. There is a rest day. The rest day is on 2nd March. So 9 round है, and 2nd March को rest day है. So it's 25th, 6th, 7th, 8th, 1st, then 3rd, 4th, 5th, 6th. So एक दिन रेस्ट डे है प्राग मास्टर्स में। आई एम होपिंग रेस्ट डे तक गुकेश लीड में आ चुके होंगे, अरविंद भी लीड में होंगे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी गोना बी टू लेट टू फिक्स द प्रॉब्लम। Will Ding come back anytime? I doubt it. We have not seen him play any events. एक ऑनलाइन इवेंट उन्होंने खेला था, उसका नाम था लूडो चैंपियनशिप। आई मीन SEC उन्होंने खेला था। आई थिंक ही लॉस्ट टू हैंड्स हॉरिबली। सो या, डजंट लुक लाइक ही इज गोना बी बैक। मे बी ही माइट बी हेल्पिंग वेई दो। वेई की हेल्प कर रहे होंगे वो साइड में फॉर द कैंडिडेट्स। Kraken is playing. Okay, I mean, I have not followed his journey since his chess days. I mean, chess days में मैं उतना follow नहीं करता था, to be honest. But I think Kraken's highlight moment, like when everybody got to know about Kraken, was that Queen H6 move by Magnus. I think that was just a brilliant finish. And he's a very strong player, of course. But I think in general, I've not seen him play chess for many, many years now. So I don't know क्या है चल रहा है, God knows. But मेरे को एक ही चीज फर्क पड़ता है भाई, कि कोई भी इंडियन टॉप 10 में नहीं होगा अभी। दैट्स माय ट्रॉमा। बाकी कराके का क्या चल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। होली की छुट्टी नहीं मिली इसको भाई। होली कब है भाई? कब है होली भाई? अरे ओ सांबा, कब है होली? बताओ भाई चैट, कब है होली? क्योंकि मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी भाई। होली पे तो हम लोग चिल करेंगे साथ में भाई। लेट्स गो। एंड 4 की है, बढ़िया भाई। तो हम लोग चिल करेंगे, एंड द ओनली कलर्स वी प्ले विद आर व्हाइट एंड ब्लैक। लेट्स गो। व्हाइट एंड ब्लैक की होली खेलेंगे भाई। मीनवाइल, रूकी वन के बाद इतना डीप थॉट में क्यों चले गए यार? मतलब दिस इज लाइक
ऐसा कुछ क्रेजी थ्योरी तो नहीं लग रही, वेरी बेसिक पोजीशन। 10th के मार्क्स, भाई स्कोर शीट दूं क्या? आई थिंक 81.2 थे, कुछ खास थे नहीं। टीचर ने बहुत डांट लगाई थी, बट या। Arjun won his first bullet brawl and 3-0 Thursday. That's amazing. But Arjun has won multiple of these events, yeah. Title Tuesday भी जीता है, freestyle भी जीता है, bullet brawl भी जीता है, and ये भी 3-0 भी, so he's doing very well. इतनी बेरंग जिंदगी, अरे भाई बेरंग जिंदगी इज ओके भाई। व्हाइट एंड ब्लैक आर द लाइक, कितने हजारों सालों से चेस गेम चल रही है, तो क्या ही इशू। हाउ सहज भाई बिकेम जीएम? सो सहज भाई बचपन से खेल रहे हैं एंड ही वर्क वेरी हार्ड। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं और प्रखर वी यूज्ड टू प्ले सम टूर्नामेंट्स, आई थिंक वी वर अनरेटेड तब। उस टाइम पे ही सहज भाई वाज लाइक अ जीएम, आई थिंक। लाइक मुझे याद है मैं प्रखर खेलने गए थे एंड उस टूर्नामेंट में टॉप सीड सहज था, दिल्ली में हो रहा था कोई। दिस वाज 2006 2007 आई थिंक, एंड हम स्कूल में थे तब, एंड सहज वाज ऑलरेडी अ जीएम तब। तो या ही इज बीन अ जीएम फॉर अ लॉन्ग टाइम। नॉट 6 7, आई थिंक मे बी अ बिट लेटर एक्चुअली। वाई नॉट जीएम भाई? बिकॉज मैंने बचपन से उतना खेला नहीं भाई। आई स्टार्टेड क्वाइट लेट। बाय द गुकेश भी सोच रहे हैं इतना टाइम क्यों भाई? I mean, and by the way, in this particular position, like we've had a bunch of games. For example, इस position में जो D6 डेविड नवारा ने बहुत जल्दी खेला, यहाँ पे main moves are knight D2, second is H3, third is bishop G5, and fourth is rook E1. But surprisingly, rook E1 has the best record for white on chess.com. And that's why David Navara, because it's not the most commonly played move. That's why he's thinking for longer. So makes sense, but 10 minute 15 minute, I'm not sure. And usually transpose ही होता है chat, of course, like usually it will not make a difference. And chat, of course, अगर knight g4, if you want a draw you can always just do this. But I think knight g4 के बाद white will play rook e2 and then kick the knight back with h3. And because black ने castle कर लिया है, there is no attack for black possible, कुछ h6 g5 g4, so h3 is pretty normal. ओके, नाइट E7, सो नाइट को लेके जा रहे हैं किंग साइड की तरफ। एंड इंस्टेंटली जैसे ही सेंट्रल पे कंट्रोल गया उस नाइट का, व्हाइट ने खेला D4, वेरी लॉजिकल। बिशप ड्रॉप्स बैक, आई थिंक नाउ A4, वेरी लॉजिकल। कहने ही वाला था मैं, टू ट्राई एंड ट्रैप द बिशप। एंड ब्लैक ऑफ कोर्स यहां पे A5 खेल सकते हैं, बट आई थिंक मे बी लॉजिकल, इवन मोर लॉजिकल C6, जस्ट गेट द C7 स्क्वायर फॉर द बिशप। There is no guarantee Ani Sarkar sticks with chess. Of course, there is no guarantee. Why? I mean, I would say कि becoming the youngest GM or youngest title player also doesn't guarantee anything. Oh yeah, Arav Dinger became a GM. Congrats to Arav. I met Arav, I think, many years back. उस टाइम पे 1800 था वो. And glad to see कि भाई he's been working hard on his chess since then. And yeah, GM बन के इंडिया को 100 GM होने वाले हैं भाई. It's not far away. I think maybe this year or next year we're gonna have like 100 grandmasters in India. How to reach 2000? भाई ये तो अपने पहला स्टेप, गेट डायमंड मेंबरशिप एंड सॉल्व पजल रश डेली भाई, डेली डेली 30 मिनट्स पजल्स। पहला स्टेप तो करो, फिर आगे पूछना। बढ़िया मोहित भाई, आप तो कैसे हो? बाय द वे फकत फिर सोच में डूब गए डेविड नवारा। Meanwhile, chat, just having a look at Arvind's game because it's absolute nuts. After h3, आया बिशप E7 एंड इंस्टेंटली विंसेंट काइमर ने जी पॉन फेंक दिया है। सो ही इज लाइक, आज तो आएगा विंसेंट का धुरंधर अटैक भाई। ही इज नॉट स्टॉपिंग। आता है H6 एंड ऑफ कोर्स यू हैव अ हुक विद G5 नाउ। बिशप E3, C6 एंड A4। भाई ये क्या है भाई? दोनों तरफ the he's swinging both ways, yeah, the pawns. So what do you do now? Because where do you put your king? I'm not sure exactly. Because आप किंग साइड क्वीन साइड जाओगे, पहले आपने G4 खेला, you weakened your king side. Now you go A4. If you castle queen side, तो B5 is instant hook for black. So what is Vincent's plan about his king is my question. And यहाँ पे white does seem to have a good record, but you need to make some committal choices. Yeah, where do you put your king here?
ऑफकोर्स ब्लैक के पास भी कोई अच्छा स्पॉट नहीं है, बिकॉज यहां जाएगा तो यहां अटैक, यहां जाएगा तो यहां अटैक, बट इट्स वेरी डबल एज्ड। हाँ, मेंबरशिप चैलेंज होने वाला है भाई। एक तो 500 लाइक पे होगा, और एक कल का पेंडिंग है। सो वेन एवर राकेश भाई ज्वाइंस, इंस्टेंटली वील हैव द मेंबरशिप चैलेंज। मुझे याद लाना, ठीक है? आई एम 2100, हाउ टू रीच एटलीस्ट 2300। आर यू 2100 chess.com और आर यू 2100 फिडे? बहुत डिफरेंस है दोनों में। हु इज इन टूर्नामेंट राइट नाउ? चैलेंजेस में तो दिव्या के ओपोनेंट लीड कर रहे हैं, एंड मास्टर्स में देयर इज लाइक अ थ्री वे टाई आई थिंक, बिटवीन डेविड नवारा, जॉर्डन वैन फॉरेस्ट, नोदिरबेक याकूब, ओ फोर वे टाई, एंड आल्सो नोदिरबेक अब्दुसर। तो चार लोगों का टाई चल रहा है। गुकेश इज इन 8th प्लेस, so he needs a win. He needs a win today. By the way, as Arvind thinks, this is of course a huge pressure situation for him. One look at the Divya game, I don't think we have our camera just yet, but position wise, I think feels like काफी solid position है. And Bishop F5, Black खेलेंगे, Rook E8 खेलेंगे, and काफी solid. So it looks like maybe draw के chances very high, although she's playing very quickly. She's in prep. Going back to Gukesh again. A4 के बाद no moves by David Navara, who's now down by 17 minutes versus Gukesh. There are many talents under 12. Arit Char, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं, I think. दिव्या गेट्स अननेसेसरी हेट। भाई क्या बात कर रहे हो, कौन हेट कर रहा है भाई? सबसे बड़ा हेटर तो मैं हूँ। जस्ट किडिंग ऑफ कोर्स। नहीं, आई थिंक अच्छा, देखो तुम कुछ भी लाइफ में करोगे ना, तो दे विल ऑलवेज बी हेटर्स। आई थिंक एक बहुत बढ़िया कोट है कि यू विल नेवर मीट अ हेटर हु इज डूइंग बेटर देन यू। सो हेटर तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का भाई। Arvind will win this tournament also getting FIDE circuit points. Um, See, FIDE circuit now is spanning 2 years, right? If I'm not mistaken. So FIDE circuit se qualify karna will be a big deal. And I think Arvind ka maybe he's not thinking about circuit right now because he's not been in great form. I think his first target is to get back in form, gain some rating, get some wins under his belt, and then he can think about कि भाई FIDE circuit में क्या करना है. By the way, okay, camera फिर blocked. 4 tournaments including Grand Swiss required in FIDE circuit. Yeah, of course. I think that's a good must to have कि आप साइड में कोई tournaments खेल के points इकट्ठे ना कर लो. Divya has pressure against Zhu Jiner and Alexandra Goretchkina. I'm not so sure actually because I think I mean there might be some history there कि and of course कई बार ना हमें history दिखती नहीं है. For example, they might have played some game 10 years ago or 7 years ago which where it started and we don't know about it, so that's definitely a possibility. But I would not worry too much because दिव्या ने हराया था दुजुना को वर्ल्ड कप में. That's what it mattered the most. And अगर कैनेडा जीत गई तो बाकी सब बुला दिया जाएगा. Main thing is you have to win when it matters the most. The main question is can VD win Tata Steel? भाई ये क्वेश्चन का जवाब मैं पिछले 4 साल से ढूंढ रहा हूं, अब तक मिला नहीं है मुझे. So I'm going to say maybe. Divya has gained fame so fast. भाई fame so fast से याद है about our own goofy chess. भाई fame so fast. Which Indian has the highest points and what's his position right? I think Arvind has the highest in the Masters, 1.5 out of 3. And he's, I think, tied second place. I mean, fourth, fifth place, मान लो, fifth place, sorry. By the way, C6 played, nice move. बिशप ट्रैप होने वाला था तो बिशप को स्क्वायर दे दिया उन्होंने. एंड ऑफ कोर्स कल को बिशप यहां जाएगा, यू कैन ब्रेक थ्रू विद D5 एंड ये किंग साइड की तरफ पॉइंटेड है. एंड अपने आप बिशप अटैक द वाइट का, सो बिशप आल्सो ड्रॉप्स बैक टू D3 एंड गुकेश ने बहुत जल्दी खेला. सो अभी वो ओपनिंग प्रेप में ही लग रहे हैं. विच इज द नेक्स्ट क्लासिकल टूर्नामेंट होने वाला है? नेशनल लूडो चैंपियनशिप अभी हो रही है आई थिंक पनवेल में. सो डू कम, हम मिलेंगे भाई. आ गया भाई. अभी कल्टी लो भाई. कौन कल्टी ले रहा है भाई? किसको कल्टी लेनी है?
होपफुली गुकेश को नहीं बोल रहे. Meanwhile, chat Gukesh now, I don't know how he feels about his loss yesterday because that was a big tactical miss. कुछ ना कुछ तो टीम ने बोला होगा. Would be a good question to ask Sahaj bhai if he was not training a secret player. Who is it? We don't know, but I think कल एक बहुत तगड़ी मीटिंग हुई होगी between Gukesh and his team. Like, you know, everybody joining in over call, discussing what went wrong. Why is it happening? It's happened twice in 3 games. It also happened in Tata Steel. You can see Ukesh right now. He's not looking at the board, thinking about something else, very likely. Yeah, Gukesh is playing very quickly. And you know what? I don't know if this is true for Gukesh, but मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि I'm playing a game and I've lost a horrible game, right? मतलब ऐसी game जो hurt करती है दिल को. And next game I work very hard because okay, I've lost. I want to get back. So then I prepared theory till crazy and I just want the game to be better in the opening itself. मैंने इतनी preparation कर ली है कि ओपनिंग अपन को फंसा लिया एंड आई नाउ वांट अ बेटर पोजीशन आउट ऑफ द ओपनिंग. अगर नहीं मिलती ना आई गेट अ बिट इरिटेटेड. मे बी दैट्स जस्ट मी, बट थोड़ा फर्क तो पड़ता है. यू मेक फन ऑफ ग्रोइंग चेस प्लेयर. आप ग्रोइंग चेस प्लेयर और फ्लैंकर गेमर्स भाई. मुझे लगा था कि होगा जितना ग्रो होना है. या विदित इसलिए टाटा स्टील नहीं जीत पाया बिकॉज वहां पे किंग सैक्रिफाइस करना अलाउड नहीं है. इट इज इलीगल. सो दैट्स व्हाई अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट वन इट येट, बट विल हैपन सून. चैट विल हैपन सून. पूरा फेथ है विदित पे. Please show Arjun's game. Bhai, Arjun is not playing this event. So I don't know Arjun की कौन सी गेम आप देखना चाहते हैं. Meanwhile, now you can see majority of fans sitting there. By the way, we can also see Sasikiran there in the background. As we discussed earlier with Rakesh Bhai, he is playing the open section. So he's also checking out the games. VD AI solve कर रहा है भाई. I mean, it's great he's following his curiosity. I think that's when you're following your curiosity, usually you do well. चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में. So जितना भी वीडियो को ऐसे रोस्ट कर ले कि भाई AI कॉन्फ्रेंस की एंट्री नहीं मिलेगी. I think if you're following your curiosity, you're going down the right path. Usually. David Navara is so kind. Yeah, he's one of the kindest people in the world. Very sweet. कुछ हुआ था रिसेंटली, आपको पता होगा. डेविड नवारा को किसी ने कुछ बोला था इनको एंड देन he shared his thoughts on his mental health and he's very very sweet. Salve, thanks for this chat. Uh, I hope I'm pronouncing your name correctly. Moranesh Sholni or Bhai. Salve, why Gukesh feels extremely vulnerable, exploitable. He never has the upper hand, never seems dominant. What's wrong? No bias take. Honest feedback, okay? I think when things are going your way, 2024 जैसे, you feel invincible, ठीक है? And it's not the result of your current prep. 2024 was the result of the multiple years of prep, especially 2023, I think. जब कोविड चल रहा था 2020 से लेके 23 तक 22 तक whatever, these guys are working every single day, crazy, nothing to do. Gukesh, Prague, Arjun, Divya, everybody else. Then 2024 happened, they got all these results, and very hard to predict why is it going down. Now, there could be two reasons. Okay? One is it's just a random part of fluctuations. Yeah, for example, कभी कभी form नहीं होती. It's just a random thing happens. You cannot perform at your peak every single time. And because of 2024, हमारी expectations बहुत high है इन लोगों से कि भाई जीतेंगे ही. ठीक है? So one is it's just a random fluctuation in form. It will automatically correct itself in, let's say, a couple of months. That's a possibility. Second is maybe the players relaxed a bit in 2025 because 2024 went so well. Maybe they relaxed a bit. It's a genuine possibility. They're human, yeah. So if that's the case, then of course they must be suffering the consequences of that. And of course, Baki log might be preparing harder. So we don't know for sure because we don't have backend access. So it depends on what the real reason is. And even if that happened, कि भाई उनका preparation was not up to the mark as 2024, they would be working hard right now, but uska result हमें instantly नहीं दिखेगा. So it might happen, right about when the Olympiad starts or when Norway chess starts. So yeah, let's see what happens.
Salva, do you think? Yeah, Divya and Gukesh did play a game. Divya almost won that. In fact, that was the tournament जहाँ पे गुकेश की सबसे बेकार tournament गुकेश का I would say of the last 3-4 years. I think Divya almost won against Gukesh black pieces से. So Gukesh definitely does not want to remember that tournament. By the way, S3 played by Gukesh after knight very very quickly. So अभी भी opening preparation में है. And usually black ने दो knight लाया है. The concept is of course to attack on the king side. Long term अगर knight h5, knight f4, bishop g4 was the idea. That's why h3 stops it. And अब white की बारी है. वो खेलेंगे knight d2, knight f1, knight g3 या फिर knight d2, knight c4. But I think knight c4 makes less sense because bishop c7 है. So knight f1, g3 makes more sense here. चैट में बस काउंट करो 11 तक में 1 सेकंड आया. वापस आई एम बैक. And meanwhile, chat, no moves by David Navara, who looks quite stressed, to be honest. I think it's just the pressure of facing a world champion, but also I think he knows he can win this. Gukesh is not in peak form. He's doubting himself, and that's the perfect scenario to be in when you're facing a stronger player. So I think यहाँ पे David Navara के भी stakes high हैं. If he wins this, that's a big win. साहब जलगोटिया से चेस सीख सकते हैं क्या? जलगोटियास यार बहुत कुछ सिखाता है. मैं देखा आजकल रिसेंटली. मैं खुद सोचा था कि कोई एआई कोर्स के लिए ज्वाइन कर लूं वहां पे, बट इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर मी यार. बहुत क्रेजी सिखाते हैं वो लोग. एडमिशन मिलेगा नहीं. प्लीज शो अर्जुन गेम. भाई कौन सी अर्जुन गेम? भाई अर्जुन कहाँ खेल रहा है? क्या खेल रहा है भाई? जियो का सर खेल रहा है क्या? बिकॉज चेस तो नहीं खेल रहा है यार. Chess com rating not increasing by around 1900. Any ideas to improve? Follow these games by look at the games of top players. Try to guess their moves as they're playing. इससे better क्या option है भाई? Meanwhile, chat यहाँ पे as he thinks, I'm trying to see. Oh, by the way, we have a lot of updates in this. The Aravindh game. भाई साहब A4 देखा था क्या? भाई guts of steel भाई. Guts of steel for Aravindh भाई. I have to admit. सीधा G4 में castling. Wow. I am impressed भाई. एंड यहां पे क्वीन d2 एंड अरे वाह भाई क्या खेल रहा है अरविंद यार. आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड. भाई अर्जुन इज प्लेइंग जर्मन बुंडेसलीगा. भाई जर्मन प्लेयर तो यहां खेल रहा है. भाई साहब क्या सेंटर में ब्रेक किया है. एंड नाउ ई टेक्स d5 ओनली मूव फॉर विंसेंट. e4 only move for Arvind. DC6 only move for Vincent played. Why sahab? And apparently Arvind had to play b takes c6 as the best move in the position, but he instead plays the second best move, e takes f3. By slight error by Arvind Chithambaram. By slight error by Arvind Chithambaram. I am checking the theory here. There are no games. भाई डर लग रहा है. डर लग रहा है भाई. आई थिंक विंसेंट इज बेटर नाउ. आफ्टर बिशप टेक्स d7 ओनली मूव g5 आने वाला है. आई थिंक विंसेंट इज इन प्रेप. आई थिंक ही इज इन प्रेप. वेरी हाई चांसेस. वाओ. Yeah, Chad, this is crazy. I think this is the problem with playing the same opening again and again. What really happens is your opponents can predict with so much certainty what you're going to play that they can go very deep in their analysis. They can go 20, 30 moves deep sometimes, and it's going to be very hard to defend over the board if you don't know what's happening. The F pawn feels like it's very strong, right? मतलब काफी strong pawn है. But also, like G5 के बाद, what do? You have to take, otherwise हम मार देंगे. Bishop takes, Rook G1 आ रहा है. You can castle. I'm not saying
Vincent is winning. All I'm saying is, I hope Arvind knows what to do here. अगर अरविंद को नहीं पता क्या करना है, I think he might just lose very quickly. So, very very sharp position. देख के बड़ा मजा आने वाला है. ये गेम बहुत मजेदार होगी. भाई साहब, what a game. So this game is going to be fascinating to watch. Meanwhile, no moves, I think, in the Divya. Oh, there are some moves. अच्छा कैमरा नहीं है इसका. So let's try to get the camera if possible. Okay, very solid. Oh, we have the cameras. Awesome. So I think this is where we left it. D4 H6 खेला उन्होंने, preventing bishop G5. So bishop ने कहा भाई हम B2 पे आ जाएंगे, एक रास्ता बंद तो दूसरा खुल जाएगा. And now comes knight E7, redirecting the knight, coming to G6 or F5. Maybe knight G6, knight F4 with an attack building up. You know, knight F4 आया, then queen G6. Baap, that's a very strong attack. And that's what Divya is now thinking. Very important moment. She needs to find bishop to D3 here as the best move. And if knight G6 आप attack करने की यहाँ कोशिश करते हो, then you can actually even play C4 and start getting space in the center. For example, knight F4 I attacking the bishop. And I can simply drop the bishop back. I'm wondering where. You can even go bishop e4. I was thinking bishop b1 or bishop f1, but bishop e4 also. Apparently the engine's best move is very, very logical. So yeah, there's no way for queen to come to g6 or g5 basically. जब तक bishop यहाँ पे है, black can't really launch a full-on attack. So they were a very important tournament for her as well, as we know, because candidates आने वाला है, her formatters, and time पे अभी वो बहुत आगे. By the way, I don't know who this kid is. I would love to check his age. So he is Finek Vaclav. Chat, look at this guy, by the way. Okay, FIDE website down है. That's, I mean, मैं सुबह से FIDE website खोलने की कोशिश कर रहा हूँ. It's not working. He was born in 2010. 16 साल का लड़का है, and he became a CM in 2019, and अब he's already like GM plus level. Yeah, what a guy. He's playing some fascinating chess. So yeah, जिस टाइम पे हम लोग 10th की बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे, ये बंदा वर्ल्ड चैंपियन बनने की तैयारी कर रहा है. Meanwhile, going back to the game of Gukesh, the world champ, rook e8. I think s3 पे we left it. Rook e8, and now queen c2 played again in just 30 seconds. So Gukesh still in preparation, getting 5 minutes on the clock. Wow. David Navara बहुत सोच रहे हैं. अभी इतनी सोचने की जरूरत नहीं है. He also has e5 apparently already possible. If that's possible, I think black is probably doing okay. Yeah, it's not a big deal. Also, there is bishop e6, which is the logical move. You develop a piece and doesn't really change the structure too much. Yeah, so it doesn't look like it's too difficult for David Navara just yet. Arjun ki game ek baar. Yeah, I'll try to open it, but looks like is he playing the Bundesliga really? I can't find it. I don't think it's happening right now, chat. I don't think so it's happening right now. That's my guess. I could be wrong. Meanwhile, chat, क्या ठीक है, एंड ऑनेस्ट जवाब देना, ठीक है, दिल दिमाग दोनों कंबाइंड. गुकेश टुडे विन ड्रॉ लॉस. व्हाट इज योर गेस्ट? कम ऑन, एक जवाब चाहिए मुझे, कोई रीजन नहीं चाहिए, सिर्फ विन, ड्रॉ या लॉस. कम ऑन, लेट्स गो. एंड फॉर मी, आई पर्सनली थिंक कि ड्रॉ के चांसेस बहुत कम है, purely because Gukesh is coming off a loss. Like, he's gonna be super motivated to win, and it might lead to a situation jahan pe there's a moment where he has to choose, do I push? And if he does push, it could go either way. ऐसा मेरे को आज फीलिंग आ रही है, especially because Navara is now low on the clock. So any drawn position, you have the temptation to push again. So result के chances आज बहुत high है. Of course, we're going to hope it's in Gukesh's favor, but आज battle तगड़ी हो सकती है.
This one is much better according to me today. I mean, he's playing a complex variation. But uh, आकाश भाई आज अभी वो ओपनिंग थ्योरी में है. This is all his preparation. He's not been forced to calculate over the board at all so far. So it is just घर से देख के आया वो variation, वही खेल रहे हैं. So we can't judge his form basis his opening preparation. वो तो मैं भी खेल देता अगर सेम ओपनिंग आती तो. Of course मैं जज नहीं करवाता ओपोनेंट की ओपनिंग, बट द पॉइंट इज कि लाइक दिस इज नॉट द जज ऑफ द फॉर्म, लेट्स से. Gukesh might win as Navara isn't in his peak, but Navara is playing pretty well. By he has 2 draws and 1 win. He even defeated Maghsoodloo in this tournament. So it's not gonna be easy, at least. Let's put it that way. Meanwhile, राकेश भाई कहाँ है यार? अच्छा जर्मन बुंडेसलीगा में खेल रहा है क्या? भाई अर्जुन बुंडेसलीगा बहुत खेलता है ना? Like he plays a lot of this stuff. I think Kavishista also plays. Arjun is playing some 2-5-4-3 chat and he is winning. So he's gonna gain, I think, 2.5 points today, Arjun Erigesi, and he's gonna go to 2749. Yeah, he's gonna be 2749. I think this is the game. I don't think you can see it actually because वो OBS है, but yeah, he's winning against a guy with the black pieces. Okay, David Navara का time 1 घंटे से कम. He needs to play quickly, I think. इतना टाइम लेंगे तो भाई फिर it's gonna be difficult, yeah. राकेश भाई वर्सेस बुंडेस. नहीं नहीं भाई, आई थिंक 2550 रेटिंग है. उतनी तो साहज भाई की नहीं अभी. He's not 2750 already by. His live rating is 2746.5. And 2.5 point मिलेंगे इससे. India got a new GM today. How many GMs do I expect till the end of 2026? I'm gonna say maybe like, let's say 100. I mean, what's the harm, yeah? Let's just say 100 GMs because that will be amazing. Imagine December 31st ho 100 GM ban jaye. That's gonna be fun, no? I think there are countries with more than 100 GMs. Russia is one, I think. There are others as well. जहाँ तक I could be wrong about this, but I think I'm correct. 2-3 countries हैं who are ahead. Gukesh following Ding's footsteps, unfortunately. I think that's maybe harsh. There are multiple reasons why. First of all, Gukesh का form बेकार नहीं रहा है. Like even Tata Steel was okay. Like he didn't lose rating points. He lost like 1 or 2 points, I think. Second, Gukesh has played a lot more than what Ding played. And I think it's not a fair comparison. On the other hand, is it a disappointing performance for a world champion? Maybe yes. Maybe it's not ideal. ट्वीट देखा मैंने भाई, ट्वीट देखा मैंने. ही इज बैक अपेरेंटली. कोई साइड हसल चल रही है उनकी चेस्ट प्लेयर की. इज अर्जुन इंडिया में वन? यस ही इज भाई, राइट नाउ. बाय द वे, 10.5 मिनट, एक्चुअली 11 मिनट सोचने के बाद D5 खेला नवारा ने. एंड जस्ट इन 2 seconds गुकेश प्लेस द बेस्ट मूव बिशप G5. तुम देख रहे हो ओपनिंग प्रिपरेशन. दिस इज नेक्स्ट लेवल ओपनिंग प्रिपरेशन. सो लेट्स लुक एट दिस. एंड नाउ भाई ये क्या पोजीशन है? लुक एट दिस चैट, लुक एट दिस. पहले बेस्ट मूव देखते हैं, फिर सेकंड बेस्ट मूव देखते हैं, ठीक है? एंड तुम्हारा दिमाग ब्लो हो जाएगा सेकंड बेस्ट मूव से. बेस्ट मूव इज डी टेक C4. वेरी लॉजिकल. हम बिशप से मारेंगे, वो ये मारेगा, हम ये मारेंगे. अभी मार नहीं सकते बिकॉज क्वीन हैंगिंग है, सो वो H6 खेलेगा. हम ये मारेंगे, वो ये मारेगा. हम A5 खेलेंगे, वो बिशप वापस लेके जाएगा, मे बी बिशप C7 एंड नाइट D2. ठीक है, लॉजिकल पोजीशन. व्हाइट के पास आइसोलेटेड पॉन, ब्लैक के पास बिशप एयर, एंड इट्स अ डायनामिक पोजीशन एंड इट्स रफली इक्वल. ठीक है, व्हाइट इज स्लाइटली बेटर. लेकिन सेकंड बेस्ट मूव यहां पे कोई गेस कर सकता है क्या भाई? व्हाट डू यू थिंक is the second best move for black here? Come on chat, कौन करे? कोई गेस नहीं, किसकी बस की नहीं है भाई. Let's go.
ब्लैक टू प्ले भाई, ब्लैक टू प्ले सेकंड बेस्ट मूव क्या हो सकती है? बाद में नवारा जी ने बेस्ट मूव खेली, सो ही डिडंट गो फॉर द सेकंड बेस्ट मूव, बट बेस्ट मूव क्या है? यस, देवेश भाई, इट इज द इनसेन मूव, बिशप टेक्स h3 भाई, व्हाट? आउट ऑफ द ब्लू मारा एंड क्वीन d7. I have never seen anything like this. And apparently white को only moves खेलनी है भाई इक्वालिटी के लिए. This is crazy. Let's have a look at the best finisher. Bishop f1. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप किंग h2 खेलते हो क्वीन d7 के बाद, दिस इज ब्यूटीफुल, किंग h2 अगर आप खेलते हो यहां पॉन को बचाने के लिए, ब्लैक इज ऑलरेडी बेटर भाई साहब. सो यू हैव टू प्ले बिशप f1 ओनली मूव. अब यहां पे आता है नाइट टेक्स e4, taking the pawn, bishop e3 back. Now e takes d4, c takes d4, and again bishop c7, I think, and even f5 is a possibility. By this is insane chess. This is insane chess. Okay, no wonder David Navara didn't find this over the board. He instead played d takes e4, bishop takes, pawn takes, pawn takes, जो हमने best move देखी थी. We got a GM in the chat, maybe 5 years from now, yeah. साल में खिचड़ी खाओगे? अरे भाई खा तो हम लेंगे यार, भूख तो हमेशा लगी रहती है. You seen this something? Yeah. It is similar. You are right, Sarthak bhai. I think it was Vidit who played this. But it's always surprising. Yeah, just bishop takes s3, free cup piece for a pawn. It doesn't matter as Gukesh is in prep. No, I mean, it would be impressive from like David Navara, right? If he had played this. So, yeah. अरीना ग्रैंड मास्टर तो क्या ही है भाई. वो तो ऐसी टाइटल है भाई, जुगाड़ू टाइटल. कोई खास वैल्यू नहीं है उनकी. देखो भाई, आप बिना इंजन के सांस भी नहीं ले पाते होगे, बात सही है. सुबह उठता हूँ, सबसे पहले लोग व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, मैं इंजन चेक करता हूँ भाई कि स्लीप स्कोर नहीं, स्लीप इवैल्यूएशन क्या है मेरी. सो वो कहता है ओके इट वाज +1. मैं कहता हूँ बढ़िया भाई, चलो +1 इज गुड इनफ. फिर मैं खाना खाता हूँ, ब्रेकफास्ट. फिर इंजन को फोटो भेजता हूँ कि भाई फूड की वैल्यूएशन, कहता है ओके इट्स -0.5, कॉर्नफ्लेक्स कम खा सकते हो, थोड़ा और यू कैन ऐड फ्रूट्स. मैं कहता हूँ ठीक है भाई, कोई ना, आज मन है खाने का. सो या, आई मीन इट्स लाइक इंजन के बिना जीना मुश्किल है भाई. बाय द वे h6 played best move again, and now Ukesh has to take only move. Of course it's his preparation, देखा होगा उन्होंने. साल वेरी जाकिर भाई, भाई दैट्स द क्वेश्चन. उनका कुछ इंटरनेट इश्यूज है आज, सो ही विल जॉइन सून. बाय द वे 92 नाउ इज द बेस्ट मूव. चाहे a5 92 या 92 a5 डजंट मैटर. बट हमारा पीस गेम में आया नहीं है. वी नीड टू डेवलप इट क्विकली. ऑल्सो यूजुअली नाइट c3 बेटर होता है, बट मे बी यहां पे द किंग साइड नीड्स अ बिट मोर प्रोटेक्शन. ऑल्सो ये नाइट यहां पे c4 जा सकता है, एंड ऑल्सो इट डिफेंड्स द नाइट ऑन f3. कल को बिशप हिला तो बिशप टेक्स h3 इज नॉट अ मूव बिकॉज नाइट यहां हैंगिंग नहीं है. सो दिस नाइट वुड डिफेंड दिस नाइट एंड फील्स लाइक अ बेटर मूव. गुकेश को ऑफकोर्स पता होगी, ही वुड डेफिनेटली नो दिस. सारे मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते चेस में, क्या करूं मैं भाई? सही कह रहे हैं पेरेंट्स भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं. भाई मैंने भी यही गलती करी थी भाई, नौकरियों की चेस खेलने गया था मैं. डोंट डू इट. व्हाट अबाउट हर्षित राजा? हर्षित राजा भाई राजा है भाई, राजा को क्या पड़ी है, राजा तो बैठा है, चिल कर रहा है यहाँ पे. मेहनत तो ये लोग करेंगे भाई बेचारे, घोड़े और बिशप. व्हाट डू यू थिंक विद द रिजल्ट? आई थिंक मुकेश के जीतने के चांस अच्छे होंगे आज, बिकॉज कल की गेम ना आपको नींद से जगा देती है. नाउ यू नो समथिंग इज रॉन्ग एंड यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू फिक्स समथिंग. एंड कुछ ना कुछ तो कल ट्रेनिंग हुई होगी, कुछ ना कुछ तो कल एडवाइस दी गई होगी उनकी सेकंड से, उनकी टीम से. एंड उसके रिजल्ट्स होपफुली आज दिखेंगे हमें. हर्षित राजा को नहीं जानता साहिल.
बिल्कुल सही भाई, आपके ये इंफॉर्मेशन आपको उसी हॉल से मिली होगी जहां बैठे हो अभी. Meanwhile, Gukesh thinking, which is a bit surprising. Maybe he's thinking पहले A5 खेलूं कि पहले 92 खेलूं. That is an important decision. Good question. Is this pawn hanging after knight? What do you think, chat? Yes or no? Can black take that pawn? So, if you do take, it does seem like it's hanging, but there are multiple problems. The problem, okay, forget other moves, simple chal. Knight takes d4, queen takes d4, bishop g6. Simple chess. Forget कि ये hanging है. I can just win the pawn back and your king is now weak. But even more tactically, after bishop d4, there is bishop g6 directly. And now this is hanging. So you have to, I think, take on e1 now. I take back. And now if you save the bishop, rook e8 is mate. So आपको ये मारना पड़ेगा. And anyways, apparently check. King h7, queen takes, king takes and knight takes. Okay, that was too complicated, but I think simple chess here ki I will get the pawn back and I will also break your king side. So it's not really hanging. And by the way, 92 played by Gukesh. As expected, he took a bit more time for this move, but makes a lot of sense and very practical chess. And now I think bishop d7, ये ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा. Salva is the goat. You know, I didn't know कि goat का भी milk होता है. I don't know. I didn't know this fact. राकेश भाई preparing for the world champ title. भाई पता नहीं राकेश भाई कहाँ है भाई. आ जाएंगे hopefully. F takes अभी F takes दिखा देते भाई कहाँ था. I think this is where we left it, no? It was yeah F takes. अगर F takes यहाँ मारते हो for example, then there is queen c4 check, and again the bishop is hanging. So ये bishop के तो बस लग गए. Salai, Divya will win or lose. Let's have a look by. Meanwhile, if we go to Divya's game, I think after queen f6, bishop b2, knight e7 was played. अब आता है rook b1. I think it's very logical. आप bishop की development के against खेल रहे हो. And of course, defending the bishop, कल को c4 is a very logical move. अब knight d5. It's almost tempting white to go c4. Yeah, if you can have Divya's camera, I think c4 खेलने की कोशिश है. And I think the knight will hop to f4 very quickly. And suddenly attack बन रहा है. So, and now after c4, very important, bishop d3 is not possible. So queen g6 is a very strong idea. I think black is close to winning unless you play c5. Only move for white. So very nice, tempting move by Divya's opponent. मैं समझ रहा हूं ये प्लेयर इतना खतरनाक क्यों है. बेट है भाई, ये बेट है, बहुत बड़ी बेट है. धक्का मत लगाना इसको. पहले विषय वापस लाओ, फिर जो धक्का लगाने लगाओ. We are going back to the game of. By the way, Surya is apparently close to winning. His opponent has just blundered. Why? This is where we left it, I think. Not here. I think we looked at till here, right? E4 was the move which we didn't see. यहाँ पे if E5 भाई चल क्या रहा है? Okay. Apparently E5 खेलता, एक और मौका मिला white को, खेल दिया उसने. Knight D7 and rook E1 was already a mistake. He had to play queen E2. G5 and now H5 and now G4. Big mistake. Mara mara. And now queen C7 के बाद black is close to winning. Surya is literally confused. He is winning after 10-11 moves now. Can he convert this? भाई अपन तो मस्त पानी पी रहे हैं. But it does feel like he's under huge pressure right now. And chat, forget the tactics. Very simple. आपका किंग यहां पे है. मैंने अपनी रुक की फाइल खोल दी. मैं आराम से अपने किंग को दूसरी साइड ले जाऊंगा और आप पे अटैक करूंगा. So Surya has a great position here.
एंड लुक एट द क्लॉक, क्लॉक पे भी बहुत आगे है. So I think things looking great for Surya. That's amazing. Going to Arvind now, जहां पे बिशप D7 के बाद कोई मूव खेली नहीं है विंसेंट ने. सो दिस इज लुकिंग लाइक अ पॉजिटिव साइन फॉर अरविंद कि भाई कि विंसेंट की प्रिपरेशन मे बी हैज एंडेड. And if that's the case, then maybe I think it's great for Arvind because position बहुत complicated है. King side तो आप castle कर ही नहीं सकते because instantly I think knight g4 bishop g4 आ जाएगा. And queen side जाओगे तो there's always like bishop a4, queen a5, b5, even directly I would not shy away from. So Vincent practically could be under pressure here. My prediction Surya lost. By predictions हम में से किसी की सही नहीं हो रही भाई. By the way, chat question for you, ठीक है? कल 4 गेम्स में से हमारे 0.5 स्कोर हुए थे. आज हम कितने स्कोर करेंगे भाई 4 में से? व्हाट डू यू थिंक? सो 4 गेम कौन सी? गुकेश की, अरविंद की, दिव्या की एंड सूर्या की. हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू थिंक वी स्कोर टुडे आउट ऑफ 4? चैट कम ऑन. 1. थोड़ा तो शर्म करो यार. 0 लिखा भाई आर्यन, 0. भाई तो आर्यन भाई तुम स्ट्रीम देख के तुम सो जा जाके. तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तो 0 ही है. तुम क्या मतलब ऐसे देख ट्रोल कर रहे हो क्या देखने के लिए? हार गया. ये चल रहा है क्या तुम्हारे यहाँ पे? I would say 2.5. I think we'll score today. 2.5 maybe is the correct score. Surya is already winning, so I might even go for 3 actually. Surya is already close to winning, so I think 3 maybe is my guess. कल का थोड़ा सा वो repentance थोड़ा सा वो करेंगे हम. By the way, Bishop D7, the best move played by David Navara. And now the question is, Gukesh कैसे खेलते हैं? There are two fundamental ways you can play this. One is A5. Attack किया Bishop C7 and now A6. बेसिकली अगर ये खेलते हो तो ये पॉन बहुत ज्यादा वीक है. इनफैक्ट D5 डायरेक्टली आ रहा है. एंड इफ C5 देन D6 एंड आई विन द एक्सचेंज. सो दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. तो मारना पड़ेगा, रुक टेक्स मारोगे. एंड दिस डज लुक लाइक व्हाइट हैज प्ले, बट ब्लैक ऑल्सो हैज प्ले. चैट यहां पे नाइट H4 आया, मारा मारा, एंड कुछ किंग साइड प्ले बन सकता है यहां पे. Of course, there are tactics here also. So, this is one way to play, but it's double-edged. गुकेश को रिस्क लेना पड़ेगा. जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, गुकेश के पास चॉइस होगी एंड ही विल हैव टू चूज कि डू आई वांट टू गो फॉर द अग्रेसिव पाथ और नॉट, एंड ही माइट गो फॉर इट. एंड सेकंड पाथ है, यू कैन सिंपली टेक ऑन G6 even. That's also an option. This might lead to some sort of draw. Not here, sorry, here actually. Directly मार सकते हो Queen G6, Queen G6, F G6, and because black के pawns are capturing away from the center, आपके पास थोड़ा सा compensation है for the bishop pair. आप knight E4, knight C4, knight E5 खेल सकते हो, अभी knight E4, knight C5 also, and the game is roughly even. So yeah, fundamental decision क्या करना है मुकेश को यहाँ पे? I think he will go for A5 is my guess. 99% क्रेजी भाई, बट गेम की एंड की एक्यूरेसी मैटर करती है, गेम की अभी की नहीं, मिडिल की, स्टार्टिंग की नहीं. राकेश भाई इज इन हॉल विद मी, रिलैक्स. ऐसा क्या कर रहे हो राकेश भाई के साथ यार? छोड़ दो उनको, बंदी बना के मत रखो. What do you think age Gukesh will cross 2800 classical this year by? It has to be this year. That's the dream. By the way, chat, in terms of potential, I think Magnus ने भी कहा था, the biggest potential he sees in any chess player right now in the world is a dogmas. And he's like 16 years old and 27 rated, by the way. So yeah, according to Magnus at least, that's the guy he sees the most potential in. And dogmas की live rating अगर मैं आपको बताऊं, right now it's 2686, वर्ल्ड नंबर 39 है. 133 रैंक्स उन्होंने गेन करी है भाई पिछले महीने में. डैम. और 14 साल के, सॉरी नॉट 16, 14 ईयर ओल्ड, सॉरी माय बैड भाई. 2 साल तो फालतू के बढ़ा दिए मैंने. 14 साल का लड़का है भाई.
14 साल का लड़का है यार, शर्म करो थोड़ी सी. Damn, that's insane, bhai. I agree with Magnus, bhai. The biggest potential in the country is definitely Dogmas. No doubt. In the world, sorry. पागल हो गया, ऑफकोर्स हो जाऊंगा भाई यार. 14 साल की उम्र में बंदा 27 रेटिंग लेके बैठा है यार. Imagine being like set for life at age 14. Crazy. By the way, Gukesh is now thinking, so this is maybe the first moment where his preparation has run out. So clockwise, he's not used up any time at all. But how well he understands the position is very important. Usually, कई बार कोई opening खेलते हो, and maybe you don't have a lot of experience in it, then your understanding can maybe sometimes not be the best, and you can sometimes make a mistake instantly as your prep ends. Prep खत्म हुई, गलती हो गई. So ऐसा नहीं होना चाहिए. A good time for Ukesh to think, clear carefully, understand the position, and then play the best move. क्या होगा साहब एकदम भाई, 0 पॉइंट तो आपने बोल दिया अरविंद भाई, 0 होंगे. तो क्या ही होगा, चारों हारेंगे आपके हिसाब से तो. मीनवाइल टिक्कू, गेम खा लो. अच्छा, गेम खा लू मैं सीधा. खा लेते हैं भाई, भूख तो लगी है. ऑलवेज. बाय द वे, इफ यू कैन हैव, डू यू हैव द 4 कैमरा सीन जब जहां चारों इंडियन प्लेयर्स हैं? दैट विल बी क्रेजी जस्ट टू लुक एट इट फॉर अ मिनट, जस्ट टू एक्सपीरियंस प्राग चेस फेस्टिवल इन ऑल इट्स ग्लोरी. टुडे वी लेट राकेश प्ले अगेंस्ट एंड ही लॉस्ट टू हर. हाँ, इंटरेस्टिंग. वो ब्रॉन्ड गर्ल आप ही थे क्या नितिन भाई? और ये रहा भाई, बाय द वे, ऑल द 4 बोर्ड्स. चैट. ओके, अगेन आई एम गोना आस्क यू, कितने पॉइंट आज बनने वाले हैं भाई? नाउ यू हैव ऑल द 4 बोर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू. कितने पॉइंट 4 में से आज बनेंगे? आई एम गोना गो टू 3 नाउ. मैं अपना प्रेडिक्शन थोड़ा हाई कर रहा हूं. मुझे लग रहा है आज गुकेश, अरविंद, 3 क्या 3.5 बोलूंगा मुझे. गुकेश, अरविंद और सूर्या तीनों जीतेंगे आज भाई. आज मेरे को पूरी होप है. बी पॉजिटिव, आई एम. दैट्स ब्लड ग्रुप. आलू की नहीं, पनीर की बना भाई. तो मैं आ रहा हूं. पनीर पराठा आर द बेस्ट. मीनवाइल सूर्य ये में क्वीन C7 खेल दिया उन्होंने. सो वील जंप टू दैट गेम फॉर अ सेकेंड. He has put the queen there, so excellent move. यहां प्रेशर डालते हुए, now this pawn is actually hanging, and बचाने का तरीका मुझे दिख नहीं रहा है. I think you can probably take G5. You allow black to take on E5, but जैसे ये pawn मरेगा, queen का रास्ता खुल जाएगा H2 की तरफ. So that's not good news for his opponent. So Surya in great shape right now. Time पे भी almost आधे घंटे का lead. And कोई कह रहा है, why not Divya? I think Divya के भी chances there, but right now the position does not really show clear signs of her being better. By the best move played by Divya, nice sign. Time पे भी आगे है. So yeah, let's go 4x4, but I'm gonna be pragmatic थोड़ा सा. कल आधा पॉइंट आया है. So so चार सीधा गेस करना इज डिफिकल्ट. सो आई एम गोना गो विद 3.5. 3.5 में खुश है हम लोग. ज्यादा हम लालची नहीं है भाई. 3.5 आउट ऑफ 4 वी आर हैप्पी. इतना मिल जाएगा, वी आर वेरी हैप्पी. वी गो होम स्माइलिंग फेस के साथ. So Divya for now should be great move now, controlling the G6 square. But if knight F4, by the way, very important. Bishop को attack करते हुए, you trying to get the G6 square again, you have to play Bishop E4. वापस मत जाना. वापस जाओगे तो then black takes over. तो Bishop E4 खेलना पड़ेगा, only move, and then you can start pushing this pawn and maybe D5 के बाद queen को move करना पड़ेगा. So very important. दिव्या के गेम की पोजीशन एनालाइज करो. या आई थिंक बिशप D3 के बाद ब्लैक शुड प्रोबेबली डू समथिंग डिफरेंट. सो फॉर एग्जांपल चैट, अगर आप कामली खेलते हो, लेट्स से यू प्ले बिशप D7, आप कहते हो भाई क्या ही गड़बड़ है पोजीशन में, काफी नॉर्मल लग रही है मुझे, बट सडनली C4 के बाद दिव्या इज ऑलरेडी विनिंग.
बिकॉज ये पॉन्स जो हैं दे आर मूविंग वेरी क्विकली. नाइट F4 खेलोगे आप. नाउ बिशप E4. ये पॉन हैंगिंग है. एंड ये बताते हैं भाई D5 नेक्स्ट. एंड सडनली व्हाइट के पीसेस आर जस्ट डोमिनेटिंग द बोर्ड. एंड ब्लैक के पीसेस इतने पैसिव लग रहे हैं. इकलौता नाइट एक्टिव, वो भी कभी कभी लात मार दूंगा उसको कभी ना कभी. सो आई थिंक दिव्या की गेम में बहुत पोटेंशियल है एक्चुअली. So black has to be very careful. In fact, the best move for black, chat, is very difficult. Is the move B5. Just randomly by controlling C4. And if you take, then rook B8. And if black finds this, kudos by. फिर तो insane है. But and now only move for Divya is bishop F1. Wow. So black को B5 निकालना पड़ेगा. Otherwise, he's in big trouble. Live bar, yeah. So we can definitely try to get the live bar. I don't know if it's possible tomorrow, a day after. So let's try to get the live bar for the Indian players if possible. Otherwise, let's see. Meanwhile, going to Vincent versus Arvind. Arvind ने तो आंखें बंद करी हुई हैं. Still no moves by Vincent Keymer. So maybe the opening prep, he's maybe regretting it already, yeah. Let's see क्या होता है. शो द मास्टर सेक्शन. दोनों देखेंगे. मास्टर्स ही देख रहे हैं भाई. अब तो मास्टर्स में ही है. एंड मीनवाइल यहाँ पे Vincent Keymer is still wondering, where do I put the king? As we saw earlier, G5 is the best move. Apparently, D5 is also possible, but this just feels like a shot in the dark. Yeah, he does go for the best move, G5. So great move by the world number 5. And now Arvind से मैं expect कर रहा हूँ वो जल्दी से ये मार देंगे, because that's the only move भाई. Otherwise he's lost. He can resign. So ये pawn जल्दी से उड़ा दो भाई. Let's go. Yeah, Vincent has lost 8 yellow points, but he has still played very well last year. He's playing very well this year as well. And अभी उनकी rating 2770 है, if I'm not mistaken. So 2767, yeah. So he's still doing very well. World number 5 भाई, और क्या चाहिए? And Vincent now attacking on the king side, not committing his king just yet. बिकॉज जैसे ही वो अपने किंग को कमिट करेंगे ना, उसी टाइम पे ब्लैक अटैक लॉन्च कर देगा. सो ही इज ट्राइंग टू डिले इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड starts attacking Arvind's king in the meantime. And ये bishop will of course be crucial in the attack if it has to be successful. ये चार piece जो है ना, they have to be really the stars of this game if Vincent has to win. By the way, taken up, he should take on G5 very likely. साहब यू सी कैंडिडेट्स पेयरिंग. आई हैव सीन इट एंड पहले राउंड में कुछ खतरनाक क्लैशेस है. सो मजा आएगा भाई. साहब तुम्हारी रेटिंग क्या है? मेरी फीडर रेटिंग भाई आई थिंक 2200 है आसपास. एंड माय चेसकॉम रेटिंग इज 25-2600. सो उसी में झूलती रहती है. 2500, 2600, 2600, 2500. Yeah, first round pairing I think is Prague versus Anish. So it's gonna be very tough. And women's section mein I think first round pairing is Divya versus Humpy. Bhai sahab, that's such a big clash. And Vaishali versus Bibisara. So pehla round jeetna is very crucial. If we lose the first round, then I think it's already gone. By the way, ab soch rahe Vincent, that is not a good sign. I mean, he should take the pawn. I mean, it's like, कभी आप ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में आपने हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाया, दूसरे बंदे ने देखा ही नहीं आपको, देन यू ट्राई टू पुल द हैंड बैक एंड देन उतनी देर में उसने देख लिया, फिर वो हाथ आगे करता है, बट देन इट्स टू लेट, यू हैव मूव द हैंड बैक, देन यू ट्राई टू पुल इट फ्रंट अगेन एंड देन वो बंदे को लगता है कि आपने ले लिया तो वो वापस लिया, देन वो लाइक दिस इज ऑकवर्ड मोमेंट. वैसे ही लग रहा है मुझे. G5 तो खेल दिया भाई, तो अब हेजिटेशन क्यों? मार दो यार. देखो एक फैक्ट की, whenever Divya crosses 25 तो she loses the game. ऐसा नहीं है. I think it's just a coincidence because 2510 उसकी पीक रेटिंग है, something like this.
So it might feel that way, but I think that's just a coincidence. Check Arvind's game, it's glitch. नहीं भाई, बिल्कुल same game है यार. You can see the pawn on g5, black pawn, the white queen on d2, bishop on e3, black king on g8, pawn on s3, so काफी similar लग रही है. Time थोड़ा ऊपर नीचे होगा, but it's not, yeah, time is less for Arvind here. That's not the actual time. But बाकी position wise सब ठीक है. वो टाइम करेक्ट हो जाएगा, दैट्स ऑटोमेटिक, डोंट वरी चैट. सो मीनवेल एज ही थिंक्स, we don't have any moves by Gukesh. So uski preparation clearly over. That is an obvious sign. Also, if we go to the game of Surya, Queen E2 was played by him. So he defends the pawn. वो pawn exchange नहीं कराते. And now Surya can just castle. Yeah, B6, Bishop B7, castles. Then कभी ना कभी knight f8, knight g6, knight f4 या knight f8, knight h4 भी possible है. So black has a huge attack building up and great chances for Surya to win this. So going back to the Arvind game now, still no moves by Vincent Keymer. He's about to take and he takes that pawn. Now chat, look at this. The best moves for black are knight d5, rook c8 and bishop b4. Not easy moves. For example, if you play rook e8, which you put the rook opposite the king, black can castle. And now chat, question to you. What is black's best move? Novel variation है, कुछ भी हो आपको कैसल करना पड़ेगा. What is black's best move in this position? Come on chat. मैंने बताई है move by the way. I know the story about the birthmark. No idea about that chat. But can tell you about the chess though. By the way, position में I think Arvind about to play a move. ऐसी feeling आ रही है, उनका हाथ टेबल पे जा चुका है. Is he gonna play that quickly? He does play the best move. Wow. I genuinely impressed. Chat, it is b5. You are correct. b5 is the best move. Just opening up the queen side, attack करो, and अगर यहाँ pawn से मारते हो, लग रहा है free pawn है, there is a6 and actually black is even better. अगर मारोगे तो खत्म भाई, ये तो खत्म हो गई. इनफैक्ट क्वीन ए5 इज द बेस्ट. आई थॉट किसी मार ही सकते, भूल गया मैं. बट क्वीन ए5 एंड सडनली यहां मेल्ट होने वाली है यार. सो मीनवाइल अरविंद plays the best move though. Rook e8 भी possible था, but knight d5 he plays. And now rook g1. Only move for Vincent Keymer. Okay, let's have a look क्या चक्कर है. First of all, अगर ये मारते हो, ठीक है, this is an obvious mistake because queen e7 is check. आपको king d1 खेलना पड़ेगा. So this should not be a surprise कि this is a bad move. You can't take. Second is आप बिशप वापस लाओ, but कहां लाओगे? हर जगह पे कुछ ना कुछ अटैक है. Third is h4, but that already feels a bit suspicious, right? Because what if I don't take? What if I take on c3 now? आपको यहां pawn से मारना पड़ेगा क्वीन को प्रोटेक्शन रखने के लिए. And then आप कैसल कैसे करोगे भाई? So I think rook g1 is an obvious move, but it is the only one in the position. Vincent Keymer cannot go wrong. Yeah, I did see the Arjun game chat. He is winning. Brilliancy खेली उन्होंने एक नाइट स्टैक करके. Maybe we can have a look at the end of the game. But yeah, he is winning. तो 2-3 पॉइंट गेन करेंगे वो. Are you FIDE master? नहीं भाई, I am a candidate master and a national master. FIDE master I think 2300 पे होता है FIDE. I think my peak was like 2275. Sabe, what do you think? Gukesh is on a Gukesh bang the table and lost more brutally against Ronak than Magnus did against Gukesh. Of course, bhai. I think Magnus Gukesh takes for higher. Yeah, if you lose a game, a national championship game or a world championship game, you'll be more mad at the world championship game. So it's obvious. Vincent thinking falling below the 1 hour mark now. And मेरे हिसाब से this is a big problem for Vincent because every move is rather critical. अरविंद तेज खेल रहे हैं and वो clock timer सही नहीं है chat. Arvind has a lot more time. I think it will fix automatically. But the main problem is कि भाई every move is critical. He cannot afford to make a mistake. So for example, हमने best move खेली rook g1, ठीक है? Now I take on c3. What do you do? The only move is pawn takes c3. Queen से मारोगे तो bishop गया.
And if you take on bishop, then of course queen e7 is check, resigns. ये तो literally king का square ही नहीं है. So you have to take with the pawn. फिर castling कहाँ करने वाले हो यार? I can play king rook e8 already. Threatening bishop takes d5 check. आपको king d1 खेलना पड़ेगा. भाई king d1 and now rook c8. So this is objectively better for white because white can play bishop d3 and still say कि मैं king side पे attack कर रहा हूं. But practically this is anybody's game. King d1 पे है, जब तक ये pawn है, there are always risks for the white king. यहां से attack बन सकता है, यहां से बन सकता है. So this is very dangerous for both sides. So Vincent Keymer, जिसका टाइम होगा वो उसकी advantage होगी. Vincent has to be very accurate here. Yes, NM FIDE title होता. I think it's a USCF US Federation title, and CM NM बराबर होते हैं, and they are both 2200 and FIDE FM is 2300. So CM है दो FIDE title. Meanwhile, please take a look at Arjun. I think we had. I think I'll show you at the end of the game, chat. I think अभी के लिए let's stick to this because वो board change करना पड़ेगा and it can just derail the entire stream somehow. Meanwhile, Divya game में no moves. Oh, we have a move actually. She played bishop to b4, one of the good options in the position. So attacking the rook, and now the rook has to move. So if you play rook f1, I think that might not be ideal because rook is kind of blocked and bishop f1 का square चला गया. So rook has to move up. Rook e2, there is knight f4. Rook e3 पे rook hanging है. So I think rook e4 या rook e5 is the question. Now rook e5, they might be bishop d. Sorry, there's knight hanging. So, but yeah, both options available. Yeah, rook e5, rook e4, I think. So Divya has to choose, and I do like rook e5 slightly more because doesn't block my bishop here and also leaves the e4 square open. So rook e5 maybe is a slight preference, but rook e4 का benefit ये है, it attacks f4 and also like जब ये push होगा, it doesn't block the bishop. So both options decent. NMCM same नहीं है. It's just कि I think maybe CM is slightly tougher, but in terms of rating, they are same. So CM 2200 FIDE चाहिए होता है, NM 2200 USCF चाहिए होता है, and USCF is usually slightly easier to get in terms of strength. So that's why there's a difference. But in terms of rating, it's pretty similar. By the way, Gukesh ने A5 खेला. He played the best move in the position. Bishop drops back. Now what does he play? I think A6. We discussed this, right? A5, Bishop C7, A6. Going for the double edge position. He's gone for it. But एक ही drawback है. After A6 takes, you have a broken queen side. But black के pieces, king side पे potentially कुछ करने के लिए ready है भाई. So it could be tricky. It could be tricky for Gukesh if he goes wrong. Has to be careful. मिलता है एनएम सीएम से बेटर होता है भाई. भाई एनएम यूनिक है भाई. That's the advantage of NM. Very few NMs in India. Maybe I don't know anyone. Meanwhile, as Vincent Keymer has not played, he has played Rook G1. Wow. So he does play the best move. Now, Knight C3, as we discussed, is the only move for Aravindh. So the problem for Aravindh is even he is playing in only move territory. I think आदत सी है अब तो अरविंद को ऐसे जीने में. So he must be used to it. But Vincent Keymer is not making it easy. Come on. Arvind, let's continue the winning streak. Yeah. I mean, he's playing well. He's on 50%, has won a game, has shown signs of defending the same opening. Yeah. Kind of battling battles against the top of the world in the same opening. Even Magnus does not do that. So a win here would mean the world to him. Can he create another upset
अगेंस्ट द वर्ल्ड नंबर 5. बहुत रेटिंग मिलेगी भाई, छप्पड़ फाड़ के रेटिंग मिलेगी आज अरविंद को. टिकू भाई नूब है 300 येलो से हार जाते हैं भाई. द प्रॉब्लम इज तुम्हारी 300 भी नहीं है भाई. दैट्स द सैड पार्ट. Meanwhile, going to give off Gukesh ace play. Let's go! Nice move by Gukesh. A6 played, breaking the queen side. And chat, जो मैंने कहा था वही हो रहा है भाई. Result आने वाला है, I think. I think we're gonna have a result here. Because honestly, after takes, I don't see how black defends this. Like, the only thing I see is counterplay. अगर आप डिफेंस में आ गए ना, फॉर एग्जाम्पल 97 ट्राइंग टू डिफेंड दिस, आई थिंक गुकेश यहां पे कभी ना कभी रुके. वन ओ नवारा जी को भी छींक आई. वो नवारा उठ के छींके भाई. आई कैन रिलेट टू नवारा भाई. परपेचुअल कोल्ड फॉर मी एज वेल. हार्ड रिलेट भाई, हार्ड रिलेट. वेल आई थिंक यहाँ पे रुके वन, कभी C6, कभी A7, कभी क्वीन, कभी कुछ, हमेशा अटैक करते चलेंगे. So I think this is going to be a nightmare for black to defend. I think he has to go for counterplay. And in that situation, I think Gukesh gets some winning chances. So ये game पे result के high chances now. Divya is playing against Finek, who is in the yeah, Finek is playing very well. Not just in this tournament. In fact, he's rated like 2550 भाई as an IM. तो rating इतनी जल्दी बढ़ी उसकी कि टाइटल लेने का भी टाइम नहीं मिला GM को. वो डायरेक्ट सुपर GM टाइटल देगा लगता है. What if rook b8? Rook b8 would, I mean, it's possible, but जब मैं मारूंगा ये, अब रुक से मारोगे, how are you defending this a7 pawn? Like for example, takes, ये थोड़ा सा पिन है, यहाँ pressure, knight c4, knight a5 में भी आ रहा है, and even I'm not forced to take. I can wait. I can even play knight c4 directly. So after rook b8, it's kind of a waiting move. इंतजार करते रहो भाई. श्योर भाई, हम पुराने जमाने में सिमरन इंतजार करती होगी, बट आज के जमाने में इंतजार नहीं होता यार. शादी.com भी है. दोबारा नॉट हैविंग हैंकीज नहीं पॉसिबल है यार. छींक अचानक से आती है कई बार यार. समटाइम्स यू हैव नो आइडिया छींक कब आने वाली है. छींक कभी भी आ सकती है, पता है. साहिल रीड साहिल कमेंट. कौन सा साहिल भाई? कौन है चैट में साहिल? If I would guess winner for candidate, it is Nakamura. Because last time candidates he was second and Gukesh was first and second. I mean, it's a fair assumption because Hikaru finished, I think, third in the candidates where Dink won, right? Because first and second, dono ka mauka mila because Magnus withdrew. So he came third there. Then he came second last time. But also the problem is he came second on tiebreak. So technically there was a three-way tie on second place between Hikaru, I think Caruana, as well as Nepo. I think Nepo was the third guy. So it's like very hard to judge whether it's a guarantee. So Hikaru is a great prospect to win the candidates, but to say that he's likely to win, I'm not so sure. But yeah, bhai, मैं आपको कहा था, प्रोड्यूसर भाई ने उस टाइम पे कैमरा लगा दिया. इज लाइक शिट भाई, रिवील हो गया, लेट्स गो बैक. ये बाय द वे हम मैजिकल स्क्रीन देख रहे हैं, 50% स्क्रीन. अदर स्क्रीन ब्लॉक्ड है. चेक हिकारू लेटेस्ट ट्वीट. ऐसा क्या हो गया भाई? डोंट टेल मी कोई नई कंट्रोवर्सी. भाई राकेश भाई कहां है? कंट्रोवर्सी डिस्कस करने का कोई बंदा तो चाहिए साथ में. हिकारू ने ट्वीट किया, मे द लायन रोर. आई डोंट नो व्हाट ही इज सेइंग भाई. ये मुझे, आई होप दिस इज चेस रिलेटेड भाई. मेरे को पता भी नहीं है क्या. What is the tweet about? I don't wanna comment on this भाई. I don't think this is chess. तो मैं आगे बढ़ूंगा जिंदगी में. Meanwhile, chat, I think aces के बाद we are still thinking from Navara's side. So Navara यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई क्या करना है. As you mentioned, rook b8 is one move. Also ba6 is the other. b6 I would not even consider. I mean, both the bishops are angry with that move. So मेरे हिसाब से I think, yeah, let's just take. Navara bhai, time pressure by the way. Let's not forget he still has to play 22 moves in 46 minutes. Not a big pressure, but at least दिमाग में रहेगा कि time कम है, थोड़ा खिचखिच करेगा.
होता है ना, एक मक्खी कई बार कहते हैं कि एक कान में घुस जाती है या घूमती रहती है ऐसे, वैसे ही वो टाइम प्रेशर ना मक्खी की तरह उनके आसपास घूमता रहेगा. सो लेट्स सी चैट क्या होता है. Meanwhile, as we can, let's do a roundup of all the four games. First of all, challenges में सूर्या. भाई कुछ तो ड्रामा हुआ है यहाँ पे. So we had queen c7, queen e2, b6, nice move, knight g5, bishop b7, f4, and now the position looks very interesting. Rook h4 is one idea, because the problem is if you castle, there is knight f7, I think. Maybe that's the problem. So you can't instantly castle. So how do you do it? It's not so simple. You could just take. Mm, maybe that's the option. Yeah, that's the easy option. But there could be other ways. I think Rook h4 is one. Just making obvious moves which make sense for now. Um, yeah. So I think tough choice for Surya here. मेरे हिसाब से all he needs to do is castle and play Rook g8. And I think this would be game over. So एक चांस में एक ट्रिक पे खेल रहे हैं वाइट कि कैसलिंग करना मुश्किल है. And he might even just go f5, yeah, just to break open the center while the king is here. So Surya has to be a bit careful कि यहाँ पे गलती ना कर दे. So that's the first thing. So the game's still looking good for Surya. Second is Divya. Bishop got no moves by Divya so far, so game still slightly better for her. Rook e5 या rook e4 move हम expect कर रहे हैं. So game looks even slightly better maybe for us. Next is Aravindh Chithambaram, who's slightly worse, but time पे थोड़ा सा आगे. But game is very complicated. I would just not look at the Indian evaluations here. I will look at the kings. Both kings extremely weak. White king on e1 as well. So practically anybody's game. But यहाँ पे भी result के chances very very high. Draw तो I would say is almost impossible. I can generally bet Maggies with Sahaj bhai here कि ये draw नहीं होने वाला. So meanwhile यहाँ draw नहीं होगा. Crazy game. And finally Gukesh, जहां पे he seems to have a positional edge, right? Slight positional edge. यहाँ black का pawn structure break होने वाला है. And the kind of position जो Magnus Carlsen हरबा जीतेंगे. If Magnus was white here, you know he would win. You just know he would win. So I think it depends on if Ukesh has the stamina and the patience to, maneuver his way around and put pressure. But I think this is definitely better for Ukesh and good chances to win this. Why mods ban me? भाई कुछ तो काम किया होगा आपने भाई आर्यन भाई. साहिल सर, चेस मैचेस में कमेंट्री करने के लिए कोई एग्जाम देना पड़ता है क्या? हाँ भाई. सो कहते हैं कि कमेंट्री करने के लिए भाई पहले कैमरा एंगल चेंज कर देते हैं. ठीक है ठीक है. सो कमेंट्री करने के लिए पहले आपको आईएएस देना पड़ता है. एंड आईएएस में यू नीड द रैंक ऑफ 669. कोई रैंक नहीं चलती भाई. नंबर 1 नहीं चलती, 1000 नहीं चलती, 669 रैंक चाहिए. एंड वंस यू गेट दैट देन आपको आईआईटी का पेपर देना पड़ता है. और आईआईटी में नंबर 1 रैंक चाहिए होती है भाई. एंड देन यू हैव टू रिटायर, गिव अवे द रैंक. कहना है मुझे आईआईटी ज्वाइन नहीं करना है. एंड तब जाके आप फॉर्म भर सकते हो भाई. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे. दोनों चीजें करना. What if black push the pawn? If you push the pawn to b6 chat, the problem is, first of all, ये pawn endgame तब यहां पे रह गया. So जब भी मैं endgame में ये pawn मारूंगा, you're basically lost. Second, ये pawn भी कमजोर है. I could just put the rook on c1 and put pressure. But in fact, तीसरा reason भी है, and that is d5. अगर आप ये मारते हो, you can see the bishop on c7 is hanging. I will take and then take here, piece up. और अगर आप c5 खेलते हो, then there is d6. Bishop attack, rook attack, and exchange down. ये भी close to lost है. So I think मेरे हिसाब से b6 is a big blunder, close to a blunder. I think यहाँ पे उनको मारना पड़ेगा, which is not tempting at all. फिर तो आप बहुत टैलेंटेड हो भाई. बिल्कुल भाई. साहिल भाई कुछ भी, अरे यार सुधाकर जी, कुछ भी करना बहुत मजा आता है यार कुछ भी करने में. जब कुछ भी बोलते हो ना, इट जस्ट रिलीजेस द पार्ट ऑफ यू व्हिच यू हैव नेवर रिलीज बिफोर. मीनवाइल we don't see Gukesh at the board. He's walking around. Remember chat कि ये गेम बहुत क्रूशल है गुकेश के लिए. He needs to gain some rating points back. He's world number what 15 right now, 13 actually. 13-14 पे टाई है दोनों का, गुकेश और परक का. That is not ideal. You need to have the world champion in the top 10 at least, if not top 5. राकेश भाई को बुलाओ. बिल्कुल भाई, राकेश भाई को बुला चुके हम. इतना बुला सकते थे. आई थिंक कुछ नेट का चक्कर है. भाई आज आज
आर्बिटर लोग कुछ ज्यादा ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या भाई, मतलब कैमरा फुटेज के अगेंस्ट? भाई आज क्या? पर मैं सॉरी, माय बैड, आई थॉट आर्बिटर कोई। Why chess is so hard even for GMs? Because chess is like looks like a finite game, fixed rules and so on, but there are more moves, more chess games possible than the atoms in the universe. ऐसा कुछ मैंने सुना है. So you can pretty much guess कि कितना complicated है, कितनी possibilities हैं. For example, just 19 move है, and already David Navara, who's like a world top 100 player, is struggling, yeah, to come up with the move. So that's very hard. Arvind game, of course, we can check. By the way, he has played the best move, knight takes c3. Best क्या only move बोलना चाहिए. Actually, that would be the correct representation. And now, only move for white is taking the knight with the pawn. And I'm not expecting anything else, of course. कोई चाल ही नहीं है यहाँ पे. You might as well resign otherwise. And after he takes the main target comes कि अरविंद कैसे खेलेंगे. Pawn takes के बाद, is he gonna play rook e8, rook c8? There are so many options in this position. कम ऑन चैट, लेट्स गो भाई. स्ट्रीम बाय द वे 500 लाइक होने चाहिए भाई, बिकॉज एक बंदे को मिलेगी चेस का मेंबरशिप. भाई एक बंदे की जिंदगी बदल जाएगी यार, आज समझ रहे हो तुम? वो बंदा रिटायर हो जाएगा भाई चेस के टर्म्स में अपने. Why cannot take knight with the queen? He took with the pawn, by the way, as expected. अगर आप क्वीन से मारते हो, you are losing protection of the bishop. एंड आप बिशप टेक्स बिशप मारेंगे. इवन द रुक है, आप मार सकते हो, बट क्वीन भी है. एंड मैंने फ्री का पीस मार लिया, रुक e8 एंड व्हाइट इज लॉस्ट. यू कांट इवन कैसल बिकॉज क्वीन है यहाँ पे. सो आई थिंक पॉन से मारना कंपलसरी, जो मारा विंसेंट ने. एंड नाउ अरविंद हैज टू डिसाइड कि भाई कैसे खेलना है, बिकॉज नेक्स्ट कुछ चालें ऑब्वियस है. फॉर एग्जाम्पल रुक e8, रुक c8 काफी ऑब्वियस लग रहा है मुझे देखने में. एंड ऑल्सो क्या यहां पे अटैक बनने वाला है उनको कैलकुलेट करना है. इज वाइट थ्रेटनिंग समथिंग? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ब्लैक खेलता है a6. ब्लैक कहता है मेरी पोजीशन में कुछ गलती है ही नहीं. व्हाट इज वाइट गोना डू? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट नाउ इतना क्लियर नहीं है कि वाइट ब्रेक थ्रू कैसे कर रहा है. इफ यू प्ले बिशप h6 टू ट्राई एंड अटैक दिस, ब्लैक कैन प्ले g6 एंड सैक द रुक. बेसिकली आप मारोगे बिशप से, एंड दिस पोजीशन इज आई थिंक इवन बेटर फॉर ब्लैक. बार कह रहा है वाइट बेटर है. आई होल हार्टेडली डिसएग्री हियर. सो आई थिंक पॉन से मारा एंड नाउ रूक e8 प्लेड. And now white has only two moves. Of course, you can take, but I think the best move is king to d1. भाई king को चलना पड़ेगा अब उनको. Very hard move. But Vincent Keymer will find it. 100% will find it. साहिब आज अकेले कमेंट्री कर रहे हैं भाई, लाइफ में अकेले, कमेंट्री में अकेले, हर जगह अकेले ही है भाई. सो इट्स जस्ट दैट वे, इट्स गोना स्टे दैट वे भाई. क्या करे भाई, तन्हाई गाना प्ले भाई. काश को हमारा कॉपीराइट नहीं लगता होता. साल में बस एक रिक्वेस्ट है आपसे. तो क्या हुआ साहिल भाई, बहुत अरे रहता है कि भाई रिक्वेस्ट तो बता दो भाई. आई मीन साहिल भाई, दैट्स ट्रू भाई. साहिल भाई की एनालिसिस ऑन अनदर लेवल. It's like it's on another level, almost in another continent right now, like it's crazy. अभी तो शादी हुई है, अकेले कैसे हो गए भाई? पर शादी हुई है, बट कमेंट्री इतने घंटे चलती है कि भाई शादी लग नहीं रहा है भाई शादी हुई है. अकेले हैं तो क्या करें. वाह भाई, कितने भाई अकेले पर पे कितने गाने बने हैं यार. दैट्स क्रेजी. And meanwhile, chat, as he thinks, maybe it's a good time to check out Divya's game. If there's an update, she has played rook to e5. And now, knight f4 is the only move for her opponent. If you play c6, hoping कि भाई मैं knight को ऐसे defend कर दूंगा, it is lost. By the way, he does play knight b4, but because c4, knight f4, एंड ये बिशप और ये क्वीन एक डायगोनल पे है, यू कैन सिंपली प्ले द बिशप बैक, एंड ये d5 के बाद कभी ना कभी कोई टैक्टिक आएगी एंड इज ऑलमोस्ट लॉस्ट. सो बट ब्लैक बहुत ऑन गार्ड थे. उन्होंने बेस्ट चाल खेली, ओनली चाल खेली नाइट f4, एंड ही इज बेसिकली सेइंग आई एम गोना बिल्ड अप एन अटैक एंड आई एम आल्सो गोना टेक योर बिशप. सो दिव्या आल्सो हैज टू बी वेरी केयरफुल. बाय द वे, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दिव्या को ड्रॉ चाहिए, शी कैन गेट अ ड्रॉ हियर. आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट फोर्स्ड. Rook e3, basically.
defending the bishop, defending the knight. And now black can play on with knight d3, queen d3, but it's slightly worse. Or he can play knight d5, rook e5, knight f4, rook e3. So this is a potential draw for Divya if she wants it. So let's see how ambitious Divya is. I think a draw against the tournament leader would not be a bad result. And you can play it once, yeah. You can see if my opponent is repeating, and then you can take a call. So I think Divya might just play rook e3. It's a logical move also because defends the knight and the attack becomes less stronger because you can defend on third rank. Also opens the bishop, by the way. Let's not forget. So rook e3, very logical. Divya likely to play this. By the way, Vincent Keymer finding king to d1. भाई भाई को किसी भी चीज का लालच हो, कैसलिंग का लालच तो जिंदगी में नहीं है. भाई खुश है बिना कैसलिंग के यार. रोटी कपड़ा और मकान में मकान के बिना जी सकता है विंसेंट काइमर. बिकॉज किंग टू डी1 खेल दिया उन्होंने. ही जस्ट वांट्स एन अटैक, अटैक और अटैक. भाई मूवी चलती है एंटरटेनमेंट 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 से, और चेस गेम चलती है काइमर भाई के लिए अटैक 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 से. भाई अलग ही प्लेयर है. टाइम पे थोड़ा सा पीछे है, बट इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, मैनेजेबल. एंड नाउ अरविंद एक्चुअली इज स्ट्रगलिंग बिकॉज सरप्राइजिंगली बिकॉज ये डबल पॉन है, किंग तक पहुंचना इतना आसान नहीं है एक्चुअली. तो बिशप d3 kind of defends the c2 pawn and makes it very hard for the pieces to get to the king. ये bishop बहुत crucial piece है because also controls the e2 square. So there is no takes and rook e2 for example. अगर ये bishop ना होता भाई, रुक यहां आके बैठ जाता भाई, गेम ओवर. Tell the best opening is black. By the one you have the most experience with, I think is the best. By the way, the best move played by Arvind. And now I think bishop d3 would be very, very logical from Vincent. Takes a seat. I do think he'll think for a while though. Critical moment here. So Gukesh game mein, by the way, David Navara has 33 minutes to make 22 moves. I thought that time pressure will not be a problem in this game because they're playing so quickly. I take my words back. I think Gukesh बहुत बढ़ चुके हैं. This is huge pressure on David Navara. And he's still not played. 32 minutes now. हकी चेस खेलती बिल्कुल भाई, भाई भी चेस खेलती है यार. शी इज लाइक अ WM20. मेरी रेटिंग के बराबर ही है आई थिंक उसकी रेटिंग भी. एंड होपफुली बढ़ेगी. मीनवाइल Gukesh had more time. I agree. But I think yesterday we saw a mistake. It would be almost impossible to imagine Gukesh blundering in 3 out of 4 games. So I'm going to back Gukesh here and say he's not going to make a big blunder and he has good chances to convert here. And David Navara clearly not comfortable with the position because 31 minutes now. Beautiful position. Yeah, it is actually. Because structurally आप अटैक कर रहे हो opponent को and you can see the structure breaking. Yeah, बिल्कुल भाई, फाफा भी चल रहा है. बिल्कुल भाई, फाफा भी चल रहा है. Meanwhile, आज ट्विटर ब्लो बहुत हो रहा है यार. भाई एक for newcomers, how strong was लेकिन भाई, I'm not kidding. I'm gonna call you Moran भाई because it's easier. Moran भाई, मैं literally ट्विटर खोला, पहला ही मुझे ट्वीट उनका दिखा. So it's crazy कि you mentioned that. Um, I don't know how this has happened, but I think he was very strong, but not
not, by the way, pawn taken, before we come to Karyakin, pawn taken by David Navara. So Gukesh should take it very quickly. Don't expect him to take too much time. 31 minutes remaining for David Navara now. He took like 21 minutes and 10 seconds for that move. I'm sorry, but this is too much time for a capture. Checks captures threats. सबसे पहले capture करना सोचना होता है यार. And coming to Karyakin, I think he was a very, very strong player. He played the World Championship against Magnus Carlsen, and in fact is the only player ever in history to have a lead against Magnus in a World Championship match. Magnus ने खुद कहा था एक टाइम पे उनको लगा गया World Championship match, गया खत्म. And but I do feel that Karyakin was not really like if there was a list of the world top 10 players of all time, he would not be there. So I would say he was in the category of somebody like, I don't know, Hans, or maybe somebody like, very hard to judge though, because he did play some amazing tournaments, won the World Cup. Maybe not Hans though. A very strong player, but maybe not in the top 5 of the world. Let's put it that way. That would be a fair assessment. Why Norway chess? Norway chess twice. Yeah. Of course, like very strong player. But I mean, if he returns to chess now, maybe he'll not be in form. Yeah, I mean, anybody, we saw what happened with Ding. Like Ding did not play for a couple of years and got destroyed after that. So I think playing after a while really plays with your chess skills a bit. गोलू मोलू कॉमेंटर कहाँ है भाई? सारे कॉमेंटर गोलू मोलू है. दैट्स द क्रेजी पार्ट. सो यू हैव टू नैरो इट डाउन फॉर बेटर. भाई बस वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, बाकी तो सब चंगा है. Meanwhile, Bishop pawn takes इसके बाद Gukesh is now thinking. That's again a bit of a surprise now. Sure, Sahil bhai. Slightly surprising because I mean his opponent was thinking about 22 minutes, so and capture is the most obvious move. So he might have thought about this before, no? Magnus does it on purpose, hyping the opponent so he would enjoy playing the result. I mean, Magnus at this point doesn't care. I'm sorry, but maybe he did multiple things earlier to, make the games interesting. Now Magnus is like, आते हैं, खेलते हैं, पेलते हैं, जाते हैं भाई. He's just simple यार, मतलब लाइफ सिंपल है I think Magnus की. Like he doesn't care. आया, जीता, गया, खत्म. बहुत simple life है भाई. He's a father now. He's married. He's happy with his life. I don't think he's thinking too much about other opponents. He's like, भाई कोई आएगा तो देखेंगे. फिलहाल के लिए तो अपनी भगवान है. And fair enough. If you read 100 comments from now, I will donate 1,000 rupees. Wow. 100 total या 100 आपके? Because 100 total तो मैं, मेरा मिनट का काम है. Kraken was not even close to prime ding. I would say maybe you're right. Kraken, I don't think has touched 2,800. So that itself kind of tells you he was not in the, not a contender for the world top 10 list, for example. Parham will by no word discussion. By I'm not an expert, as you might know. मेरे social studies में barely pass हुआ था मैं. 80 number ही आए थे. So please don't ask me on history. Why is Gukesh not wearing glasses? By first round में he blundered, so he thought let me change the glasses. And उसके बाद से भाई तब भी blunder हो गया. So maybe glasses were not the problem. It was the tactical awareness. Karyakin won, candidates didn't. By he did technically finish, right? Because he came second and he qualified. So he did play the World Championship. He didn't play it. I mean, and he became the world champion, which Karyakin never did. So technically, Ding got more done than Karyakin. भाई शादी कब कर रहे हो? Good question, bhai. I think maybe I'm gonna take a time machine, go back in time a couple of months, and then get married. I like that option a lot. What do you think? भाई देख लो, मैसेज देख तो रहे हैं भाई, देख तो रहा हूं. आपने बोला नहीं रिप्लाई भी करना है, देख तो लिया मैंने. Crack is people 2788. Yeah, that makes sense. And तब आजकल rating deflation भी है. So if he played now, I think he would lose even more rating. By the way, 29 minutes for David Navara now. Bhai, this is getting really tough for him. And by the way, we'll do a quick roundup again. Not roundup, I just want to check out
the game of Divya for a second because उन्होंने after rook e5 knight f4 repeat नहीं किया. She plays the best move. I love it. Knight takes e3 and queen takes. And there is a huge tactic incoming. For example, आप aces खेलते हो, random chal which maybe doesn't mean much. Chat, white to play. What is the best move for Divya here that wins the game on the spot? Come on, chat. This will tell you how bad the position can be if black is not paying attention. The move here is the insane move. Rook to g5 भाई, game over. खत्म. Because bishop यहां आ रहा है, rook g7 पे आ रहा है, queen हिलोगे तो rook takes g7 by, and यहां पे it is actually even checkmate. So you can't do this. So queen देनी पड़ेगी भाई आपको. And man, डकैत की queen जो okay. Anyways, the point is कि भाई ये game over है, so you have to be very careful. And queen g6 is the only move in the position. Otherwise, Divya is close to winning. So yeah, Divya playing some amazing chess right now. Potentially better, of course, better, and potentially could beat the tournament leader. Could gain a bunch of rating from this, so doing very, very well. And in fact, wait, how is Surya worse? Bhai, nahi. Wait, what? Wait, he took on g5, great. Then he castled, great. And then rook h4 nikalna tha with the idea of rook dh8, but he plays knight b4. And that's a big mistake from Surya. Now a3, I think his idea is bishop g2, but apparently king g2 is just better because now somehow there is no attack. If queen b7, oh, you have to play king f2. Okay, tough. I have to side with Surya. This does look tough, but there is no rook h2 because bishop controls. So Surya objectively making a mistake. Not sure if his opponent will find it, but that's a blunder or close to a big mistake, let's say. Meanwhile, Vincent Keymer game in, no moves by Vincent. So he's still thinking 38 minutes to play 23 moves, getting tough. And now going to the World Champion Gukesh, bishop b6 played. By the way, not one of the best moves in the position by David Navara, who's now struggling on the clock. And knight c4, best move played by Gukesh. And by the way, rook b8, only move for David Navara now, who's not even at the board. Bhai, clock tick tock ho rahi hai. Kahan hai David Navara? भाई इतना टाइम है ही नहीं उसके पास. Where is he? He needs to play now. And he has to find an only move where Gukesh is close to winning. If, for example, you play the second best move, that is knight to f4, trying to go for an attack. There is knight fe5, and basically bishop attack, pawn attack, yahan pe attack. Bhai, there could be tactics in the air, bishop h7 check. Bhai, this is knight b6 could be a tactic because rook could be hanging in some variations. Close to lost. So he has to find rook b8, only move. Pressure building up. Gukesh is not winning, chat. Not winning. Winning would be a big overstatement right now, but he has chances here. He's building up the pressure. So far, opening has been amazing. The middle game has started off well. Can he continue playing these moves is the question, chat. Stream like, let's get to find likes. Maybe the world champion finally wins today. Chat, 21 moves हो चुकी है Gukesh में. 20 moves उसके opponent की, so 20 चालें खेलनी है हमको 26 मिनट में. Navara under huge pressure. Look at the time difference right now. 1 hour 6 minutes versus 26 minutes. Agreed. Time advantage is massive for the world champion. Ayush bhai, great point. Easy move है ये तो भाई. Easy move है. But knight f4 भी tempting लग रहा है. There are multiple easy moves here. Gukesh doing the alpha walk. Can we remove the board for a second? If he wins, so यही edit करना है भाई फिर. आजा गुकेश भाई, एक बार म्यूजिक ऐड कर दें. गुकेश गुकेश हाँ, गुकेश आ नहीं रहा है भाई. सो ओके, लगा देते बोर्ड वापस. जब आएगा, जैसे ही हटाएगा आएगा, हटा देना भाई. नवारा हैज अ फोर्ट्रेस अराउंड हिज किंग. भाई उनको पॉन्स बोलते हैं. दे कैन बी रिमूव्ड.
One by one. Prague ka next round candidates direct chat. So that's yeah, it's insane भाई. आने दो मुकेश को, दोबारा आएगा भाई. I'm pretty sure he'll come up again. Oh, too close to camera this time. देखो 50 जगह स्ट्रीम करता है और कहीं का मैसेज नहीं पढ़ता भाई. यहाँ का मैसेज पढ़ता हूँ भाई. ठीक है, हम ऐसे इल्जाम नहीं सहेंगे. क्राउड युकेश के वापस आने का वेट कर रहा है भाई. एग्जैक्टली. You know, I think a world champion is playing the Prague Masters for the first time. And you keep it in mind that it's a great honor to have a world champion play on your soil, right? So imagine Magnus आता है यहाँ पे, कितना क्रेज होता है इंडिया में. Like he gets mobbed. Same way I think Ukesh would have a bunch of fans there, and it's amazing. साले 100 कमेंट्स मैं लिखता हूँ, स्पैम करता हूँ, आप पढ़ लेना और 25-75 कर लेना मेरे साथ. बस यही 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 स्कीम है. सबको बता दो भाई तुम. बाद में मुकेश को ट्रैक करते हुए हम लोग अब पूरे स्टेप्स काउंट कर लो. ओ भाई साहब, ट्रैकिंग मुकेश. वो मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है भाई. वो था ना एक, तुम मुझसे छुप सकते, क्या तुम मुझसे भाग सकते हो, तुम मुझसे छुप नहीं सकते, समथिंग लाइक दिस. ओके, छुप गया शायद. आर्बिटर भाई मिले हुए मुकेश के साथ. परम ही आर्बिटर जो भी है वो मिला हुआ मुकेश के साथ. छुपा रहा है उनको. नहीं नहीं. वी ऑलमोस्ट लॉस्ट हिम चैट. बच गए. By the way, David Navara finds the best move and the only move in the position. And Chad White has a bunch of good moves here. You could just take on b6, remove the bishop pair for your opponent, and black को pawn से मारना पड़ेगा because rook से मारोगे तो pawn a7 hanging है, and then you will get the a file, rook a7. So, for example, knight takes, rook से मारा तो pawn गया, तो pawn takes, and now rook a7. That is one way to put some pressure. Second way, even better way, could be played rook d1 just to unpin this bishop and also defend the pawn. Just maintain tension in the position. Very logical. Now, third best way, and the best way here, is rook to a3. Idea being rook to e3 next, and then take on g6 or create some threats. And keeping it flexible, yeah? Rook b3, rook c3, rook d3, rook e3. Jahan mauka mile, wahan chale jaunga main. So that would be the best move. So Gukesh has multiple choices here. And in multiple ways, he can put some pressure. Yeah, rook a3 is the best move. Very nice move. Indian की recommended. But not an easy one to find. I think तीनों चालों में से सबसे मुश्किल है निकालना rook a3. Meanwhile, Ukesh thinking he's at the board right now. 19 moves and David Navara को खेलने 24 minutes में. Does not look easy from his perspective. By the way, before we come to Ukesh, I think he's going to think for a minute. Vincent Keymer की game में move आई है. He has taken on e7. Finds the second best move in the position. I think queen e7 will be automatic. And then bishop d3 आएगा. So no major changes, but number of pieces on the board have reduced. So attacking chances दोनों के कम होते हुए. Now going to okay, Surya we saw, I think. By the way, Divya's opponent finds the only move, queen g6. And now she is in kind of a tough situation because she could continue playing with the queens on board. Apparently, queen c4 is a very interesting move, attacking the bishop. अब अगर आप यहां bishop h3 मारते हो, threatening mate, there is knight h4, defending mate, attacking queen, and attacking bishop. So you win a piece. You can't take on h3. So bishop d6 now. And now this very tricky move, knight to h4. The queen is almost trapped. Almost trapped. Either you have to go to h7, which is horrific, or you have to come to f6, which is directly in the bishop's path. So this could be a way for Divya to gain the edge, but it's very tactical and very, very specific. So very difficult to find. Or the other option is just to take on g6. Double the pawns and then say, okay, I mean, you have the bishop pair.
but I have the better structure, I have the center, I have active pieces, and the game again is maybe equal or slightly better for Divya. So I think quite complicated. And if she finds queen c4 and knight h4, that would be insane. That's a difficult find. It's a find you expect from somebody who's 2700. So Divya finds this. It's a great sign for her candidate prep. But maybe queen c6 is also not so bad. So let's see. Important moment in Divya's game. She's thinking. She has 42 minutes. Time-wise, dono barabar hai. And I think they find, yeah, very likely. कि माइकल भाई अंगूठा क्यों दिखा रहे हैं भाई? Meanwhile, her opponent is in great shape, has 2.5 points out of 3, has already defeated a couple of IMs and drawn against a 2650 GM. So is in great shape. Gukesh is playing the most fearless chess, while Magnus's loss rate 7.9% and Fabi prioritizes stability. Gukesh is sitting at a 17.5% loss rate because he every game. I think I actually kind of agree, but on the other hand, you also have to calculate the win percentage. So, for example, somebody who has, let's say, 10 में से 7 point. Now, if they kind of scored 6 wins and, or let's say 5 wins and 4 draws, or somebody has 7 draws, then you can compare, who has the more fighting spirit. But somebody has 7 points, somebody has 5 points, and the 7-point wala guy has more draws, then it's not really going to work because I think extra points there. So, draw is better than a loss. So it depends. I think 2 to 3.5 out of 4. Let's see. I hope not. Matt doesn't need to come to dinner when the fish already. ये क्या है भाई? कौन सी मछली की बात हो रही है? ये समझ नहीं आ रहा मुझे. By the chat, like the stream, let's go to 500 likes भाई. आज membership क्यों है करना है भाई? 500 like पे. भाई अपने सर पे हाथ उन्होंने ऐसा कहा जैसे धूप बहुत लग रही हो, ऐसी फीलिंग आ रही है. Let's see क्या होता है इस गेम में. Time wise, I think balanced है काफी. Meanwhile, I don't see any moves in Arvind's game. I don't see any moves in Surya's game. No moves here. So let's just head back to the world champion, by the way, who has just played the third best move, took on b6, of course, a takes, and now plays rook to a7. So he's going for the solid edge, jahan pe he's trying to play for 2 results essentially. But winning chances maybe are also not as high in this variation. But if we combine with the time, शायद I think chances अच्छे बन सकते हैं. I have 85% win rate. तो यार 15% बार फिर अंगूठा नीचे होता है आपका मतलब माइकल भाई. This might draw. I mean, it's possible. Actually possible कि ये draw सकता है. I do think कि white is better. क्यों? Compare the pieces. White's queen, black's queen are equally well placed. White's bishop is slightly better than the black bishop. White's rook is slightly better than the black rook. Knights maybe are equally well placed. They are also equally well placed. So I think pieces wise, white is slightly better. So maybe halka sa edge. Okay, 30% win rate, classical, Magnus more than 40%, Arjun 36%, Fabi 31% post World Championship. Wow. ये stats हमने कहाँ से निकाले भाई? Like these look like detailed stats. किधर से आ रहे हैं ये win rate के numbers? Exactly my question भाई. Hopefully आप अपने आप से नहीं निकाल रहे भाई. What is bishop d6 after queen c4? Bhai, I think you're looking at some other game right now. Black can go for the attack. पहले तो bishop hanging है लेकिन, so you have to defend the bishop. And अगर आप bishop यहाँ लाते हो, I will take the pawn. So I think queen d6 here is the best move. But एक बार queen d6 यहाँ आ गई, I think the attack is basically less likely to succeed because you can't really bring the queen to the king side. So queen would love to be on g6 or g5 to create some initiative, but on d6 it's very hard. Pieces उतने हैं नहीं, basically. And if you don't play queen d6, what else do you do? I mean, you could play rook bd8 to defend the bishop, but abhi rook chala hai, dobara chal rahe ho, and then rook b7 maybe attacking this pawn. Still some pressure. इतना टाइम मुकेश देगा नहीं कि आप अटैक कर पाओगे.
ब्लैक कैन प्ले बिशप F4 तो है ही नहीं भाई. बिशप F5 पे तो पीस हैंगिंग है. So bishop can't move. I think bishop E6, you lose this pawn, basically. By the way, move played. He goes rook b8. He goes rook b8. Okay. Second best move in the position. Now what do you do as Gukesh? I think rook b7 is one possibility. Trying to attack the pawn. And after rook b7, b5, आपको squares मिल गए यहाँ पे, dark squares. You can utilize them. Let's see. ये गेम ऐसे नहीं जीतेंगे यार. इस गेम में ना लंबी ग्राइंड करनी पड़ेगी, आराम आराम से, जैसे मतलब बोलते हैं ना, ऐसे स्लो मोशन में जीतना पड़ेगा ये गेम, तभी जीत सकते हैं. ब्लैक कांट प्ले बिशप F5 भाई, दैट विल बी अ फ्री पीस, बिकॉज आप सोच रहे हो ये पिन में है, but it's not under a pin. I can take because rook takes pin. There is knight takes c1, so I will win a free piece and win the game. That's why rook bd8. Let's see now what does Gukesh do. Meanwhile, Divya has not played a move. Surya has not played. Vincent has not played. So game abhi thodi slow chal rahi hai. I think this is the moment where the players are having their last deep think. If a time pressure hit karega, David Navara has 22 minutes remaining to play 17 moves. Similarly for Divya, she has 36 minutes remaining. Vincent has 33 minutes. So time pressure approaching like a sap in midnight. Let's see kya hota hai. Gukesh going for the win. Of course he is, as always. The more time Guki takes, more extra time David gets. I mean, that's okay. भाई ये तो है, ये तो यूनिवर्स का रूल है भाई, कि आप जब सोच रहे हो मैं भी सोच सकता हूँ. बोर्ड छुपा के नहीं बैठ सकते, पर्दा डाल के. इवन बैठोगे तब भी प्लेयर्स कैन मेमोराइज द पोजीशन. सो इट्स, एंड स्पेशली मुकेश के सिचुएशन में, व्हाट ही हैज डन इन द लास्ट फ्यू गेम्स इज ही इज ब्लंडर्ड. ही हैज मेड अ बिग मिस्टेक इन वन मूव. सो तो वो अवॉइड करनी है. सोचना इज नॉट बैड. नाउ रूक C7 सजेस्ट कर रहे हैं वहां पे, आई थिंक Ram bhai. But the issue is, I think it's a logical move. I think can be played. But Queen D6, I think, basically attacks the rook. So rook को दोबारा move करना पड़ेगा. So it's a free tempo. आप rook से मारोगे अगर तो मैं, you'll take with the bishop. And if you take with the bishop, I might just take, and then take the rook, not the bishop. So I think rook C7 maybe doesn't work because of Queen D6. Divya played. Let's check it out. By the way, oh, she played Queen C4. Divya Deshmukh found Queen C4. Wow. That's a great move. But can she now find Knight H4? That would be impressive. That would be genuinely impressive. She can find a way to really harass that queen on G6. Pull it on an awkward square. Chahi F, अब queen को चाहे या F6 जाए या H7 जाए, both are very awkward. Wow, great find, yeah. Queen C4. Saying no to that queen trade. Wait, what did she play? Ah, she misses it. She misses it. Okay. She found a decent move, but Knight H4 nikala tha yaar. Knight H4 nikala. That would have been crazy find actually. Wow. Misses. Damn. That was a big miss. Yeah. Divya Deshmukh, unfortunately, misses the only way to get the advantage. Now, it's equal, but equal करने के लिए black को B5 निकाल. Okay. Okay, don't ask me the evaluation of that position by, because it looks ridiculous to me. So maybe Divya still has chances because B5 is almost impossible, I feel, to play. So I think still some chances for Divya, but yeah, she misses that Knight H4 crazy idea. Would have been very impressive. Meanwhile, चैट आज काफी गेम्स इक्वालिटी में चल रही हैं. सो इट्स क्वाइट क्रेजी टू मी, कोई भी ऐसे मास्टर्स में एटलीस्ट अभी जीत नहीं रहा है. सो गोइंग टू द गेम ऑफ द वर्ल्ड चैंपियन अगेन, जहां पे गुकेश इज जस्ट अबाउट टू फॉल बिलो द 1 hour mark. He doesn't look super happy with the position somehow, ऐसा मुझे लग रहा है. Like not super happy, yeah. Yeah, challenger Zhu Jiner is losing, I think. There were a couple of players who were losing. But Masters में it feels like nobody is really much better.
What about rook a3 now? नहीं यार, अभी तो rook a3 का कोई उतना मतलब नहीं है. Already on the 7th rank. So you've chosen a path. It's like आपने कहा पापा मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा पापा, मेरे को नहीं करनी इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग यहाँ A3 स्क्वायर है. मैं एक्टर बनूंगा पापा, मुंबई जाऊंगा पापा 300 AQI में. And then you go for acting and then you come back the next day. It doesn't make sense. Choose one and stick to it. Why can't Ukesh play Rook D7? See, Rook D7 में Rook D7 पे क्या आइडिया आपका? Because what you I think want to play is Bishop C6. I'm guessing कि you want to attack both rooks, but then there is Rook E1, and it just completely foils your plans. So Rook D7 not working, not yet. What a commentary. Thank you भाई, thank you भाई. कभी कभी वो सुनील शेट्टी नहीं, सुनील क्या नाम है उनका भाई, एक्टर का, बॉर्डर वाले एक्टर का, वो निकलता है कभी कभी अंदर से 2.5 किलो का कमेंट्री. Meanwhile, Gukesh, Gukesh still thinking. Gukesh क्या निकल गया भाई suddenly? Oh, Surya's again better. Bhai, wait, what? What just happened? Wait. I think this is what we saw, right? We saw like knight b4 पे a3 was the best move. Bishop g2, king g2, queen check, and king f2 खेलना था. He played king g3. And suddenly knight c2, brilliancy by Surya. Wow. Bhai, look at this. If you take this free knight, chat, black to play and finish off the game. Can you find this chat? Come on. What a move. Bhai, comeback ho raha hai. Bhai, Surya is now close to winning. Come on, chat. What is the move? Yes, Krish भाई. भाई Krish तो आंसर करेगा ही. रोहित मेहता का बेटा है भाई. रुक h3, रुक सैक, मारोगे क्वीन f3 चेक, एंड डजंट मैटर कहां जाते हो. किंग h2, रुक यहां पे h8 चेक, king g1, and rook h1 is checkmate. So what a find. And now you have to play knight d2, essentially saying goodbye to a rook. And knight e1, let's say rook e1. Yeah, he does play knight d2. Knight c2 completely miss kar diya. And now Surya is again better. So that's great news. Amazing news, भाई. क्या move थी भाई. Knight c2. Wow. By the way, game, if you go to Arvind's game, after queen e7, bishop d3. Wait, what just happened? Rook c8, bishop e7, queen e7. Oh, okay. Very hard to say why rook e7 was better. Yeah. Very, very hard move. Arvind takes with the queen. But now bishop d3 ke baad, apparently Vincent is close to winning. And I think White's idea is basically to play queen g5. And once queen g5 mein I'm threatening mate in one. So you're kind of forced to trade queens. And जैसे queen trade करोगे, I mean, the endgame is just better for white, right? Because again, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Pawn up. ये pawn भी weak है. I already have passed pawns in the center. Better bishops. King in the center already coming to d2. I mean, looks great. So I think Arvind under huge pressure now. Chad, unfortunately, I think Arvind के chances मुझे बहुत कम लग रहे हैं गेम बचाने के. I don't see how you stop queen g5. That's a queen h6 भी एक problem है, because bishop is now attacking h7. So if you play a6, I mean, queen h6 just feels automatic, no? Like it's already lost. Wow. So you have to apparently find rook c6, not rook c5, भाई ये तो मेरी move है. Rook c6 to avoid queen h6, but then queen g5. And yeah, ये गेम बचाने के लिए Arvind will have to play out of his skin. You can already see him, yeah. He's really stressed. He's holding his head. He knows the game looks really bad right now. Wow. Chess is tough, bhai. Chess is tough. By the way, Hans game soon draw. Really.
Why not really? I mean, अब तो game चल ही रही है यार. So don't really think this game is close to, even remotely close to a draw. So going back to maybe Arvind's game for just a second. I think Vincent Keymer is about to win this game. Arvind has been great. Maybe he can defend. Yeah, it's possible. It's possible. But I think practically it's a tough one. Um, it's going to be tough. It's going to be really tough. Let's hope so. He can put Vincent in some time pressure and then maybe Vincent makes a mistake and gives an outside chance. Because otherwise, I think this is looking like a close to lost position for Arvind. And he has to find Rusis, otherwise he's actually just lost. Because Queen at 6 आ रहा है. By God, क्या move है. Queen at 6. Finishing the game. So meanwhile, Divya की game में Queen G6 के बाद Queen C4 ये and Rook E3, no other moves so far. So her opponent is still thinking. So let's jump to Gukesh's game. जहां पे भी we have no moves. So Gukesh also still thinking. He has time. He has a lot of extra time. But क्या होगी move? What is the behavior, Arvind? Why? Why are you doing this with us? Good question. I wish I could answer it. Bishop c6 तो blunder है ना भाई, because we are attacking it twice, black is defending it twice. So bishop c6, queen c6, queen c6 and खत्म. Okay, still thinking. Navara, by the way, board पे बैठे नहीं है. Feels like I think maybe he's a bit happier with his position now. Considering that he's not sitting at the board, even though he's under severe time pressure. भाई ट्विटर पे आज आग क्यों लगी है यार? Rook c1. Yeah, Rook c1 is possible. I mean, you could just play this, but I feel like this is not a big problem for black to defend. Black can, of course, defend it, but black can even just go for the initiative, knight f4. And yeah, taking here would be very risky because मारने के बाद rook e2 आ रहा है. There's rook c8 ideas. So you have to be a bit careful, I think, of trying to grab this pawn when black still has the attack. Potential attack, let's say. अभी तो कुछ खास नहीं है. भाई आज क्या चल रहा है भाई दुनिया में? Wow. Uh, Pakistan in semis, really? Oh wow, that's crazy, bhai. Great to know. So it's gonna be क्या रहेगा भाई फाइनल? अच्छा इंडिया को हराना पड़ेगा वेस्ट इंडीज को, राइट? कल. Meanwhile, no move still by Gukesh. Can we have the 4 board angle once? Would love to see all the 4 boards together and see if this are, we can update our scores chat. We started off, I think I had predicted 3 points starting May because I had hopes for Arvind, but I think Arvind का मुझे अब difficult लग रहा है. गुकेश के विनिंग चांसेस थोड़े कम हो गए. Let me think. Gukesh, let's say still chances for a win. Arvind, I think difficult. So let's say if he loses, Surya has good chances to win this now, although very complicated. Let's say win. And Divya maybe draw. So 2.5. Chad, what's your guess? 2.5 is my guess. एक मुझे चेंज नहीं कर सकते बार बार. भाई हमने कौन सा मैगी लगाई है? अकेले कमेंट्री करने का एक ही तो बेनिफिट है. वी कैन चेंज प्रिडिक्शंस व्हेनेवर वी वांट. दैट्स द एडवांटेज ऑफ नॉट बेटिंग अगेंस्ट एनीवन. अरे टिकू भाई मैसेज रीड कर लिया करो. 10 बार डाल चुका हूँ. कहाँ भाई फिजल फिजल कूल? आपका नाम ही नहीं कूल है दिखता मुझे. गोइंग बैक टू द फुल बोर्ड विद द कैमरा. या दिस वन. And Gukesh still not playing. I think
maybe knight b6 was a bit premature. होता ना जब बहुत जल्दी अटैक करते हैं. I wish there was a chess word for it. If there was an interview where this word was covered, premature attack. But yeah, it feels like maybe knight b6 was a bit hurried. He took that quickly, and now maybe he's not able to find enough of an edge. Because yeah, you have a couple of targets. c6 एक target है, but black also has a couple of targets. The pawn on d4, knight coming to f4. It's a 3-result position. Can players bring their own chairs? Wow. Let me think about this. So मैं एक प्लेयर हूं एंड मैं कुर्सी खुद लेके आया हूं. सो क्वेश्चन, फॉलोअप क्वेश्चन, ये चेयर हम इंडिया से ला रहे हैं, अपने अपने देश से ला रहे हैं कि वही लोकल खरीदी है? साहब इन लॉज को मुंबई घुमाने ने घुमाया कि नहीं? भाई इन लॉज मुंबई में रहते हैं भाई, तो वो मुझे घुमा रहे हैं या घुमाते अगर कमेंट्री नहीं होती तो. दिस विल लिक्विडेट, या जस्ट लाइक माय क्रिप्टो स्टॉक्स भाई. जीरो क्रिप्टो स्टॉक्स, लेट्स से क्रिप्टो स्टॉक्स. सबका वही हाल है. क्या हाल है सबका यार? Surya's game, please, I want to follow up on that brilliancy. Of course, bhai. I think this is where we left it. Knight e2 उन्होंने खेला था after knight c2 brilliancy. मार दिया रुक. Oh, 94. Interesting. Threatening a fork on the queen भाई. Knight f8 एक और brilliancy. अरे वाह जी वाह. अगर knight d6 खेलोगे तो ये मार देंगे भाई, खत्म. And this knight escapes. So आया अब rook takes a1 and now knight to g6 and rook f1, only move for his opponent, or Surya Shekhar Ganguly is literally winning. भाई टफ लग रहा है यार सूर्या के लिए मुझे. आई काइंड ऑफ फील कि यहां पे कुछ किया नहीं उसके ओपोनेंट. दिस इज कंप्लीटली गॉन. सूर्या इज विनिंग. कम ऑन. Is there any GM in Pakistan? Not really. I think Pakistan get top seeds 2200 हैं, 2200-2100. Meanwhile, as Surya struggles, Aravindh is struggling as well. By the way, G6 खेला है Aravindh ने. That's one of the moves, but Queen H6 आ रहा है अब. This should be a huge attack building up for Vincent Keymer. Queen H6 खेल सकते हैं. And if you try Queen F8 chat, trying to exchange queens, I think you could even just come back to F4 and again have huge threats here. This is very dangerous for Aravindh Chithambaram. Brother, what do you have to do play chess like this? I think you have to train for decades. It's not easy. Cover St. Louis Masters also. What is your problem? It only starts at 3:30 a.m. Abe bhai, you text me on Instagram at 3:30 a.m. For 9 days in a row, and agle saal we'll cover St. Louis Masters. Done, bhai. By the way, chat, yahan pe going back, G6, this is the live position. Queen G5 also does the job, I think. You can trade queens, but Queen H6 very, very strong. Because Queen H6 के बाद अगर आप random move खेलते हो A6, I think it's already time for Bishop G6. लग रहा है कुछ counter play है यहाँ पे, but King C1. And unfortunately, this is just game over. So G6 is you didn't have many options also. So what to do? 5-minute cross 20 from Chessfield Masters before kindness. Yeah, it's possible. We saw him playing and he was 3.5 out of 4 when he took that half point buy. So if he wins a certain number of games, he will. Chat, keep in mind, in general, I think Aravindh has struggled quite a bit, but that one game against Hans is the one that shifted the tide. But it feels like he's struggling still. So not going to change the evaluation much. This G6 move, that is, unless Vincent cooperates. Vincent भाई कुछ थोड़ा काम और ऐसा कुछ गलती कर दे तो कुछ हो सकता है भाई. If you know what I mean. एक ब्लंडर चाहिए भाई, बस एक छोटा सा ब्लंडर, मतलब ऐसे कुछ हल्की सी गलती, like random move h4 या something which looks logical but is not the best. That's what we need from Vincent Keymer here. Please analyze rook takes bishop, rook takes, then bishop takes. You want to play rook g6 here? Bhai, that's too much, I think, because
ब्लैक के पास भी काउंटर प्ले है. इनफैक्ट क्वीन नीड टू चेक, जस्ट ट्रेडिंग क्वींस एंड इट्स ओवर. एंड इफ यू डू द अदर वे अराउंड, लेट्स से आप बिशप से पहले मारते हो, ब्लैक कैन बी वेरी क्लेवर हियर बाय द वे. ही विल फर्स्ट प्ले चेक, ट्रेड क्वींस, टेक विद अ चेक अगेन. आप किंग बचाओगे एंड नाउ विल टेक द बिशप. खत्म, एंड गेम, पीस अप, जीत गए. सो यू हैव टू बी केयरफुल. ब्लैक का काउंटर प्ले नहीं घूमना. अरविंद यहां पे रेडी है गलती के लिए. मोदी जी को बुलाओ कैंडिडेट स्ट्रीम में, आराम से कैंड जीत जाएंगे. अरे भाई मोदी जी तो जितवा ही देंगे. वो तो मैग्नस भी जीत जाए यार. यार मैग्नस इज मोदी, आई डोंट नो हु विंस. ओके बट एनीवेज, मीनवाइल गोइंग टू दिव्यास गेम. दिव्या इज वर्स. नो 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 नो. उनके ट्रिकी ओपोनेंट ने वो B5 मूव निकाल दी. भाई क्या बंदा है यार ये. We thought it's not possible to find this move, but he did, chat. Apparently, after B5, the best move was just to play something normal like Queen D4. Keep this idea of Queen G7 and keep black pieces tied. For example, अगर Bishop H3 खेलते हो यहाँ पे आप, threatening that mate, this again Knight H4, and you win the Bishop basically. But उन्होंने B5 के बाद Queen B5 मार दिया, and now Bishop H3 is a dangerous move. Because knight h4 के बाद chat, there is queen takes c2 attacking the rook, and if queen c1 there is apparently queen d2, which is the hard part to find, because अगर यहां मारते हो आप गलती से, there is rook a b8 winning the game. So will her strong opponent find all this, chat? I think it's tough. I think it's very tough. But if he does find all of this, he is better. But okay, it's not losing for Divya. After, in this position, rook c1, queen d2, she has to just come back with knight f3. And now bishop d7, knight d2, bishop b5, and Divya is slightly worse. I think after bishop e5, still good chances to draw this. So Divya, I would still say is very okay. Because ये सब निकालने के chances बहुत कम है, and if black doesn't find it, Divya is absolutely fine. भाई what a move, b5. यार बंदा खतरनाक है यार. Vaclav Finek, crazy guy. Meanwhile, Surya is still better, I think, slightly better at least. So going to the game of Arvind, भाई तो ये चल क्या रहा है? Divya is slightly worse, Surya is equal, Arvind is much worse. So अंत में सारा दरमदार फिर से गुकेश पे आता है यार. यो राकेश, राकेश भाई कहां हो भाई? भाई स्ट्रीम को कितने घंटे हो गए भाई? 7:30, 8:30, 9:30 भाई, 3 घंटे होने वाले हैं. ठीक है भाई, चेस हिस्ट्री में कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है कि? ऑफ कोर्स भाई, नॉट इन टॉप लेवल इवेंट्स. टॉप लेवल इवेंट्स इज वेरी रेयर, बट वैसे बहुत भाई, मैं खुद खेला हूं चीटर से भाई. बट ओके, दैट वाज 1500. बट पीपल हैव played like some players who are like cheaters, like even over the board. मेरे आते ही दिव्या गेम बिगड़ गया. तो आप ये रहो भाई, लेट्स सी उसके ओपोनेंट का भी गेम बिगाड़ दो. हैव यू एवर बीन ऑन लेटेंट? नहीं भाई, टैलेंट और लेटेंट दोनों मेरे पास नहीं है. मीनवाइल चैट, एज वी लुक एट दिस पोजीशन, मेरे हिसाब से गुकेश needs to lock in right now as he is and come up with a creative plan, something out of the box, which can put a lot of pressure here, because time is the only factor that is on his side right now. Game wise, black is okay. Divya's opponent missed really. Ooh, he missed. He played queen takes c2. Okay, now the game is again equal. So again, chat, not much to risk. As I mentioned, वो सब निकालना बड़ा मुश्किल था यार, बहुत मुश्किल था. Now I think rook c1, काफी logical चाल. And black, I mean, if you go back, that looks, let's say queen g6 खेला आपने. My rook is now a bit more active. 95 apparently is very strong for Divya. So black को यहाँ पे a6 खेलना है. And now rook c2, a b5, and now bishop e5, chat. I think this is just a draw. This is just a draw. Very simple draw. Bishop b7, bishop d6, c d6, knight b4, bishop d5, knight b5, rook a2, bishop a2, knight d6, draw भाई, खत्म, चले घर. So yeah, draw very likely in the Divya game now. Wait, what?
Bye. We have moves. Jesus Queen's killer. By Vincent Keymer attacking. Rook c6 played. And now Vincent finds the only move in the position. King to d2. Wow. 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 And now bishop f5. And now queen g5 only move nikalni padegi. Chat, the idea is bishop takes e3 and queen e2. And suddenly black starts to attack. So you need to find queen g5 and trade queens. Vincent needs to stop the attack and needs to go on the defensive and head into the endgame. I think he can do it, yeah? He can easily do it. He's played some great chess. Accuracy is 99.8, by the way, by Vincent Keymer. 99.8 in such a crazy attacking position. Not theory. And yeah, he's taking this game home. What you don't want to do is bishop f5. That's what you want to avoid. Because then comes in queen e2 check. And suddenly भाई यहाँ पे ब्लैक ने अटैक लगाई हुई है. Queen f2, rook e1 आ रहा है, rook c3 आ रहा है. And this rook does a great job of defending the black king. So, yeah, queen g5, blue arrow, only move in the position. Yo, Tiku bhai. Sorry about ओहो देखो भाई 400 साल बाद आए हैं राकेश कुलकर्णी स्ट्रीम पे. वाह नहीं, I hope you can hear me और आवाज अटक के नहीं आ रही है. नहीं, आवाज आ रही है भाई. बढ़िया, finally. यो चैट, तो टिकू भाई क्या हालचाल? Any progress from yesterday या आज भी दिन खराब है? भाई 4 गेम चल रही हैं. चारों में से अरविंद तो खत्म है. So Aravindh is lost. Okay. Surya was much better, then much worse, and now is equal. अच्छा. And Divya is equal. Divya has the likeliest chances of a draw. And Gukesh is also बस tiny. होता है ना वो हवा का better, like फूक बराबर better, like एक single फूक के बराबर better है. So फिलहाल के लिए, if I had to take everything at, first glance, it's gonna be 1 loss and 3 draws, which is not great, bhai. But it's a huge improvement from yesterday. मतलब कल तो भाई आधा ही क्या हुआ बात कर चार रहे हो में. भाई. अरे क्या आधा मजाक पॉइंट कर हुआ दिया था भाई. कल. क्या मजाक कर दिया भाई. 1.5 पे we have to now start dancing क्या. मतलब it's like. And it's sad कि Aravindh is the only player who has won a game in Prague, Indians में से. So that's the sad bit, chat. But yeah, hopefully कुछ तो बदलेगा आज. भाई मुझे लग रहा है टिकू भाई गुकेश जीतेगा. भाई ग्रॉकी भाई क्या है. Oh, that's a great name actually. मतलब ट्विटर पे मैं डाल सकता हूँ. Grokky can be a nice username. Yeah, Yeah, great username. So meanwhile, chat, I think Gukesh सोचे ही जा रहे हैं. I'm not sure what is he waiting for, because I think he's been thinking for what 29 minutes now. भाई इतने में तो इंग्लिश मूवी आधी खत्म हो जाती है. राकेश भाई क्या चल रहा है. Not sure actually, and काफी important moment है. So गुकी ensuring भाई कुछ tactical miss ना हो जाए, नहीं तो टिकू भाई फिर डांट लगाएंगे. सही में. और मेरी डांट बहुत स्ट्रिक्ट है भाई. मतलब इट्स इनसेन. सो मीनवाइल गुकेश के सामने उनके ओपोनेंट है ही नहीं. सो आई डोंट नो हाउ मच टाइम ही विल टेक. एंड इफ यू कैन जंप टू द अरविंद गेम राकेश भाई, जिसमें हम बुरी तरह हार रहे हैं. क्वीन जी5 दो इज द ओनली मूव फॉर विंसेंट काइमर. कितनी लॉजिकल लग रही है आपको ये कि वो निकाल लेंगे. भाई मुझे तो लगा कि व्हाइट वुड लव टू अटैक, बट बिशप d3 के बाद बिशप इनटू d3 बाय ब्लैक, क्वीन e2 काफी थ्रेटनिंग है. तो आई फील विंसेंट विल रियलाइज दिस एंड भाई उसको पता है कि उसके पास भी किंग है. सो ही विल ऑफर द क्वीन ट्रेड वेरी वेरी सून. या बिल्कुल सही बोला भाई. उसके पास भी किंग है. That is something Vincent will realize, Rakesh bhai. And if he doesn't realize, तो फिर Queen has to sacrifice herself, Rakesh bhai, ताकि किंग जीत सके. आज के जमाने में बहुत रेयर. अरे अबे चैलेंजर्स भी काउंट किया, चैलेंजर्स में भी कोई नहीं जीता है. सो गेट योर फैक्ट्स राइट ब्रो. और ओपन भाई, ओपन कवर ही नहीं कर रहे तो क्या हर टूर्नामेंट गिनते बैठेंगे क्या? मास्टर्स और चैलेंजर्स में कोई इंडियन नहीं. प्राग में कोई कबड्डी में जीत गया, कोई प्राग में फुटबॉल मैच जीत गया, तो वो भी काउंट. कोई प्राग में कोई बंदी का दिल जीत गया, वो भी काउंट करे क्या अब है.
हैं? दिल जीत लिया. Oh, SKR is making a nice point. Guki makes a mistake where he thinks so much. क्या लगता है टिकू भाई? You have commentated on many games of Guki. Is that true? By I mean, and I think in this tournament, maybe yes. I think he's been whenever he thinks for long, the move is not the best one for sure, at least. And you would expect a deeper thing to give you better results, but sometimes it's like you keep contemplating the same moves again and again. You keep going over the same lines again and again. And I think right now this was the move where Gukesh kind of messed up a little bit. यहाँ पे उनको B6 नाइट नहीं मारना था, उनको रुक A3 खेलना था to give himself the best chances, keeping the rook flexible to come, move along the third rank. But he quickly played this, but is now thinking. So maybe he lost a bit of his advantage there, and now it's very, very, very close to equality. That's the problem. Great. And problem is ना pieces कम होते जा रहे हैं और किसी का pawn weak है वो है D4 का white का pawn and C6 पे black का pawn. So you need two weaknesses normally टिको भाई to win. But David Yeah, Navara जो tournament के leader है उनके पास yeah, फिलहाल एक ही weakness. agreed. And David Navara, by the way, time पे इतना struggle कर रहे थे. That's why Ugesh was playing quickly. But now he's also feels more confident because if you look at back pieces, सारे piece काफी active है. And knight Yeah. f4 is an idea which can create a kingside initiative. And white के पास भी दो weakness है which can be attacked. So it's not like a one-way street. Like this is a 3-result position. If Ugesh makes a mistake, he could still lose this. So he has to be very cautious about going for any plan whatsoever because knight f4 आ रहा है. नाइट का इंतजार ही कर रहा है वो अगली चाल का. Yes, for sure. And I fully agree. अगर आप इतना टाइम सोचते हो ना तो कहीं ना कहीं यू स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग और नॉर्मली बहुत सोचने के बाद वाले मूव्स अच्छे नहीं होते. Yeah. Chat, this is a crucial moment. Gukesh needs to play because unke paas jo time h3, it was 40 plus minutes. Now it's just 10 minutes or so. He needs to maintain a time edge. Otherwise, psychologically, he's going to lose the only hope he has of winning this game. Draw would be not a great result for Ukesh. He lost yesterday, has the white pieces, is playing one of the weaker seeds. Okay, weaker is subjective, but in this tournament, David Navara is 2-6-3, more than 100 points lower rated. Rakesh bhai, win ही चाहिए यहाँ पे तो. Yes, yes. I mean, और भाई जीता नहीं है गुकेश in this tournament. So he definitely wants to win और tournament में comeback rating में comeback उसी से होगा. By the way, राकेश भाई एक क्रेजी चैलेंज कर रहा हूँ मैं. चैट, डू यू वांट टू नो? सो कल क्या हुआ? आई गोना टेल यू अ शॉर्ट 10 सेकंड स्टोरी. बेसिकली कल स्ट्रीम से जस्ट पहले नहाया था मैं थोड़ा, लाइक आई जस्ट टेकन अ बात उससे पहले. एंड आज आई वाज वेरी बिजी विद सम वर्क. तो आई हैड अ चॉइस कि डू आई काइंड ऑफ क्विकली टेक अ बाथ एंड कम फॉर द स्ट्रीम, लेट ना हो जाऊं. तो मैंने एक चैलेंज किया भाई, जब तक इंडियन जीतेगा नहीं मैं नहाऊंगा ही नहीं भाई. मैं मैं नहाना शन पे हूं भाई. अनशन तो नहीं कर सकता, भूख बहुत लगती है. मैं नहाना शन पे हूं भाई. जब तक कोई इंडियन जीतेगा नहीं मैं नहाऊंगा ही नहीं भाई, चाहे घर से लोग बाहर फेंक दे. सो भाई कोई तो जीत जाना आज, प्लीज प्लीज. Panda is saying 33 minutes, bro. What is bro thinking exactly? Like, I think वो टिकू को भी बोल रहे हैं उनके हाइजीन के लिए. What is bro thinking? भाई ऐसे मतलब टाटा स्टील में तो अब मतलब 15 दिन नहीं नहाते फिर. भाई किया नहीं ना लकली वो चैलेंज, बैकफायर. हाँ. बट एटलीस्ट आई एम होपिंग कि यहाँ पे कल सुबह नहाने को मिलेगा. कम ऑन मुकेश. Guki play यार. I feel okay. टिकू let's dig into the position. क्या सोच रहा होगा गुकेश? रुक सी. B7 एक चाल लग रही है मुझे. हाँ. बिशप इंटू G6 एक चाल है कि ना वो नाइट हाँ. F4 आ रहा है उड़ा दो. हाँ. और आई क्या थिंक ही है मतलब इन दोनों ये दो मुंह छोड़ के. yeah, b4 also feels, I think, very logical. You're getting वो the तो इंजन pawn के out of हिसाब the. से ना बट. Ha, but I think b4 also makes sense. But you're also preventing c5 and just making a move which can help in the end game. But the thing is, अगली चाल में तो फिर से कुछ चलना है ना भाई. ये this is like an individual move. So rook b7 is हाँ of हाँ course करेक्ट. a great idea and forces b5 essentially. But now again, what's the next move, Rakesh bhai? That's the main question. रुक D1 played. Let's go. After a 34-minute think chat. 34 35. मिनट. Wow. 35 मिनट. Wow.
Wow, that's a long thing, chat. That's a long thing. And David Navara कह रहे होंगे भाई जितना टाइम तू एक मूव पे ले गया उतना मेरा पूरी गेम के लिए नहीं बचा भाई क्या ही नाइंसाफी है बट लाइफ इज अनफेयर एज वी हैव लर्नड ड्यूरिंग 2020 2021 थैंक्स टू स्ट्रीमर सो राकेश भाई मुझे लग रहा है कि मे बी नाइट F4 इज समथिंग नवारा को बस फेंक देना चाहिए बिना सोचे या एंड इफ ही प्लेज इट क्विकली आप देख सकते हैं गुकेश मतलब शायद ब्रेक पे गए हैं तो इट इट माइट हैम्पर हिज क्लॉक इवन मोर. Yeah. And by the way, the first result among Indian players incoming very, very soon. We Let's go just there. discussed this variation chat. It was Divya, and this is where we left it, right? Rook C1, A6 takes, Bishop E5, Bishop B7, takes, Knight D4, takes. भाई हिकारू के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए राकेश भाई अगर इस गेम के हिसाब से उस कंपनी का नाम रखा होता तो भाई कोई पढ़ नहीं पाता बिल्कुल कितने आई थिंक अ सीरीज ऑफ 7 to 8 कैप्चर्स और बिशप e6 थोड़ा बहुत शफलिंग ब्लैक हल्का सा बेटर लाइक 0.2 एडवांटेज बट आई थिंक दिस इज जस्ट अ ड्रॉ एंड शायद वो रुक रहे हाँ 38 मूव्स के लिए रुक रहे एंड रुक c8 वाज द 38 मूव टिकू भाई अभी आप ड्रॉ ऑफर कर सकते हो. Yep, and I think both players know. In fact, knight is the piece which is usually better than the bishop in these structures. So black, I think, Yeah. yeah, agrees to a draw. So that is a good draw. I think Divya had a particular moment where she could have pushed, but drawing against the tournament leader, by the way. Rakesh bhai, 2565 rating में बंदा आई है मैं. Yeah, but he's a very strong player और check prodigy है ये बंदा. Yeah. Vaclav Finek, yeah, very strong. I think GM कभी भी मतलब बहुत ही जल्द बन जाएगा. And सिर्फ 15 साल का है चैट. 15-year-old kid, so very strong upcoming player from Czech Republic. But Divya के लिए he is 60 points higher rated. Tiku, I think draw a fair result. An amazing result actually, and that means कि Divya Deshmukh gained some rating points there and comfortable tha. She was never under pressure. So let's move on to the next game. By the way, Aravindh Chithambaram, Queen G5 played after a 12-man thing by Vincent Keymer. Aravindh struggling and Rakesh bhai, ये मुझे लग रहा है ये गेम बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. भाई मतलब अभी you have to trade the queens, right? मतलब let's show. What if I play a move like Queen E6? But Bishop Rakesh F5 bhai, मत मारो चैट क्योंकि हाँ, क्वीन ई अच्छा मार भी but सकते हो Rakesh क्वीन bhai, ई2 इज जस्ट वन चेक हाँ, but you know या F5 पे मारने के दो तरीके हैं actually. अरे हाँ माय बैड क्वीन F5 पर माय बैड तो या सो अरविंद बेसिकली कैन नॉट मूव हिज क्वीन टू मेंटेन द हाँ, अटैक उसको क्वीन ट्रेड करना ही पड़ेगा yeah, I think that's what he has to do. What he can do is he can chop off बिशप this pawn हाँ and the queen e7, rook e7 and say कि भाई मुझे pawn तो मिला कम से कम. पर But रुक somehow G3 के राकेश बाद भाई मर जब जाएगा ना वो पॉन रुक G3 का हाँ क्या and है also like attacking ये your pawns bishop या exactly agreed and ये पॉन्स बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं सो आई थिंक दैट्स द मेन इशू Hmm. बिकॉज ब्लैक के पास पॉन्स अभी एक साल बाद आएंगे एंड हमारे पॉन्स ऑलरेडी आर मूविंग सो आई थिंक प्रैक्टिकली दिस शुड ऑल्सो बी लॉस्ट सो राकेश भाई हाउ मेनी परसेंटेज चांसेस वुड यू गिव अरविंद टू सेव दिस गेम नाउ 10%. Ooh, that's more than I thought actually. Chat, what do you think? Do let us know. तो And भाई he, एक Rakesh, ड्रॉ हाँ कैन वी चेक इन विद सूर्या क्विकली सूर्या भाई का कैसे भाई चल रहा सूर्या के चैट गेस करो सूर्या के ओपोनेंट का किंग कौन से स्क्वायर पे है है बताओ मैंने देखा नहीं है गेस कोई करो ना चैट कम ऑन राकेश भाई एनी गेसेस ये क्या एरो क्यों बनाया आपने मतलब ये नहीं इस बोर्ड पे किस स्क्वायर पे है सूर्या का किंग वो रेड काउंट हो रहा है या नहीं काउंट हो रहा है मतलब रेड नहीं पे सब है सब या काउंटर सब रेड के काउंटर सब काउंटर है सब काउंटर है आई डोंट नो सूर्या ब्लैक है ना तो व्हाइट का किंग B3 हाँ सो लेट्स गो टू द गेम भाई F4 पे बैठा हुआ भाई है भाई 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 दिस इज भाई लाइक ये क्या चल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट a true leader भाई बाकी सारे किंग ना बस entitled brats that he is the true leader भाई only one who stood up to this battle by and playing chess how it's intended to be and ये हमने लास्ट देखी थी पोजीशन रुक F1 निकाला उनके ओपोनेंट ने किंग B8 नाइट D6 नाइट takes F4 was the mistake यहाँ क्वीन D8 खेलना था but very tempting राकेश भाई to take this bishop right and now king से मारा भाई only move
आता है queen e7, queen g2, and apparently rook d6 is the best move now. Rook d6. अच्छा, okay, sacrifice the exchange back. By the way, white ने exchange दिया या मरा? क्या हुआ? मरा भाई, this was the move. Look at this move. यहाँ पे ये position थी. King g3 was the blunder, and now knight c2 was the beautiful Oh, move. okay. Okay, मारोगे, मरा मतलब. rook h3 check, queen Beauty. f3, and then checkmate. So this is what he But missed. why is still Surya drawing? मतलब he should have won ना night c2 के बाद. He First also match made a के. mistake. He made a couple of mistakes also. अच्छा, So अच्छा, okay. unfortunately, minor mistakes, but it reduced the advantage a bit. And now it's close to equal. And now apparently, chat, he has to take. I think this knight is stronger than the rook for sure. And king open hai. Maro maro. And now queen d6, of course, is possible. But e5 check is also apparently stronger because king g3 was queen g5. And you have certain queen h4 ideas, queen e3 ideas, rook h4 Hmm. ideas. And it's much, much tougher. And white has to find queen e4, the only move now for equality. So very interesting position. Still chances for both sides to win this actually. I would actually prefer, मतलब vote predict that Surya wins this. हाँ, क्योंकि agreed. हारने का तो बिल्कुल डर नहीं है सूर्या को. एंड ही इज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स हायर रेटेड आई थिंक. तो काफी अच्छा चांस है सूर्या का इस गेम. नहीं, सॉरी, 100 पॉइंट्स. Yeah, 100 points. 100 भी बहुत है भाई, बहुत है. And बहुत है वो लेवल पे तो. yeah, and also now going back to the game of the world champion, by the way, David Navara के 15 मिनट है भाई. What's लेट्स गो, happening? लेट्स गो. एंड 16 मूव टू प्ले टिको. Wow. That's really tough. By the way, New Zealand, really? Pakistan को कोई chance नहीं है क्या? I thought they had to just win the match, no? नो नो, दे हैड टू विन बाय अ सर्टेन मतलब रन्स. आई थिंक अच्छा, 165 या कुछ अगर इन्होंने बना दिया श्रीलंका ने, देन पाकिस्तान इज आउट मतलब. 165. हाँ, ऐसा कुछ तो था वो तो शायद. बना लिया भाई, 150 बना लिया उन्होंने. सो करेक्ट, करेक्ट, वही. बढ़िया चैट. मतलब आज के दिन के शुरुआत के बाद ऐसे अच्छा है, कुछ अच्छी न्यूज आई फाइनली. ये क्या था भाई? राकेश आप ध्यान से बोलो भाई, आज दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है. नहीं, फिर क्या ही फर्क पड़ता है बोल मतलब. यू कैन. या कुछ ट्रू. गलत थोड़ी बोल रहे हैं भाई, नहीं इधर नहीं, गलत लोग नहीं, कुछ भी गलत. करे जा रहे हैं. हाँ ट्रू. राकेश आई जस्ट बी बैक इन 2 मिनट्स. मैं डिनर करके आता हूँ. गुकेश भी डिनर करके आ चलेगा, रहा चलेगा. है. मुझे भी लग रहा है. अब खा के आ जाओ, नो प्रॉब्लम. हाँ आता हूँ, मैं या. भी आता हूँ. Let's go, chat. Let's go. What's so great about knight f4? I see some other possible. Clippy made, I think the idea is knight f4. Then suddenly you start having these ideas like bishop h3, knight h3 check, and your white's king starts feeling a little weak. So you would avoid that. And normally, Gary Kasparov, like the former world champion, used to say a knight on f4 or f5, मतलब white के लिए f5 या black के लिए f4 near the king is worth more than a rook. क्योंकि it's very devastating. Knight e2 check is in the air sometime if the bishop moves. So it's a very strong piece. और g6 में तो कुछ कर नहीं रहा है. And the thing is, David Navara can play it because Gukesh can also not kick the knight away with pawn to g3 क्योंकि h3 pawn मर जाएगा फिर check में. So that's the point. Check. 65 runs win was, yes, yes, correct, correct, बराबर. You're right, chat. I hate London system. Can you show Arvind game? We'll go. We'll check out Arvind's game pretty soon. टिकू भाई, समझ में जा सकते हैं क्या अपन गेम चेंज करके? नहीं ना. हाँ. Yeah, board तो वही रहेगा. We can only show the camera, so we'll just stick with this game because David Navara down to 13 seconds, chat. And oh, Pakistan is out. बढ़िया भाई, बढ़िया. Well done, well done. श्रीलंका ने बचा लिया मतलब कुछ तो. Faustino is playing a Oriflame tournament. Yes, exactly. You are absolutely right, Michael. He needs to get his norm before 11th March. And if he does that, if he gets his third GM norm, he will become a Grandmaster, the youngest in the world, beating Abhimanyu Mishra ka record. So I'm hoping that happens. Messi of chess, like they call him. Let's see if he becomes a GM. Does Navara look sad or am I projecting my own shadow? No, I think he's just worried about his position, but I don't think he's sad though. We got half point from the 3.5 point. Ayush bhai, क्या ही करे यार. We are hoping for the best. We are praying the Indian players win
they play well, but let's see. Bhai is saying, I'm good enough in chess. Just because I don't have a FIDE profile doesn't make me incapable. I have 20. Oh, that's ranked. Oh, well done, well done. Yeah, I think many people have a very good online rating but don't have a FIDE ID. So don't worry, not judging you, bhai. Just keep playing well, keep working hard, and that would be awesome. Gukesh will draw this easily. Okay. I mean, I think draw is in his back pocket. Manish, my classical rating is 2321. You can check it out, but my bullet rating is higher. That is around 2600 on chess.com. Sigma walk, बिल्कुल, yeah. But normally वो winning position में करता है Guki. But Dinesh bhai, I hope he wins today. I really hope. अरे मनीष भाई, कर दिया आंसर रेटिंग. So I hope that helps. Sri Lanka might even win the match. Testing waters, मतलब I don't think so भाई. कितने 20 बॉल में 50 रन चाहिए यार, एंड विद ओनली 5 विकेट्स लेफ्ट. मे बी हो गया तो भाई सोने पे सुहागा. दैट वुड बी ग्रेट. Yes, Baba bhai, you are right. I think I have heard that as well, but I think he's one of the sweetest grandmasters in the world. Very polite, very I would say friendly. In fact, fun fact about David Navara is he greets you in the languages you speak. So very very nice of him. Rook e6 Oh, played, by the way. Chat. Oh, Tikoba is back. भाई ये Maggie. तो बहुत टाइम लगे यार. हाँ हाँ, एंड 11 मिनट बचे हैं. एंड रुक e6 a move I did not expect, Tiku. Yeah, and it's apparently a slight error. Not easy to understand why. Because I mean, it does feel like there are certain obvious moves you can play, like to make black's life miserable. First of all, what's the plan after bishop f5, Rakesh bhai? Rook d6, kya? Mm, Yeah, rook d6 apparently is the best, and suddenly it's close to equal. So apparently white's only move is 95, which is not an easy move to find. But if Gukesh is tuned in, he should be able to find it. 95, I think, uses this spin, right, on the bishop. For example, if you correct. take, I take, suddenly this bishop is hanging, queen is stacked. I think game over, right, already. So Yeah. there are tactical ideas. 95, tough choice, but this is the only move. Or kuch bhi nahi hai position mein to gain an edge. Oh, by the way, look at this. What Sure. happened? Rakesh, did you see Arvind's game? नहीं नहीं नहीं. It's गुड न्यूज over. है. अच्छा, बैड न्यूज है. Bhai, he blundered rook takes c3 and just forgot about the bishop, kya? What? 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 Okay, Vincent has taken the queen. फिर क्या हुआ? Rook c8 खेला वो, and now rook b1. भाई, Did he Vincent just can't forget about the believe it. bishop? Yes, I think so he did. Unless he plays the next move quickly. I think he's trying for rook c2. No, queen h4. Wait, What? what's the idea? भाई queen By into queen f3. f3? Queen d4 मारेगा फिर. But wait, I think, Tiku, this is a huge blunder by Arvind. He somehow forgot by this. भाई क्या By आइडिया क्या है? by Vincent के 4 इंच बढ़ गए यार height के अंदर. He was so stressed in the entire game. Now he's like कैसे in control. What is this? I didn't get it. Because until c2 is defended, I mean, there's nothing you can do, yeah? There's rook g6 ideas, there's rook b7 ideas. भाई कुछ I भी नहीं है यार. Wow. I I think mean, he queen missed it, भाई. f3, I think queen he missed d4. it. Yeah, I mean, this is just, I mean, rook c2 का idea है अब. That's the But only what move. if I You move can't the take with the king away? bishop. Yeah, king e1, king f1, resigns. Yeah, GG's. Wow. 24 moves in Gukesh's game, but 24 in Arvind's as well. But Arvind is completely busted. Mm-hmm. Bhai, this is really sad. And I think Aravindh Chithambaram is going down for the second time at Prague Masters. And Vincent Keymer gets a very important point.
Bhai, this is a huge point for Vincent. Yeah, it's sad, Rakesh bhai, but Arvind didn't capitalize on that, break he got against Hans. And unfortunately, that D6 opening, by the way, again, kudos to him for having the guts to play this opening again against the top players of the world. But it's तीसरी बार kind खेल of रहा है. yeah, it's predictable. दूसरी तीसरी बार खेल रहे हैं, in fact, इस tournament में, right? This is his third white. Yes. So to play it against Vincent, who just launched an attack with G4 instantly. I mean, that's why he's worst, right? I mean, this was just a smooth sailing for Vincent. And yeah, it's just sad. I think that opening is not working out. Something needs to change. And look at Vincent's accuracy, 99.8 after 24 moves. Rakesh bhai. See, Vincent, yeah, Vincent's accuracy आपने बताया ना भाई, 99.8 है. भाई क्या चल रहा है यार, 99.8. That is भाई ड्यू में insane. एडमिशन हो जाएगा क्या? नहीं भाई, 99.8 में थर्ड भाई. लिस्ट थर्ड लिस्ट का वेट करोगे तो हो सकता है. Damn, that is insane. So meanwhile, Dubai Open danger समझा नहीं भाई क्या कहना चाहते हो. By the way, Queen takes F3 played. Vincent about to win. Yeah, this is over. Yeah. I don't even know what Arvind missed, Tikku. That's the problem. Matlab. Yeah, that Rook C3 was just a last ditch effort, yeah? A throw in the wind. But after King E1, I think it's going to be just resigns for Arvind. And he's going to drop down in the ratings. He's going to go down to, he's 2686 right now, 2687. He's going to drop to 2683. And his Olympiad chances are taking a huge dip right now. Wow. So as Arvind contemplates, maybe one look at the game of Surya, where, okay, no updates here. Still, he's contemplating rook d6, I think. So let's go to Gukesh. He finds 95. A big find by the world champion. Wow. And now bishop e8 is what Navara has to find. Not easy. लग रहे थे शांत क्यों आज, क्या हो गया? कोई स्ट्रेस है लाइफ में? हाँ भाई, स्ट्रेस है. स्ट्रेस तो है. न्यूज़ पढ़ रहा हूँ ना मैं. अच्छा, न्यूज़ मत पढ़ो भाई. इग्नोर. Why has Vidit stopped playing? क्या है यार? अच्छा हाँ, right. Why has Vidit stopped playing some classical events, Chess 24 India? Yeah, I don't think he's stopped playing classical events. I just feel he's just taking a break and he's just trying out other stuff he's interested in. And that's fair enough. What do you guys think that is hard to play 15 moves 10 minutes? I mean, it is. Of course it is. I mean, if you're playing some dull endgame, rook endgame, sure, easy. But with complicated position, जहां पे there are only a couple of moves to save the game, very difficult. भाई गुकेश खुद 35 मिनट सोचा एक चाल के ऊपर है भाई, एक मूव के ऊपर. सोचो. वही तो किया उसने भाई, सोचा ही. That's the point. नहीं कर रहा था. मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि उसने आधा घंटा सोचा, आप तो थोड़ा सोच ही सकते हो. हाँ. And now chat bishop e8 is the move. So just to show you, for example, let's say, I mean, what do you play? 95 d5. Basically, we attack the queen and the bishop. You can play queen e5 कि मैं ये counter bishop attack कर रहा हूँ, but we have bishop h7 check या bishop f5 and then we take on d7. So that's not working. So 95 काम नहीं कर रहा है. उसके अलावा what do you do? Because ये bishop is hanging. So you can play something like rook d6. But apparently there is bishop g6, fg6 and queen b3, I think.
and somehow this pawn falls. So also doesn't look as tempting as Navara would like it to be. So bishop e8 is the move he needs to find. But that is a tough move, and matlab, I fully agree that with I hate London system that Navara will fumble under time pressure. 15 moves in 10 minutes is no classical joke, and in fact, that is now in 8 minutes. Yeah, not easy at all. And this is exactly what Gukesh needed. Good chances to win this. After that painful loss yesterday with the black pieces, Gukesh का सुनहरा मौका भाई जीतने का. David Navara needs to find bishop e8. If he doesn't, I think Gukesh is back in the driver's seat. बहुत बढ़िया chances हैं यहाँ पे. And कोई कह रहा है कि David Anton is better against Nodirbek. I think it's roughly even अभी chat, so we won't shift to that game. But one look at the Aravindh give any updates. Yup, Vincent Keymer played king e2, unpins his king. For example, अगर king e2 के बदले उन्होंने h4 खेला होता, that's where Aravindh would have struck with rook takes e2 and won the game because bishop से pin है मार नहीं सकते. But of course, king e2 unpinning the bishop and now it's just resigns. Yeah, I think he could just offer his hand any second now. Meanwhile, going to the game of Surya, no updates still. Wow, Surya still in deep thought. So let's go to Gukesh because Navara has 6 minutes, chat. 6 minutes for David Navara against the world champion Gukesh Dommaraju, who is pushing. He looked at the clock. Clock pe dekha Navara ne. He's panicking, holding his head. He's not happy with his position. He definitely missed 95 or underestimated this. And by the way, look at the accuracy. Gukesh, 99% accuracy so far. After 25 moves, most of that was preparation, but still, he's played incredible chess today. Of course, he's played incredible chess in the entire tournament, but has made a one-move mistake in a couple of games. He has to avoid that today at all cost. And just keep on piling on the pressure. Keep on putting pressure. Halka, halka. Brick by brick. He has to lay that wall and finally climb it when his opponent crumbles. David Navara, less than 6 minutes now. $15 more moves, 16 more moves. Let me correct you there. It's tough. David is kind of cooked. I wouldn't say so he's cooked. I think there's still always hope. And Bishop E8 is just plus 0.55, which is not really winning, so to speak. So Bishop E8 is still going to offer David good chances to hold this. It's the time which makes it really difficult. Oh, he's not happy. Less than 5.5 minutes. He's shaking his head. Yeah, and Tiko, I think kudos to Vincent and Guki. दोनों का 99% accuracy है आज. And I think both of them will win. Yeah, let's hope so. Let's hope so. I think Vincent तो अभी जीत जाएगा. कॉफी भी खत्म कर दी. डेविड नवारा ने, उनको पता है दोबारा कप उठाने का टाइम नहीं है यहाँ पे. भाई, he's under 5 minutes. What in the world? भाई वो आर्बिटर वही खड़ा है. भाई वो आशीष भाई वही लिख रहे थे चैट में कि टाटा स्टील वाला आर्बिटर फ्रेम में आते ही डर लगने लगता है. Yeah. Bishop By E8 the way, played. Bishop E8 played. Wow. He finds the best move. And now Respect, Bishop guys. G6 only move for Gukesh to gain a slight edge. वो तो खेलेगा भाई. In fact, if he doesn't play it, David is kind of better, slightly. Yeah. Because these two pawns are connected, these two pawns are separated, and suddenly black can pile on pressure on the d4 pawn. For example, knight takes, pawn takes. Suddenly this pawn is a major weakness actually. And it's not easy to defend. d5, rook e d6, you can't take because of rook d1. So important moment, bishop g6, important to take that because जैसे मारोगे, you cannot really ever remove this knight. Of course, there's e5 ideas, but this knight is quite stable for the time being on the e5 square. He has to take on g6. Pressure is building up. Gukesh has 5 times more time. Rare. ऐसा rarely कभी मतलब बोला होगा आपने इसके पहले. Yeah. By the श्रीलंका को apparently किसी ने लिखा 4 बॉल में 18 रन चाहिए. Wow. Not bad. Anton will not beat Nodirbek. Let's see chat. कुछ भी हो सकता है आज के दिन में. आज का दिन wild है. Anything can happen Saturday.
And no way bro is making 14 moves in 5 minutes. I agree, crazy pianist. He will fumble or make a blunder for sure. What is the critical variation? It is bishop g6, pawn takes, and now basically this opens up the black king. You can see how rook का pressure g7 तक जा रहा है. And now quiet move queen b3. आपने rook को pin कर दिया. There could be some knight g4 ideas to attack both these pieces. Also, more importantly, the pawn is hanging. And now black has to find c5 here. Otherwise, it could be falling apart. And now knight g4 again. And queen f5 only move now. So you can use this and maybe even play queen f5, knight e3, next d5 and get a pass pawn. You can see how white has real chances here. बिशप g6 तो मारना ही पड़ेगा गुकी को. बट Yeah, देखो, he has to. I think वो टाइम लेगा, अगर if he also plays fast, he may make थोड़ा inaccuracy. So I think Gukesh is doing the smart thing. थोड़ा सा समय लेना, but not too much कि डेविड को भी सोचने का टाइम मिल जाए. भाई श्रीलंका को 4 बॉल पे 18 रन चाहिए थे, 2 बॉल में 2 छक्के मार दिए. नाउ 6-2. भाई साहब, कम ऑन चैट अगर जीत जाए ना श्रीलंका, एक मेंबरशिप कर दे. Damn, that was crazy, no? Bishop g6 played. Bishop g6 played. Oh, Good let's news go. coming. What? He took with the pawn. अच्छा, of course. हाँ, pawn से मारेगा ना भाई, queen से थोड़ी मारेगा. Okay, एक चाल कम हो गया डेविड के लिए. But ओ चैट राकेश भाई, प्लीज की बस. ओ डॉट बॉल हो गया भाई. डॉट बॉल भाई. कम ऑन चैट, मेंबरशिप चाहिए तो प्रे फॉर श्रीलंका. चैट लाइक भी कर दो स्ट्रीम. 1 लाइक इक्वल्स टू 1 प्रेयर. भाई भाई क्या वो वाले मीम्स बहुत देखे अफ्रीका वाले आपने? नाइट टेक जी6 रॉन्ग. ऑफ कोर्स यार, ब्लैक इज डिफेंडिंग इट, सो नाइट जी6 वुड बी अ ब्लंडर. नहीं, इसके पहले पूछ रहे थे वो. बिशप इंटू अच्छा जी6 के अच्छा बजाय नाइट टेक जी6. अच्छा. Yes, knight takes was wrong. We looked at it, I think. Because वहां पे, I think, we looked at this, I think, कहां था भाई? Knight g6, pawn g6. Somehow this pawn is really attacked. Queen को access मिल गया, for example. And this is much better because this is much safer here. भाई एक बॉल पे 6 रन और 5 मिनट में 14 बॉले. हार गया यार, 14, सॉरी, 5 हार रन से गया. जीत गया. ओह, सॉरी चैट, मेंबरशिप का अच्छा चांस था. बट भाई चेस फैन बोल रहे फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जर्मनी इज नॉट इन्वॉल्वड. बढ़िया अरे भाई, आई लाइक इट. भाई क्योंकि राकेश में जर्मनी में है भाई अभी. और इसीलिए उनकी फ्लाइट अभी कुछ, कब की फ्लाइट है राकेश भाई? नहीं भाई, कैंसिल हो गई. क्या बात कर रहे हो? हाँ, सब फ्लाइट्स कैंसिल. ओह डैम. सो आई एम स्टक. बट देखता है कि मैं पहले फ्लाइट लूंगा या कोई इंडियन प्राग में जीतेगा. दैट्स अ फन चैलेंज एज वेल. या डैम. F3 rifle to cement knight. Why? I mean, sure, you would love to push the F pawn, but also, even apart from, let's say, F4 hanging or whatever, it opens up your king. So let's be very careful. What now? I think now queen b3. That's the move. You can also play other ideas. For example, rook d3 is also a nice move. This rook, again, has the flexibility of going anywhere we want, just keeping every option open. But I think queen b3 also very, very tempting. I had a flight Dubai today which was cancelled. Damn. Yeah. आपकी कौन सी एयरलाइन थी राकेश भाई? एयर इंडिया. Oh, wow. But the queen played on the board by pressure. भाई सिर्फ 5 मिनट बचे हैं डेविड नवारा के पास. He needs to play quickly. Meanwhile, how is Aravindh still playing? I thought अब तक खत्म हो. King e2, queen a4, king f1, by b6. This just tells you there's you have nothing. to make exactly, if you have to play a move like b6 in the middle of an attack.
तो समझ या जाओ. क्वीन d5 पे रुक d3 मारना पड़ रहा है यार. या he's played queen d5. I The think we'll see idea is resignation now. rook g6, Yeah. massive threat. You can't save it actually, I think. Rook c6 हाँ, maybe, but king anyway, c7 में check है. king g7 maybe you can just give a check, still sack. I don't know. Yeah, this is about to be over soon. But going back to Gukesh, David Navara has 4 minutes now. भाई दो Queen बॉल के लिए तो b3. हार्ट मुंह में आ गया होगा ना. जब वो दो क्या? छक्के मारे होंगे. Hard. अच्छा. हार्ट भाई अगर हार्ट. queen b3 के बाद rook is pinned. What if I go king h7 टिको? हाँ, king h7 is decent, but then I use the same idea, knight g4 वाला, and I'm gonna harass your queen. Now queen cannot go here because rook है, so इसको protect करना है. So queen f5 only move, and I just chop the pawn. And this I think Gukesh will win. I think this has strong momentum for white. Pawn up, knight e3 incoming. Bishop bad hai, double pawns hai. I think white has great chances. 4 minutes, white. 3.5 minutes now. Gukesh could be very close to his first win today. Yeah. I think जीतेगा Guki this one. Yep. He has time on his side. By the way, c5 played. Best move by David Navara. Now knight g4 only move. I think it should be obvious to Gukesh. And But just respect, he's making the best moves by every time. huh. Also, David Navara has this funny way of like usually you drag the piece, like he takes the piece, like lifts it up and puts it there. It looks very cute, like how he places the moves. Like it's very nice. हाँ, मैं आप डिनर पे था, मैं बोल ही रहा था, like he is a very nice guy, like gentleman हाँ एकदम, हाँ. most like friendly GM वैसे बोलते हैं Yeah. उसको. Even when he shook hands with Mukesh at the start of the game, like he got up, like I say, half got Correct, up and हाँ, shook hands. So yeah, very nice to see a gentleman playing chess. Um, of course, राकेश भाई मैं तो gentleman है ही, हमारे चर्चे तो दुनिया भर में फैले हुए हैं. But glad to see some more of us, राकेश भाई, नहीं? exactly. Hopefully there And are more. yeah, and chat, do like the stream. Let's get to 500 likes because membership आपके पास आ रही है. And Gukesh Dommaraju potentially about to win his first game of Prague Masters if he finds knight g4 only move, puts pressure on the black, pieces one by one, uses this pin to his advantage. Should be very obvious to him that knight g4 is a Mhm. strong move. I think he has spotted it. And गुकेश के पास काफी comfortable 20 moves के लिए, नहीं 13 moves के लिए 20 minutes. Wow, Oh, and it's that's over. it. Uh, Continue, Rakesh bhai. Wow. Bhai, Arvind was our only hope in this tournament. He was just behind the leaders, but he has lost. Vincent Keymer gaining some very very useful points. But इसी के साथ chat, इंडिया का खराब प्राग मास्टर्स एंड challenges continues. And meanwhile, also Surya is no longer winning, so it's a dead draw now. Looks, Yeah. or let's say draw ke chances highest hai. So Mhm. Rakesh bhai, Divya draw, loss for Arvind. Surya very close to a draw. I think this will end very soon. So only Gukesh now can even the matters, yeah, with his win. Yeah, I think only Guki can win this. नवारा का तो जीतने का चांस ही नहीं है. Yeah. Okay, pressure building up. 19 minutes for Gukesh. I think 6 times the time. By the way, Jorden van Foreest is beating Yakubboev. So another victory for Jorden. भाई वो rating बढ़ाया ही जा रहा है. भाई 2750 के आसपास पहुंच जाएगा यॉर्डन इफ ही विंस टुडे. Yeah. भाई नेदरलैंड्स की टीम स्ट्रांग हो गई भाई. ट्रू ट्रू. So Gukesh still thinking. What is the result at Hans' board? Tough to say यार. Because उस बोर्ड पे जाने का मन नहीं है अभी.
Okay, still thinking. Rakesh bhai, क्या लग रहा है result? You think he wins? Yes, Gukesh wins this for sure. Chat, what do you think? Guki win, Guki draw? बताओ सिर्फ ये लिख दो चैट में, गुकी विन या गुकी ड्रॉ. I think आज बहुत जरूरी गेम है अब, because you will not get opportunities every single day to win. In fact, I would argue this is Gukesh's first real opportunity to win a game, Yeah. and you have to capitalize on it. You cannot miss these. Otherwise, World Championship, otherwise, Olympiad, otherwise, ऐसे events में you will struggle. You have to capitalize on every advantage you're given. And David Navara, of course, like could make a mistake. So let's have his camera back, Gukesh, that is, and see many if. people many अच्छा, people are okay. agreeing that Guki wins. थोड़े लोग लिख रहे draw. But Chad also, many people are suggesting pawn to d5. The problem is rook takes knight is happening. So you're losing the support of this knight after Yeah. d5. So that's the problem, Okay. Chad. Yeah, yeah, So you yeah. have to play knight g4 first, and then I think d5 is a great idea. Yeah, knight को पहले defend कर लो, and then you push this pawn, and आपको pass pawn मिल जाएगा, and that'll give you some chances to win. Gukesh, of course, is going deeper than that. वरना इतना तो उसने कब का देख लिया होगा. And he's trying to figure out कि how many winning chances do I have in that variation. I think pretty much that is the only way he can push. Come on, Gukesh. Maybe we can check in with Surya, क्योंकि सूर्या का कैम है, and let's see कि वो रुक d6 के बाद कैसा हुआ सूर्या के गेम में. Surya, yeah, let's go Surya. By the way, राकेश भाई, ट्विटर पर तो आग ही लगी हुई है भाई, चल क्या रहा है दुनिया में. वही तो भाई. हम यहाँ chill stream कर रहे हैं. By the way, King D7 played, and I think, yeah, I mean, Wait, it has to what? be a draw. क्या हुआ? किसी ने लिखा, नहीं, पाकिस्तान क्वालिफाइड. भाई मैं डरा कैसे? दिया, मैंने कहा यार, या तो कहीं कुछ बॉम्ब पड़ गया, या तो गुकेश ने ब्लेंडर कर दिया, दो ही चीज हो सकती है ना? ये कुछ कुछ क्रेजी हो, डरा दिया राकेश, वैसे मत करो यार, सेंसिटिव टाइम्स. नहीं, डोंट वरी. बट मेरा, अच्छा, क्वालिफाइड फॉर कराची एयरपोर्ट भाई. इसलिए कहते हैं आधा सच झूठ से भी बदतर होता है भाई. देखो By the way, भाई, Gukesh is आप 15 minutes now. अच्छे प्लेयर हो. Thanks. प्लेयर बोला है, चेस की बात नहीं करी तो हाँ, ये आधा सच वही. Meanwhile, Chad will have the Gukesh camera soon. Kuch tech issues, या but या दे आर knight वर्किंग ऑन g4 इट. is what we are waiting for. 15 मिनट से कम हो चुके हैं. So just 4 times the time now for Gukesh. या, अरे ऑफ कोर्स पाक नॉट क्वालिफाइड. पंकज जी, दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. बाय द वे, चैट, हैव यू noticed that ever has gangs of Divya eaten Nana Debris? नहीं, नहीं ना. नहीं, I think it's like banana सिर्फ showpiece या है, like वही only for वाला the. केला है क्या, रोज लेके आता है मतलब. हाँ, हो सकता है, हो सकता है. I think it's either for the fifth hour or it's like a superstition. It's not something they eat for the first 4 अरे hours at बट least. भाई चल ही नहीं रहा है तो काहे का सुपरस्टिशन ना मतलब. That's true. That's true. अरे साकेत भाई, क्वालिफाइड फॉर कराची एयरपोर्ट, नॉट फॉर सेमीफाइनल्स. Rookie one is always a good move. Please analyze. Yes, sure. दिखाओ टिकू भाई. Yeah. So rookie Not one, bad. yeah, makes I sense like it. because अगर आप ये मारते हो ना, then I think knight g4 Hmm. wins because आप खत्म. रुक जीत जाओगे. But I think black can, instead of taking, रुक just go डी. king h7, and हाँ, king this h7 is is the nice. problem. तो आपका जो knight g4 का threat था is no longer वो possible गया. because this comes with check. And yeah, unfortunately, you spoiled it. Gukesh, अगर ये खेलते हैं ना, I think this is likely going to be a draw, if not worse. Where was Rakesh bhai? Riddhi, I was facing some internet outage यहाँ पे. So that's all.
परसों नहीं, कल का स्ट्रीम अच्छा था। परसों का स्ट्रीम आप देखोगे तो ऐसे आवाज अटक अटक के आ रही थी, तो उस अभी समय तो मैं और टीकू इंटरनेट और भाई जाएगा मेरे। राकेश भाई। अच्छा, ओके। तो हाँ, वही तो, इसीलिए इट्स स्टिल नॉट येट बैक, बट आई होप इट्स बेटर देन डे बिफोर। हाँ हाँ हाँ। बट हाँ मीनवाइल टिकू भाई, मतलब इंटरनेट है तो इसी से खुशी है बस। हाँ, chat by the way. हाँ, लेट्स गो किश कैमरा, वी हैव ओ अमेजिंग बढ़िया। वर्ल्ड बैक। चैंपियन को। उसका ऑरा देखने में अलग ही मजा आता है भाई, व्हेन ही इज विनिंग। ही इज विनिंग आज राइट ग्रोकली नाउ सो। वर्जन 2.0 है। थैंक यू संचित, आई होप इट्स फन। हे, अरे ये कौन है? रूपा दर, व्हाट द हेल, व्हाई डू यू वांट गुकी टू ब्लंडर? वो था ना एक कैसे, एक कर सकते से हे ग्रॉक डू दिस, ऐसी हे ग्रॉकी। हाँ, हे ग्रोकी, डांटो इनको या कुछ हाँ, बताओ ऐसे। hey Grocky, tell me how many times has Dukesh lost to Sindarov in the last 5 years? It can work. भाई नाइस है भाई, यू ऐसा शुड लाइक कीप एक्चुअली, योर हाँ यूजर नेम हाँ, एज ग्रॉकी हर जगह। नाइस आइडिया। थैंक यू संचित। कमेंट्री मजा आ रही है तो चैट लाइक बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज 1 मिलियन का परिवार बनने वाला है बहुत ही जल्द चेस कमेंटिया। या एंड 1 मिलियन पे राकेश भाई तुलसी वाली वाला डांस कॉपी करेंगे। बिल्कुल भाई, सब्सक्राइब तो कर दो, करेंगे। साज भाई को बोलते हैं साउथ अफ्रीका से करने को। भाई सहज भाई साउथ अफ्रीका में, होपफुली ही विल बी बैक। Show Surya game, chat, of course. We can show Surya's game, but I think not much is happening here. Queens have been traded off. And कोई end game होगी. I think B5 takes. And this is likely going to be a draw with the time they have and the level of the players. I think result ke chances very, very low. So let's stick to Gukesh for now. Because critical moment for the world champion. He's been thinking for a long time. 10 and a half, 11 minutes almost. जितना अपना आधा टाइम यूज कर लिया भाई मुकेश ने इस मूव के ऊपर ऑलरेडी। Come on, Guki. Knight G4. कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास भाई एक्सप्लेन करने के लिए इस टेंशन को। बस कुछ भी और खेला तो सडनली हम लोग रोना चालू कर देंगे, भाई आंसू। ही इज डाउन टू 10 मिनट्स। बिल्कुल राकेश भाई, आंसू आंखों के टिप पे आ चुके हैं। Knight G4 needed to turn them into happy tears. Come on. This is a draw कह रहे हैं यश भाई। बाय द वे 260 येलो है इनकी। Knight G4 के बाद chat basically the idea is he's about to play Queen F5, Knight E3, Queen E4 and D5. Essentially pass pawn लेना है आपको, and long term that should give you some chances at least. Everything else will lead to the exchanges of these pawns and then there's nothing left. या G4, कम ऑन गुकी खेलो यार। इट्स अ लॉन्ग टाइम ना भाई, 12 मिनट सोच रहा है गुकी। एंड राठौड़ भाई पूछ रहे हैं व्हाट इज हिज सेकंड बेस्ट मूव टिको, कैन यू टेल चैट? Second best is Rook A6 actually, but that's like a piece exchange. Yeah, after C takes D4, you are playing Rook takes B6 and Bishop F7, essentially exchanging pieces. So that's a draw. So there is no hope left in any other move actually, because ये exchange हो जाएगा एक बार. I mean, it's just, and black has other ways of solving this spin. Yeah, Bishop F7 is very logical at the right सो moment. fair to say knight G4 only move for Gukesh to keep them. Played! Let's go भाई, beautiful move Knight G4. भाई इकलौती सुंदर, चाल थी भाई। अति सुंदर। या
एंड कितना जल्दी भाई वो मतलब उधर ही खड़े थे वहां पे डेविड नवारा. भाई इमीडिएटली प्लेयर. या एज एन ऑनररी इंजन मास्टर. अरे नाइस, आई लाइक दैट टाइटल, इंजन मास्टर. ईएम. ईएम टाइटल मिलना चाहिए राकेश. आई थिंक सारे सेकंड्स को ईएम टाइटल मिलना चाहिए. एंड सारे टिक्कूस को भी. बाय द वे क्वीन इंजन ऑफ प्लेड. मास्टर्स. नाउ 90, 93 is the move. You can directly play this. Also possible. But I think regardless ये दोनों moves आनी ही है. डू यू थिंक डिंग की जगह फाबी होता तो गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन पाता? बट भाई, मनु भाई, फाबी खुद वर्ल्ड चैंपियन नहीं है. सो आई डोंट नो हाउ वी कैन अरेंज दैट. Let's just say बट इफ पता लग फाबी जाएगा भाई. विंस, हाँ, हाँ कैनेडियन पता लग जीत जाएगा. गया तो we'll see Yes. in December. ये साल है उसके पास. क्या उनको सेंस हो पा रहा है कि एडवांटेज है? ऑफ कोर्स आई थिंक. आई Yes, डोंट नो इफ ही yes. सेंसेस इफ ही एडवांटेज, ही सेंसेस की भाई कुछ तो है, कॉम्प्लिकेशंस है पोजीशन में. हाँ, करेक्ट. और ही इज द ओनली वन प्रेसिंग, ये भी गुकी का आइडिया है. एंड या प्लस भाई नवारा का टाइम भाई, और इवन नाउ गुकी का टाइम, ही इज अंडर 7.5 minutes. 12 मूव खेलने अग्रीड. हैं और दोनों प्लेयर्स को. Bhai, that's a lot of time. And played. Let's go. 93 on the board. Best move again. Queen भाई e4 played in a अपोनेंट को second. ब्लिट्स, एग्जैक्टली, इज ब्लिट्सिंग इट आउट. एंड चैट, नाउ योर आइडिया व्हिच यू ऑल वर सजेस्टिंग इज pawn to d5, hitting the rook and creating, this discovered check with pawn to d6 as well. Wow. What crazy stuff happening, bhai. दुनिया में या बोर्ड पे? भाई मैं दुनिया का भी पढ़ रहा हूँ एक्चुअली, बिकॉज दुनिया हाँ, भर की सच्ची. सारे लीडर्स आर लाइक डर लग रहा है भाई. मतलब आई थिंक एक तरीका है कि मे बी कुछ करना ही है तो चेस बोर्ड पे आके करिए. मतलब प्ले प्ले अ गेम ऑफ चेस टू सी हु इज सुपीरियर, मे बी, फॉर एग्जांपल. भाई साहब कुछ तो क्रेजी होने वाला है भाई. यार मुझे डर लग रहा है भाई. माय ट्विटर इज जस्ट फ्लडेड. लिटरली हैशटैग कुछ भाई डैश मेरा तो डैश. व्हाट्सएप, नॉट ट्विटर. तो इसीलिए बीच बीच में अगर शांत हो भाई रहा हो तो भाई समझ जाओ. व्हाट्सएप कैसे फंस रहा है? एग्जैक्टली हुआ क्या? फर्स्ट नहीं ना, मतलब इट्स फ्लडेड विद कमेंट, मतलब अच्छा अच्छा. वीडियोस की. और क्या लाइव अपडेट्स दे रही है दीदी. कौन दे रहा है? मेरी बहन रहती है दुबई में, कहाँ तो पे? दुबई में भाई. कहाँ पे, मतलब अच्छा एड्रेस ओ, बोल सकते अच्छा ओ ओ डैम. डैम अच्छा. ओ भाई दुबई इज अ शॉकर, नो लाइक दैट नोबडी एक्सपेक्टेड, बट एनीवेज. डैम. Yeah, that's a big shock. I thought Dubai was like the safest city in the world, but भाई सही में भाई वो दुबई ओपन का मैं आज ही डेट सर्च कर रहा था. हाँ, अभी से, अब इसके बाद तो नहीं भाई. आई थिंक चैट आई एम मूविंग टू न्यूजीलैंड. सबसे दूर जितना जा सकते Yes, हैं. Michael, I like that. D5 threaten the pinned rook. यस. Yes, London system he will play. Pothavers, nope, I don't agree. And please be respectful of the players. Thank you. And chat simple है. D5 खेला, rook D6 of course, you want to stop the pawn. And now you want to combine this pass pawn versus attack on the king versus attack on B7, and you can use all these three advantages to create pressure. Yeah. जोक था क्या राकेश भाई? नहीं नहीं नहीं. अच्छा. Do you know After Samay donated his box champions money? Yes, yes. We know भाई, oh हमने nice, प्राइस भेजा था, so. oh nice. न्यूजीलैंड से तो उनकी फॉर्म क्या चल रहा है भाई? Yes, joy life, exactly. 11 moves in 5 minutes. Coming Coming back back to to the the chess. chess. हाँ Akshay ji and anyone in chat is asking move number. Samay bhai has made a very nice widget. तो ग्रीन कलर में टॉप ऑफ द स्क्रीन देख सकते हो, टाइमर भी है और मूव नंबर भी है. सो यू कैन सी D5 30th मूव लिखा है. भाई नवारा इज जस्ट ब्लिट्सिंग आउट यार. yeah, I think it's a good strategy because they're literally only moves. He's seen them
and he's building up psychological pressure. जब अपन बहुत तेज खेलता है ना, you sometimes feel a bit anxious. And Hey, I'm feeling anxious because Gukesh is under David's time. What? भाई, this is not ideal. And he needs, अबे हाँ, इतना, भाई 6 गुना टाइम था यार. exactly. भाई ये क्या हो गया? उल्टा हो गया भाई. आई होप अभी मतलब गुकी कुछ मिस्टेक ना कर दे टाइम प्रेशर में. Yeah, he needed that time. इतना नहीं. Okay, he found all the best moves, so it kind of worked, but he took too much time. हाँ, that's a good thing. That's a good thing. Rook b7 now. Rook, okay, hitting the pawn, and I So queen don't c3. really see a good way for black to defend it. Can black push it? Oh नहीं, फिर एक pawn मर जाएगा. Queen c3 के बाद g7 hanging, c5 Yes. hanging. Yes, हाँ, great point, Rakesh. भाई दोनों pawn बचाना impossible. So after भाई rook rook b7, b7 bishop के बाद. a4 खेलना पड़ेगा What? apparently. Oh, I completely missed that. Wait a minute. Yeah, and Rook, now queen rook, c3. अपनी mate निकालो. rook d7. And this is rook d7, and of course this game is still very complicated. Second option is queen c3 directly, ताकि आप इसको preempt कर लो. But I mean, he's taking too much time. He has 3.5 Yes, minutes. I was looking at the clock. He's nervous. You can see his body language tense a bit. बिल्कुल. He's shuffling in his chair. And David Navara कितने आराम से कंपोज बैठे हैं कॉफी पी के. भाई डेविड नवारा इज हाफ स्माइलिंग. आई थिंक ही सेंसेस कि यहाँ पे कुछ उल्टी पार्टी भी बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है राकेश भाई. एंड Gukesh, his hands a bit nervous, moving them around, fidgeting a bit, pulls up slightly on the edge of the chair. डर लग रहा है. 6x से बिल्कुल हाफ बिल्कुल. एक्स राकेश भाई. वही तो यार. Yes, Dinesh, time increment होगा 30 minutes, but at the end after 40 moves, मतलब 40 moves के बाद ही होगा. But फिलहाल they only get 30 seconds additional time. तो गुकी भाई under 3 minutes now, टिकू. What is he thinking? Tension. Queen c3 directly खेलना चाहते हैं शायद. Basically, I think That's he's my seen everything. prediction. He's not able to find a clear path to victory here, and हाँ, there's not one that correct. exists. उनको बस pressure बना के रखना है. What is the move here? Big man, I think Guki has to play rook b7. Yeah, That's the best move. trying to grab this pawn, combine it with queen c3, combine it with potential pushing this pawn. I All don't know, ideas have to Ratan be bhai. combined. Yes, I agree to go. Ideas have to be common, but I don't know, Ratan. Why is he thinking so much? He's. Oh, wait, did he play? Oh, he played rook b7. Best move played. Nice. Let's He go. Come played on, the chat. best move, but he took 3.5 minutes, Rakesh bhai, for that move. Still 9 moves to play. Okay, finally David thinking. नहीं तो हर बार ऐसे मुंह पे मुंह दे रहे थे. Okay, let's hope David Navara thinks for a while, because you want him to also feel the time pressure. Because kai baar na, even though you are low on time, if your opponent is lower, you feel very confident about your game. Mhm. Important moment. Gukesh, the world champion, losing yesterday. The greatest players always come back. Rakesh bhai, Magnus has said this. When I lose a game, next game, no one can stop me. I want to win instantly. Can Gukesh do the same? Yes, I think so. I hope so. Two minutes for Guki, indeed. By the way, chat, Van Foreest is winning. David Anton is beating Nodirbek. So आज बहुत crazy upsets. Oh, Hans is beating Parham Maghsoodloo. Wow. Wow. IIT was asking very fair question. How the heck are they able to maintain 99% accuracy? Like, why Gukesh? That's why it's taking that much time, I think. Yeah. It's insane. Of course, 3 good moves there. Of course, a lot of those moves were just theory. Gukesh had prepared very well. That's why he had that edge on the clock. But he's continued very well as well. I think no mistakes so far. If he can keep playing like this, he will have good chances. By the way, Surya is unfortunately slightly worse now. I don't know how that happened, but it's happening. Like it always does, Rakesh bhai. सच्ची यार. Wait, what just अब happened? तो आदत सी draw. Ah, Draw. they agreed to a draw. He didn't. That's why the अच्छा. king was on e5. Oh,
So Surya agrees to a draw. Fair result, Rakesh Bhai. So only one game remains, and that is the world champion. Divya draw. Aravindh loses. Surya draw. Can Gukesh equalize the score 50% by winning this chat? Bishop for Queensly played very quickly by this time, Gukesh. Mate in one. Big threat. By the way, Rook F6 would be a big mistake after Rook A1. So क्यों Rook F6, Rook A1 is apparently close to winning because दूसरा रुक भी ऊपर आ रहा है अब, I think. And this is gone. So you need to play Rook D7. Any rook would work. And chat, look at this. The main advantage is, look at the knight on E3, dark square pair. Look at the bishop on A4, light square. It can never attack this knight. 100 जन्म बीत जाएंगे, ये bishop knight को attack नहीं कर सकता. So Gukesh could have a lot of free moves, yeah, moves which can waste time and kind of gain some time on the clock. So he should be okay. Rook trade at Tiku. Yeah. And now it's just about entering with the queen. By the way, black again काफी safe है भाई, turn पे है ना, इतना आसान नहीं है पहुंचना. काफी safe है. भाई, I feel David has survived the worst. मतलब इसके बाद ना draw करना आसानी होना चाहिए, I feel. Agreed. I think the D pawn is the main asset. And the problem is, क्या हुआ? Yeah, go on. नहीं, अभी कुछ और हो गया भाई. नहीं, the point is, I can't push this pawn because my rook is hanging. So I have to waste a move with this and gives black to a chance to stop this pawn again. Wait, bishop d7 is a mistake, I think. I think it's a mistake. Slight mistake. Knight c4. Slightly better. Pressure बन सकता है. Yeah, मैंने बोला ओ भाई क्योंकि चेस फैन ने इंटरेस्टिंग न्यूज दिया है कि टुमारो इट्स एक्चुअली सूर्या वर्सेस दिव्या. तो या तो एक रिजल्ट कोई इंडियन जीतेगा या फिर द सेकंड वाला थियरी अपना प्रूव हो जाएगा. हाँ, quick draw, yeah. Quick draw, I think so. Yeah, because they would not love to, show some prep, definitely. या तो जानबूझ के ऐसा गेम खेलेंगे जिसमें ना दिव्या के अपोनेंट प्रिपेयर करना लग जाएंगे वो लाइन. हाँ, मेरे को याद है एक भाई बहन थे मेरे स्टेट में. They once showed up like at some state tournament and एक गेम खेले जा रहे हैं मतलब सोच के पूरा सोच के by the way, ठीक है. And it was like some Vishy Kramnik game which they just replayed. I was like, क्या चल रहा है भाई ये? I don't know if that was even allowed, but they did it. But okay, not gonna name them. By the way, come on, let's go. Knight c4. Knight c4 has to be played यार. Can't play queen c4. Queen चाहिए हमको ना प्रेशर बना के रखने के लिए. Yes, Danish, I agree. It's a two result game. Guki can't lose this. Okay, sacrifice नहीं exchange किया है रुक दिनेश भाई. It was rook for rook. Yeah, rook से rook मारा. Dev, no, come on. Prague and his sister not Prague, do this. Not Prague. And he's Haryana from state. Faridabad. Not Faridabad, but yeah, Haryana. Come on. Playing this for an hour, it's a draw. Not at all, chat. Game is on. Queen b3. Apparently, that's very interesting. No, it's not. I think it's not the best move. But now black has to find b5, only move, and then d6 check. At least you get a chance to push the pawn. So now b5, d6 check, c4, and somehow I get some dark squares maybe, Rakesh Bhai now. I like this personally. b5 played. Oh wow. भाई गुकेश के पास कैसा कम टाइम है. दोनों ने नजरें मारी स्कोर शीट और टाइम पे. They know 5 more moves to play. Queen a3 क्या चाल है टिको भाई. Now he has to find Queen e5 best move or c4. Only 2 moves possible. Okay, not that difficult. I mean, what if I go b4 though? b4 के बाद I think Queen a5 must be winning. Yeah, I'm guessing. Rook or pawn attacked. Correct. Yeah, Queen f7 is also winning apparently. Let's see how David defends this. Navara के पास 2 minutes. Yeah, and Navara has to play 6 more moves. And chat, this feels like a typical Magnus grind. This is the kind of position you expect a Magnus Carlsen to win every single time. He will attack you from here, 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 attack you, and suddenly yahan pe checkmate. So it's like
This is what Gukesh needs to show. Yeah, can he pull off a win like this? जहाँ पे it's not winning, but you have some tingling. ऐसे गुदगुदे कर रहे हो opponent को भी आप. भाई आज के दिन पे ऐसे आप अटैक बहुत कैजुअली बोल रहे हो. भाई हम भी अटैक कैजुअली बोल सकते हैं भाई. बाकी सब लोग बोल रहे हैं लेकिन. ट्रू. Keep in mind, he can be someday, bhai. That's the hope. Meanwhile, Navara is thinking, he has a choice, right? That's why he's thinking, okay, he plays c4. Now queen d6, maybe. Gukesh can win this. I agree, Michael. He has a great chance. And Chad also, like queen and knight are a great attacking combination. So if the knight gets in somehow, this can be deadly. Black, on the other hand, has a... क्या हुआ? नहीं, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ. अच्छा. Black also has like his own pass pawn coming. मैं डर गया राकेश भाई, आप डरा देते हो. नहीं भाई, डर तो मैं थोड़ी डरा रहा हूँ आपको. भाई साहब, सारे देश भाई, सारे देश. Oh, let me check. Chat, let me check. टिकू. हाँ. हांस ने ना 2 ब्रिलियंट मूव किए. Can we just quickly go like 30-second look? Yeah, very quickly. हांस का Niemann. कैमरा लाइक भाई 30 सेकंड मूव पे जाओ और हाँ. उसके बाद देखो भाई, एक्शन देखो आप. हांस has played some crazy chess. नहीं, Wow. उसके भी पहले एक दो मूव पहले. हाँ, जब दिखाया आपने पूरा. सॉरी. Oh. वन ब्रिलियंसी. भाई, he is playing an incredible chess. Very Wow. extremely strong moves by Hans. भाई धो And डाला I भाई, think लिटरली. वो जीत जाएगा परम से. वाओ. एंड अगर देख ही रहे तो ये भी देख लो भाई. क्वीन अगेंस्ट रुक एंड नाइट. एंड हैं? वैन फॉरेस्ट जीतने वाला है. भाई वैन फॉरेस्ट तो 2750 हो जाएगा भाई. एंड बाप रे. परम हार रहा है, मतलब भाई नॉट अ गुड डे फॉर ईरान ओवरऑल. या लेट्स गो. भाई क्या है यार. शिट. क्या रे राकेश भाई, फंसाओगे एक दिन अरे मैं क्या आएगा भाई, जब उधर कैंसिल हो क्या जाओगे. चल रहा है? मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा चीज बोला है. बट एनीवे, लेट्स कम बैक टू गुकीज गेम. हाँ. Do you think Van Meanwhile, Foreest is peak? Not at all, bhai. I think he can go much higher. by the way, instead of queen d6, Gukesh opted for d6. So he's like, भाई पास पॉन पुश करते हैं, बाकी सब चलता रहेगा. Important moment. By the way, Jordan, after his win today, Mm-hmm. is gonna be world number 15 after Prague. Wow. Bhai, I think उसका peak rating and rank है ये. Yeah, and if he wins tomorrow, he'll be world number 10, bhai, crossing all the Indians in one win. सारे सब साथ में. Navara plays king to h7, gets the king out of the way. Guki and Navara both have 1 minute for the next 4 moves. Yeah, tricky 4 moves, chat. If they both get 30 minutes, I think Navara maybe benefits from it because the chances of a mistake go down. And right now, maybe it's more likely for Black to make a mistake because White doesn't have any weaknesses. Black doesn't have a pass pawn right now, well blockaded. Also, there's no mating threat because the knight defends. So, Gukesh needs to get an advantage right now in the next 4 moves with 40 seconds on the clock. Extremely crucial. Come on. And queen s7. Queen c7 is likely the plan. What will David Navara do now? भाई आ गया, अभ्युदय आ गया, मतलब होपफुली कुछ होगा. Yeah, queen c6 played. Wait, that's moving away from the king.
That's moving a bit away from the king. But okay, the queen is also away. So maybe queen d4. Trying to reroute my pieces a bit. Mm-hmm. Tough position for Gukesh to push. Queen c7 टिकू क्योंकि आप मार नहीं सकते हो. But took c8 apparently. I want to keep the queens actually. Yeah, I think queen centralizing the queen makes sense. Queen d4. Apparently, best move is knight c2, which is interesting. Oh, that's tough. I Bhai, thought knight 20 could seconds for Guki. No Knight chance knight moving c2. backwards are difficult to see. Bhai, chalo bhai, 15 seconds. Gukesh. He's not playing. Come on, Gukesh. 15 seconds. 10, 12 seconds. 10. Bro, Guki. look at the clock. He 6. has a look. 5. Wait, that's... Played. Bhai, c3 aa raha hai kya? That's a Bhai, big mistake. miss. Pressure, bhai, pressure. Bhai, he played on 5 seconds. Now the problem is black also gets a pass pawn. You take, and now b4 is running. That clocks are updated. Gukesh has 5 seconds, Cindy. Chat, let's get to 500 likes. Let's get more people in. 500 membership bhi denge. Let's get more people for the final moments. Not final potentially, but time pressure phase ke final moments. A mistake could be around the corner for either player. Slight error from Gukesh. Here, rook d4. Okay, the idea is logical. You can activate the rook, will attack the king a bit. But it has drawbacks because now black can start pushing his pass pawns. And what about rook a8, by the way? Wait, rook a8? Queen c7. Bhai, now Navara has 10 seconds. Bhai, it's a forced draw. Rook a8, queen c7, rook c8 is a repetition. You can't avoid it. c3 played, c3 played. With Okay. 5 seconds. Guki again under the 30 seconds now. Okay, he Maybe has to take Navara now. playing for the win. Tiku. वैसा भी हो सकता है. Oof, this is tough. This is tough. भाई फिर से 15 सेकंड. Takes. Bhai, you have to come back now. It's kind of like accepting defeat, ना मतलब, in your plan. भाई खेलना पड़ेगा नहीं तो queen e1 check is a big threat for David. Yeah, a big one. Gukesh has 19 more seconds now. We just saw Zhu Jiner walk by. She has lost yet again today. So 1 out of 4 for Zhu Jiner. Bhai, 10 8 seconds. One more move, Gukesh. Rook d1, he finds. Beautiful Finally. move by under time pressure. Nice. But David, okay, let's stay with this. Navara has 50 seconds to find his last move before both players get 30 minutes more. Rakesh bhai, if he pushes the pawn, which looks like the logical move to me, apparently queen c7 is slight edge again. So that's what I'm hoping for. Like this move, because it looks very logical. Come on, final move for David Navara. एक हल्की सी गलती कर दो भाई. Oh no, queen He's c6 still played. at the board, bhai. Played. Yeah, we've reached the time control chat and 40 move और 4 घंटों के बाद Guki having a 0.10 advantage. टिकू भाई 0.04 दिखा रहा है मुझे. अच्छा, बाद 40 मूव हो गया ना. Chat, don't worry, Gukesh का flag fall नहीं है. He just gets 30 minutes more. Saivik, tell me your thoughts on this. I think we should not compare Guki and Magnus because players have gotten much better now. Which players? I mean, if you want to be in the top 10, I think fair. If you want to become the world number 1 someday, which I think Guki obviously has a dream of, then I think, of course, like at some point the comparison is going to happen. In fact, when he defeated Magnus in Norway chess, Garry Kasparov himself compared him. So I think that comparison will happen if you start doing well. And the fact your comparison ho raha hai means you're doing well already. It's a, if nobody's comparing you to Magnus, then probably you're not doing that well. तो वही चीज है.
Yeah, And also एक वो underdog की feeling होती है ना राकेश भाई. Everybody wants to see somebody challenge Magnus, somebody to reach his level potentially. Everybody wants that. correct. ठीक है, what? Gukesh needs confidence. भाई वो जीत के ही मिलेगा. You know, हाँ, there's this statement that Alex Hormozy makes ki, you cannot visualize or manifest confidence. I think you need evidence to back uh, correct. your beliefs. Yeah, कि मतलब I've done this before, so I think I can do it again. So yeah, I kind of agree with that. You get a couple of wins under your belt, suddenly you're confident, even if you don't want to be. Just look at Jordan van Foreest को भाई. मतलब हाँ, बंदा क्या खेल रहा है ये साल. इस टिक्कू ब्रदर कार्लसन कंपैरिजन तो हो रहा है, बट कंपैरिजन कौन कर रहा है फर्क पड़ता है. जब गुकेश का हो रहा था तब kasparov कर रहे थे, और जब अब तुम कर रहे हो 250 ये लोग कर रहा है, तो बहुत डिफरेंस है भाई. Meanwhile, that extra time will be utilized. For example, the engine is screaming knight d5, but if queen d6, it's saying queen b6, which is rather weird because, yeah, feels like a draw to me. Apparently, you have to find queen f8 or bishop h3. But yeah, it's a one trick thing. No, if I find it, then it's a draw. भाई ये क्या चल रहा, क्या वेरिएशन है राकेश भाई ये, व्हाट इज दिस. ओके, ये चेस तो मुझे नहीं आती, नॉर्मल चेस देखते हैं. व्हाट वुड भाई यू प्ले अब राकेश भाई करने हियर. की जरूरत नहीं है ना. हाँ, तो व्हाट वुड यू प्ले हियर एक्चुअली. वी क्वीन d4. I like centralizing the queen, but if you ask me, Tikku bhai, what is White's winning plan? I don't have an answer for you. I agree. I think maybe what I would do is like just stop this pawn physically by putting the queen here, but then you might have, you don't have queen c4. So then maybe queen d4, queen b4. Play If rook it, b8, huh? then queen b4. Okay, Gukesh agrees with us for the first step. But मतलब you of know, course chat. हल्का सा प्रेशर बना सकते हो, but ऐसा कुछ हाँ. क्लियर कट नहीं दिख रहा है टिक्कू. Yeah, and I think the only way would be to take some risks. So, for example, if I am black, I'm thinking, how can I push this pawn? I can't play queen c4. So I'm going to play rook b8, Rakesh. I'm going to push this pawn. Now, how do you play as white? Queen b4 से block Yeah, दिया. queen b4 and now rook a8 with the idea of, rook a4. Yeah, fair. Black is like black ही pieces active हो रहे हैं भाई. Yeah, देखते अगर देखते. knight यहाँ पे आ सकता ना, like if I could play two knight moves in a row without it getting captured, like I would be very happy. Yeah. But it doesn't feel like apparently queen f4 is the best. Rook a4, queen f7, and now just rook a7, and you just hold on, and there's no way to progress. ये pawn जा रहा है. Looks tough, yeah. The knight on e3 is a silent hero बोल रहे Melody, but I feel sure, but it can be a action hero if he reaches the हाँ. e5 square like Tico is mentioning. It's a romantic hero. It's doing well at home, but हाँ. ये थोड़ा action hero होते हैं अक्षय कुमार की तरह. Well said, Rakesh bhai. Meanwhile, this looks like a close to draw position. Rakesh bhai, अगर draw हो गया तो then that's maybe a tad disappointing. I think Gukesh had a couple of moments Mm-hmm. and couldn't really push it that level. And मेरे हिसाब से honestly, I feel like Gukesh needs something, like something to go his way. Like what would change this trajectory, right? कुछ तो होना चाहिए. क्या कर सकते हैं वो? पता नहीं यार, मतलब I'm not sure. Hmm. But overall, like this game will give him थोड़ा सा तो confidence क्योंकि he was never worse and always pushing, which hasn't been the case so far, मतलब in this tournament. Yeah, 1.5 out of 4 for Gukesh. Not a great score at an event Not where at all. he's expected to dominate. By the time tomorrow is round 5 and परसों rest day है.
And tomorrow, Gukesh plays Nodirbek with the black pieces. Wow. भाई ये दुख काहे खत्म नहीं होता यार, रोज ऐसा लगता है एक बार तो बोलना ही पड़ता है ये। देखो भाई छींक आ गई बस भाई नोटबैक का नाम लेते ही। इज दैट अ गुड साइन? I don't know, or maybe a bad sign, but कौन से स्टैंडिंग्स का बात कर रहे थे आप समय में? नहीं, if you can कैन वी you हैव अ लुक? show it, मतलब चैट को भी, तो चैट भाई समय में बोल यार रहे नहीं थे। यार, ये यार नहीं 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 उस समय भाई नहीं नहीं बोल रहे नहीं। हैं लेफ्ट साइड में कोई भी इंडियन नहीं है, सेकेंड हाफ में ही फिनिश कर रहे हैं हमारे बच्चे। चैट, मुकेश के ड्रॉ के बाद ही विल स्टिल बी ऑन 7 और 8। सो कौन कौन हमें टाटा स्टील में फॉलो कर रहे थे चैट? हु वाज फॉलोइंग टाटा स्टील विद अस? यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हमारा सपना था लेफ्ट। क्या हुआ? अच्छा अच्छा। चैट, यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक लेफ्ट साइड में देखने के लिए प्ले को तरस गए थे। एंड दिस इज जस्ट कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर या। ओके, गोइंग बैक। राकेश भाई ये क्या चल रहा है? ट्रॉमा खत्म नहीं हो रहा है यार। ऊपर से आपने बोल दिया कल नोडिरबेक के साथ है भाई, ये फिर तो, और गुकेश का हमेशा फंसता है गेम और ब्लैक नोडिरबेक है के भाई साथ। नोजरबेक के साथ। सो या ही इज गोना बी कमिंग विद ऑल गन्स ब्लेजिंग। यस, बताओ। पंचुअल भाई वाज फॉलोइंग टाटा स्टील, सो यू नो द पेन। आपने एंड सहन किया है हमारे साथ 7 राउंड घंटे। 6 पता क्या है? गुकेश इज अरविंद। यस, तो उसमें एक तो इंडियन जीतेगा तो एक का मतलब। हारना भी तो कंफर्म है ना भाई। अच्छा, पॉजिटिव साइड देखो ना भाई, अरे भाई। ड्रॉ करेंगे तो दोनों ही नीचे रहेंगे भाई, देयर इज नो गुड सिनेरियो मतलब उसमें। वाह भाई, क्या ही बोलूं मैं। लेट्स गो फुल स्क्रीन भाई अपने आंसू छुपाने के लिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई हो नहीं रहा है कुछ। या विदुषी बोल रहे हो नोडिरबेक प्लस ब्लैक इज डेडलीस्ट कॉम्बो, आई नो, या वेरी टफ। अभी कुछ एक मैंने डेवलपमेंट देखी। एक एक बंदे ने कुछ, किसी किसी कंट्री ने कुछ डाला होगा ये अपडेट वट एवर, इंग्लिश में ही है। एक बंदा नीचे कह रहा है ग्रॉक ट्रांसलेट दिस टू इंग्लिश। भाई भाई नसीब ग्रॉकी भाई को नहीं पता है। Firearms since Olympiad and World Chess Championship, Indians have been struggling. I would say since Divya's win, I think, because we did well at Tata Steel 2025, jab Gukesh and Prague had that final. We also had good results for Prague at least. Prague was dominating the first half of 2025, once couple of GCT events and so on. So I think uske baad, wo Grand Swiss, I would say, was the first event जहां से वो डाउनहिल स्लोप चालू हुआ एंड अब वो रुक नहीं रहा है। यस, राकेश टिक्कू भाई बना लो यार जो कॉम्बिनेशन बनाना है। एट दिस किसका पॉइंट तो भाई कुछ कॉम्बिनेशन? फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, क्या चल रहा है यार। सागर शाह विल ब्रिंग लक भाई, सागर वाज स्ट्रीमिंग ऑल इवेंट्स तो तभी बैड लक ही चल रहा है। बट टिको भाई क्या लगता है, ओलंपियाड जीतेंगे इंडिया मतलब, आई थिंक लुकिंग ओलंपियाड में एट अच्छे द चांसेस फॉर्म? हैं। या आई थिंक वी स्टिल हैव गुड चांसेस देयर प्योरली बिकॉज की वो टीम स्पिरिट आई स्टिल बैक। आई वुडंट से कि गोल्ड कंफर्म्ड है बट मेडल आई थिंक वुड बी वेरी वेरी लाइकली। आई थिंक इट विल टेक सम insane level of disappointment to butcher the Olympiad medal. But of course, gold ke liye we will have to play very well. It's not going to be easy. China will have a strong team. US will have a strong team. Who knows? Russia na पहुंच जाए किसी एंगल से. And रशिया Uzbekistan अब will have a नहीं, strong. रशिया इज बैक। हाँ by the way, सगे कराके ने डाला कि we are back. And if he's world number 10 tomorrow, March 1st को, we are not going to have any Indians in world top 10, Rakesh bhai. Yeah, and chat, I don't know if you saw Karyakin's tweet, but even I want to ask Tiku bhai, do you know why Karyakin is back in the top 10? I don't know. So Sergei Karyakin had a rating of 2748 and he was हाँ inactive since the Ukraine-Russia war. हाँ But like couple of days ago, he played like a 11-year-old kid जिसकी rating 1560 है.
He beat him 2 times, और उसके बाद he is 2750. This is crazy. What Karyakin has done. Wow. And it was like an exhibition match. ऐसा official match वगैरह नहीं था. So तो very फेडरेटेड था weird. मतलब. हाँ हाँ, फेडरेटेड. इसके लिए तो कार्याकिन एक्टिव हो गया इनएक्टिव स्टेटस से. वाह. और तो दो मैं भी रैंकिंग पॉइंट भी बढ़ाए भाई ने ऐसे. वाह, मुझे पता है, अपना याद आ रहा है राकेश भाई, क्या क्रेजी स्टोरी है. बिकॉज व्हेन वी डिड, जब याद है व्हेन आई प्लेड मैग्नस एंड लेवी डिड द गेस द येलो फॉर दैट मैच ऑन हिज ओन वीडियो, तो जब उसको हाँ पता हाँ. लगा मेरी रेटिंग 2186 है, ही इज लाइक नो वे. मतलब इसका क्या मतलब है भाई, व्हाई कांट आई विल 2186, लाइक नो वे. फिर रेटिंग देखता है मेरी फील्डे पे जाके इन हिज वीडियो, एंड देन ही सेज ओके इनएक्टिव है, दैट मेक्स सेंस. आई एम लाइक गजब बेइज्जती है भाई. हो सकता है मैं मैग्नस गेस्टेड एट 2000 राइट, तो बट या Yeah, मैं भी सोच रहा हूँ भाई कल जाके किसी बच्चे को हरा के जाता हूँ, एक्टिव हो जाता हूँ भाई, मुझे भी ये लग रहा है. I think so. Yeah, Nihal played very well in Grand Swiss. You're right. You're right. Clippy made. I don't think it's Mickey Mouse games. Mickey Mouse games or tournaments are at least Hikaru was playing a tournament. ये तो exhibition match था. या लोल नहीं भाई, बेइज्जती भाई, बेइज्जती, गजब बेइज्जती. अब लेवी से रेटिंग ज्यादा करके छोड़ूंगा भाई मैं, देख लेना. तो उससे तो आगे निकलना है भाई किसी भी हालत में. मतलब चेस क्योंकि की वो रेटिंग तो क्रॉस नहीं कर पाओगे आप, मतलब लेवी. चेस की कर सकता हूँ भाई, सब्सक्राइबर का मुश्किल लग रहा है 7 मिलियन. लेवी की कितनी है रेटिंग वैसे? क्या नाम है उसका, एरिक 2350. नहीं शिट यार, नाम क्या है भाई उसका? लेवी लेवी रोजमन, यस. लेवी रॉस. हिज रेटिंग इज राइट नाउ. अरे रिद्धि, there was no criticism. I was just sharing the news about Karyakin. I mean, I never said anything what he did was good or bad. चलो क्रैकिंग का ऑल्ट अकाउंट ही पता लग गया. हमारे अर्जुन भाई, तुम मिलो. भाई भाई भाई. भाई ये मैं भी क्या क्या है यार. उम्मीद कर रहा था राकेश भाई की फील्डिंग की वेबसाइट चल रही होगी. उसकी रेटिंग देख पाऊंगा मैं. भाई आज 20 फील्ड, एक दिन पहले है ना, बिफोर द हाँ फील्डिंग की इवेंट. वेबसाइट सुबह से डाउन है. गुकेश क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे भाई? डकार रहा है भाई गुकेश को अभी. वैशाली लिटरली विन वन ग्रैंड स्विस. या आई नो, बट वुमेन्स ग्रैंड स्विस था ना भाई. Divya drew Michael. She drew against a Czech prodigy, Vaclav Finek. आज भाई, भाई ये तो थ्रेट दे रहा है आपको टिको, कि कौन? आपका खेल, पता नहीं, कोई तो आपकी आपका खेल खत्म है. साहिल बेटा कभी भी, ओह भाई डर रहा हूं मैं यार 9 साल के बच्चे से. वैसे तो डरना चाहिए आज हर किसी नौ को. साल बट 9 साल के बच्चों से डरने की मुझे आदत है भाई. डोंट अंडर एस्टिमेट हाउ मेनी 9 year old kids I've lost to. मीनवाइल क्वीन D4 के बाद ओके ओके रिद्धि, माय बैड माय बैड. नवारा क्यों सोच रहे हैं? आई थिंक रुक B8 शुड बी एन ऑटोमेटिक मूव. लेवी 2 3 5 really बस. Oh, then to I have a chance actually of crossing him. Would not be like impossible. नहीं, आप भी करो ट्राई यूरोप जाके, मतलब 3-4 महीने की छुट्टी ले लो आराम से, अच्छा, और ट्राई ट्राई करो मतलब. 3 4 महीने बोला आपने, तो 3 4 दिन. भाई. नहीं नहीं, 3-4 महीने मतलब काफी बार ऐसे लोग ट्राई करते हैं यूरोप में खेल के. अच्छा, नहीं नहीं भाई, आई थिंक स्ट्रीम करना बहुत जरूरी है. आई थिंक मैं ही खेलूंगा तो गुकेश क्या करेगा? ऑल्दो नहीं इन ऐसे तो हाइंडसाइट, मतलब. इन हाइंडसाइट आई थिंक बहुत सारे लोग अभी अच्छा नहीं खेल रहे. मैं अगर हार रही है तो मैं भी हार सकता हूँ. दैट्स द थिंग. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. बट I'm still kind of hoping Ukesh converts this somehow. I don't know what that somehow looks like. Because black की moves काफी simple है. Like rook b8 के बाद you're creating enough counter play. The bishop not a great piece, but doing the important job of stopping this d pawn for now. And king h बहुत या safe है. ये जो 3 तिगाड़े वाले pawn है ना, looked horrible, but somehow for now they're doing a fantastic job. वो king literally एक या बोलते हैं ना, एक वो फेंस के उस तरफ बैठा है, पहुंचना उस तक impossible. बंकर में, अंडरग्राउंड हाँ. ऐसे बॉम्ब शेल्टर टाइप डैम भाई, बैठा है. डैम. ब्लैक किंग इज लाइक वर्ल्ड वाइड वेब रेडी है. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.
Oh, okay. Riddhi, thank you for keeping the chat clean. Then appreciate you. राकेश भाई एक मॉड बनाते हैं आज मेरे ख्याल से Oh, इंस्टेड ऑफ that's a गिविंग आउट great idea. मेंबरशिप्स लेट्स Hmm. मेक वन मॉड चैट तो एक काम करो देखो इनफ वॉचिंग है 700 लोग देख रहे हैं प्लस लेट्स गेट टू 500 लाइक्स एंड वी गोना मेक अ मॉड टुडे न्यू मॉड Yeah. somebody who has the powers but will not use them जो दुनिया को नहीं करना दुनिया को भी फॉलो करना चाहिए लेट्स गो चैट And जल्दी से स्ट्रीम लाइक कर Mhm. दो एंड वील मेक अ न्यू मॉड टुडे बाय द वे रुक बी एट ऑन द बोर्ड Yeah, idea is to push the pawn, best move in the position. If Gukesh blocks it with the queen, तो रुक आ जाएगा ओपन फाइल में A8 पे, then we'll attack the queen from A4. And देखो actually great suggestion and we have मतलब एक थोड़े कैंडिडेट्स भी है हमारे मॉड के रोल के लिए. So या जो काफी एक्टिव है, अच्छा है, चैट क्लीन रखते हैं. So yeah, it would be fun chat. Please like the stream. Is बिशप that a C8 नाउ legit सी Sasikiran? Yes. या या Yes. देखो एक मिनट में. हाँ बाय द चैट डू नॉट मूव दैट बिशप बिकॉज वही बिशप आपका ये पॉन रोक रहा है सो इट्स लाइक somebody is doing a great job let them do that job in fact reinforce them as possible do not give them more tasks to do let it stay there and let's use the queen and the rook to push the b pawn so black का resource allocation is very clear and white को अब क्या करना है ये pawn रोकना है I would love to play knight c2 and knight b4 but ये नाइट हैंगिंग है आई वुड लव टू प्ले नाइट d5 नाइट b4 बट पॉन हैंगिंग है सो दैट जस्ट मीन्स कि आई हैव टू स्टॉप इट विद द क्वीन बट दैट्स जस्ट नॉट करेक्ट रिसोर्स एलोकेशन आशीष चंचलानी वॉचिंग रियली चंचलानी नहीं है भाई चंचलानी है पहले तो तुम नाम ढंग से लिखो भाई 9 साल का ही हो मतलब लग रहा है सही गेस किया था मैंने अच्छा पीछे वाला बंदा अरे यार डैम Where is Erigasi playing next? I think he's playing German Bundesliga right now. He won today against some 25-50 player. So he's gained like a couple of rating points. He's 2748 now. Dingler is moved from the classical. Yeah, not a surprise by the way. Rook b8, queen b4 played. So now comes the crucial moment. Will black play passive, like I don't know, h5, or will he start to, you know, harass the queen instantly? प्राग ने हमें टूर्नामेंट्स जीतने का स्पॉइल कर दिया है आई थिंक एवरी इंडियन प्लेयर नो लाइक 2024 it was Arjun and Gukesh then 2025 it was Prague and maybe Nihal does it this time who knows साल बेटा 9 साल का हूँ 60 का हो जाऊंगा तुम्हें पता नहीं है बट जब तुम 60 के होगे मैं उस टाइम पे यार पता नहीं कितने 80-90 का हो चुका हूँ उस टाइम पे क्या ही बिगाड़ लोगे उस टाइम तो मक्खी ही बिगाड़ लेगी मेरा यार अगर बचाऊंगा तो नो स्ट्रेस haven't seen Leon lately. Why Leon stream कर रहा था भाई? He was literally streaming. I don't know if he is streaming still, but he was streaming day one of this tournament. मेटा ग्लासेस पहन के यार मेटा ग्लास मुझे लेने हैं यार बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि पैसे नहीं है तो देखते हैं देंगे कभी Can Mukesh lose this somehow? It feels like Navara is pushing for the win right now. No, I don't think Navara is pushing because I mean you have to understand कि ये एक बहुत लेट्स पुट इट दिस वे कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन है अगर वाइट को इसको हिलाना ही है तो हिला डालेंगे भाई ऐसा नहीं है एंड अभी के लिए अगर वाइट को ड्रॉ लेना है वाइट कैन टेक द ड्रॉ एट एनी पॉइंट लियोन फ्रांस की सिटी नहीं भाई LEON ही इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग इंडियन यंगस्टर रेटेड अराउंड 2650 can you draw because nowadays Navara is back I mean he's playing well but of course you're going to push if you think queen d2 knight g4 yeah knight g4 doesn't do the same amount of work now because black can just take and this pawn alone can't do much because black has khud ka pawn hai
Yeah, Rook E8 played. I think Rook E4 आने वाला है. What does Gukesh do now? Not an easy choice. For example, Queen D4. Can you go Rook E4 still? Yeah. Rook D4, maybe Queen C1. Rook A8 is even deadlier actually now. Rook A4, Rook A1. This looks like a draw to me. Meanwhile, Wesley saw in the back. नहीं भाई. There is no Ashish Chanchlani. There is no Wesley भाई. Chat इतना क्यों मिस कर रहे हो तुम लोग? By the way, Jorden van Foreest has won. भाई साहब गजब. देखो any updates? No updates by. I think only Gukesh still playing and Rook E8 played. So Rook E4 aa raha hai with the same idea as Rook A8, just to kick the queen back. And not much you can do, I feel. By the way, if you play, let's say, King H2, no, this is a blunder, I think. Wait, King H2, let's say, what I was trying to do is Rook E4 पे Rook D4 खेलने का plan था. But is that something which can give chances? Like, does this improve White's chances or decrease them, Rakesh bhai? Not sure. Gukesh about to play the rook somewhere. Tiku Or he plays Rook D4, actually. stops rook e4 in its tracks. But ऐसा ना बोलता है queen and knight is a better combination than queen and bishop. Yeah. तो I think कहीं ना कहीं it might have helped. But गुकेश को ना सिर्फ pieces रख रहे हैं ताकि chance बना रहे. Yeah. कुछ ना कुछ. And now Navara could be very brutal and just put the rook back on A8 and come from the other side. Yeah, Very hard to. similarity. That's a good idea. Queen a6, queen a4 can happen. So, भाई वेस्ली सो कहाँ दिख रहा है चैट को? भाई चैट को आशीष चंचलानी, वेस्ली सो. हाँ वो लेफ्ट वाला आदमी तो बच्चा एक्चुअली आशीष चंचलानी दिखा. आई एग्री विद चैट भाई. आपने आशीष के वो वाइन वाले वीडियोस देखे मतलब एकदम देखे 2015. हाँ हाँ तो ही देखे. क्लीन शेवन में वो ही एक्चुअली लुक्स लाइक दैट. चैट का टैलेंट देखो यार. ऑब्जर्वेशन स्किल्स देखो. चश्मा देख लिया की का. एंड आशीष चंचलानी पहचान गया. बट वेस्ली सो नहीं दिख रहा है मुझे. Meanwhile, क्या हो गया भाई? सॉरी. मोआ 111 बोल रहे हैं परम टाइम से यूरोप आ गया भाई. But I think he lives in France. नहीं, not him. Param lives in Iran. Damn bro, आज तो कुछ भी हो सकता है राकेश भाई. भाई मोदी जी ने एक ट्वीट किया है. इंडिया इज रेडी, इंडिया इज राइवल, इंडिया डिलीवर्स. हैं? जेनरिक ट्वीट आई थिंक. उस पे लिखोगे नॉट इन प्राग मास्टर्स. नाइस नाइस नाइस. किलर भाई किलर. मोदी जी से तो मैं काफी एग्री है. बट भाई प्राग मास्टर्स में भाई क्या हो क्या भाई. नजर लग गई क्या इंडियन प्लेयर्स को भाई. ग्रैंड स्मिस वो क्या मनहूस इवेंट था. मेंस वाला. आई नो वुमेन्स में जीती थी वैशाली. बट भाई कुछ भी नहीं चल रहा है उसके चल रहा बाद. है बिल्कुल. आपने उसकी तरफ आर्यमन की तरफ बोला भाई. कुछ भी नहीं चल रहा है भाई. क्या चल रहा है यार भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा यार. Is there anything Gukesh can find it? But Michael, I don't think there is anything, sadly. But this is what Carlsen does the best, like grinding water out of stone. Just keep on playing, tiring the opponent out, take the game to the 11th hour, and then finish
him by max pressure. So we'll see if Guki can do this. Wow. Yeah, Navara's peak was to 2750, I think. So yeah, you are right. And he's down to 13 minutes, Riku. थोड़ा सा time. Remember, chat, there is no additional time after this. Yeah. Yeah. True. There is increment that does help, but psychologically, if there is some pressure building up, that 30 seconds sometimes is not enough. So Navara Rook E8 would really simplify matters here, I think. Would force Gukesh to contemplate what to do. Maybe Queen D2 khelenge wo next. But again, how do you progress from there? It's not a simple Mm-hmm. choice. Mm-hmm. And played. Wow. He's played incredible defense, huh, Navara today. And maybe that's why he's at the top of the leaderboard. And Tiku bhai, now we can see both players ka exactly same accuracy. Yeah. Damn, man. क्या crazy चल रहा है यार राकेश भाई. I feel like we missed out an opportunity today. And Hmm. But I don't even know what was Cookie's biggest moment or biggest chance. I think maybe this was all good. Mhm. I think maybe Queen B3, B5. यहाँ पे I think couple of slight inaccuracies. Queen C3 was slightly better apparently. Then Queen D6 was better. Um, but they were also slight edges. Some हाँ, nothing ऐसा crazy. कुछ But the बड़ा बड़ा मिस नहीं किया Cookie ने. That's what I'm हाँ saying. बड़ा मिस नहीं किया आई थिंक कोई ऐसा बड़ा क्रेजी अटैक या क्रेजी एडवांटेज नहीं था आई वुड से दिस वन वाज द बिगर वन नाइट B6 मारना बट अगेन इट वाजंट लाइक रूक A3 वाज एन ऑकवर्ड मूव या नॉट इजी टू फाइंड सो Correct. I feel in इट the वाजंट in the end, Navara also played a good game. मतलब he deserves या the draw. अगर हुआ तो. या भाई जस्ट लाइक Jan Forrest deserved the win yesterday. uh, I think Navara defending very well. Gukesh is shaking by the way in his chair. I don't know if you noticed this. Correct. Gukesh spoke to whom? But I think Rook A4 के अलावा Black has a nice threat of doing some damage of his own with Rook A1 check at Queen C1. So the king can be in some trouble. Have to be careful. Yeah, I think if he could somehow push this pawn all the way, h4 tak, and then do this, then it's curtains. So Mukesh has to, of course, he'll not push the h pawn and create weaknesses, but yeah, this is definitely an idea you have to keep in mind. Tanmay Bhatt in white shirt. How on earth? But I think 2016 का तब मैं अरे बैकग्राउंड मेरे टिकू में नॉट नवारा हाँ बैकग्राउंड में कह रहा हूँ मैं हाँ व्हाइट शर्ट नो हल्का सा बट वो सिर्फ एनीवे
हम दोनों इतने शांत है भाई. It's like मतलब the game is so calm, right? Nothing crazy happening. सच्ची. Think भाई was my 4x4 prediction right? अरे बिल्कुल सही भाई. पूरे टूर्नामेंट में 4 पॉइंट बन जाएंगे हमारे, आई थिंक. भाई यू कैन गेन पॉइंट्स बाय बीटिंग एनीबॉडी. आई थिंक कुछ कंट्रोवर्शियल तो नहीं है. Arvind Mhm. lost, Divya drew, yep, Surya drew as well. Yeah, he didn't get any rating points. Basically, he just became active. A strategy I should also use. Mhm. ओ I हाँ will हाँ, also enter क्योंकि the FIDE rating list, रेटिंग Rakesh bhai. क्या क्या? ये नाकामुरा ने किया ना, मिकी हाँ. माउस टूर्नामेंट, उसके बाद ही रूल Yeah. चेंज हुआ ना कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो यू विल गेन 0 पॉइंट्स. Yeah. Too bad you're not allowed to take photos. Yeah, I think it's to for fair play reasons. But Abhyudaya is allowed because he's from the media. Magnus would win this endgame with both colors. I don't think so. There's not enough juice in the position. He would fight for a win from both colors, I agree. But I don't think he'll be able to convert. Bhai. But Rakesh bhai, it's like Magnus would find the juice. He creates the juice sometimes. वो खुद निकालता Yeah, है juice that like is position true. में. Like you think there's no juice, but he finds it. He creates it somehow. Correct. And the opponent knows it's Magnus. So they start, you know, being nervous. And that helps in making mistakes. So it's like a loop. Because the idea you showed earlier, na, that Hmm. may be like the only way. Like somehow, like it takes 4 moves: knight f1, knight d2, knight f3, knight e5. Gukesh will be a very, very happy boy if this happens, but Yeah. there's just not enough time. Yeah, and knight g4, the other alternate, try to do this quickly. Like I think black, of course, can do other things, but you can just chop it off also. And after h takes, I think maybe queen d7 also works, I'm guessing. Yeah, also works. And kahin na kahin pe, you are stopping this, I'm stopping this, and it's just equal. You can't do much. Mm-hmm. Yeah, yeah, Nakamura tweet देखा मैंने, and even टिको भाई आपने जो शेयर किया था, मैंने कुछ it's शेयर नहीं like किया भाई. मैंने मुझे डीएम पे, नहीं, मैंने कुछ शेयर नहीं किया भाई. मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ समय में. नहीं नहीं, तो क्या भाई. नहीं, the point is Nakamura also tweeted something. Did you see हाँ, ऐसा. about Iran? Because it's his wife is Iranian, Atusa Porkashian, अच्छा अच्छा. woman grandmaster. She was an Iranian before, but maybe he's supporting that. मतलब not supporting Iran, the people of Iran. Okay, yeah. Anyway, are you silent because you're reading the comments or not? Yes, we are reading the comments, Riddhi. अरे delete क्यों किया मयंक भाई? मयंक भाई मैं like भाई बहुत full, स्ट्रिक्ट है यार, बहुत स्ट्रिक्ट है मैं बहुत भाई. स्ट्रिक्ट है. इसीलिए तो अपन 500 लाइक्स पे और एक मॉड ढूंढ रहे हैं ना. हाँ. So, chat, do hit the like button because we are looking for a new moderator today. Oh, 15 minutes for Gukesh now. I don't see a way for him to create more weaknesses. Tiku bhai, how about... No, no, I can't even do that. Rook a4 is a big problem. Hmm. Yeah, chat. Meanwhile, लोग कह रहे हैं why not rook d1? Yes, but rook d1, that's just repeating moves, right? वहीं से रुकाया है अभी. So Yeah. लाइफ में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सेम जगह बैक एंड फोर्थ नहीं. And if rook d1, rook a4, black is ready to push. So Harsh bhai will say, what's unfortunately, the best move for Gukesh, Tiku? it's queen d2, but the problem is there's not much like that changes. Black can just wait. Queen c5, kar lo. Oh, he Yeah, he goes goes rook back rook d1. d1. So, in fact, black could just play.
rook e8 back, and it would be repetition because this was the position. Tuck, 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 and tuck. Yeah, played. Rook e8 played. So they repeated twice. So twice we have the same position now. But I think Gukesh plays on, chat. Gukesh won't agree to the draw. I think rook d4 would be a draw offer from Gukesh. Yeah. But he won't. How about Tiku? Let me try white pieces. Say, what if Gukesh Huh? plays knight d5, threatening to bring the knight to e7? Huh, that's a good point. Actually, I don't know why I didn't see that move. Um, now I think, okay, the engine says rook e5, which is weird. I would play Yeah, rook yeah, it's e2, I not think, a just human activating the move. rook. Yeah, I was afraid of that. Okay, let's keep going. Knight e7. 97. Bhai! Bhai! Na 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 What if he na risks it? na. Is my Huh? question. Rook f1. Rook f1. So Now it's like queen my d3 pieces are apparently. passive. It's very strong. I Yeah, black don't is know taking why. over. I still don't know why it's so strong. Like it's strong, but why is so strong he's losing? I think the threat is maybe rook e4 and bishop h3. So if I play, Knight I don't know, e4, what do I bhai. play? E4, rook e4. Let's say queen c5. Maybe I get Rook quite shocked. d2. Oh yeah, Rook loses the d2. pawn. Why So yeah, possible even to lose this? activating the knight doesn't work here. Yeah, it's possible to lose. Yeah, I mean, आराम से you overextend. Knight g4 पे I'll just take यार chat, and I think that's a sequel. Maybe he does that, Tiku. Point is knight g4, bishop g4 के बाद queen g4, which ensures pawn will end up on d7. But He had, yeah, just rook d8. Yuki had a look at the score sheet just now. Oh, मतलब yeah, but rook repetition का d8 शायद and देख रहा है. Yeah, if I go d7, d7, you throw the b b4. pawn at me, and whenever Yeah, I capture it, you capture d7. literally throw भाई, literally उठा के फेंक दूंगा opponent के ऊपर. Hmm. Let's see, Gukesh about to play. He's below David Navara's clock now for the second time after getting a time advantage. Yeah. Chat, do you think anybody who in the chat who thinks Gukesh can win this? Like, is there somebody, some, like some half glass, full guy in the chat who thinks there's some hope here? Would love to know. What are your Yes, thoughts? Pankaj, Parham is Iranian. He's board number 1 for Iran, Olympiad mein. Nah, yes, me. So, bhai, people are still believing. They think Gukesh can convert this. Yeah. Yes, simplify. Sadly, that is true. Where is Gukesh's knight? अरे भाई हाँ. If we come like refresh करो टिकू भाई live board और अच्छा, आगे पूरा क्या? analysis. नहीं. Sorry. We were in Yes. a variation, right? Arjun, uh, Kek, Kekamet. Yes, Mayank. Maybe it's time to give him a warning. Thank you, Mayank bhai. By the way, Queen D2 played. Kasparov ने भी कुछ ट्वीट किया apparently. भाई क्या चल रहा है दुनिया में? Now rook e6, and I think that pretty much. Oh, rook allows knight g4 though. Not necessarily doing much, but at least maybe just. Yeah, I don't see it, Rakesh bhai. I don't see it. But Chad, I want to say something like ऐसी positions na, like so, I have memory of when I was in college, school, in fact, like or maybe in college, like I would look at a certain game, I would follow a certain game, and Magnus would be playing it,
and it would be like a game. याद आ गई Magnus against Rajabov, मुझे specifically I remember from some tournament. But anyways, Magnus will be playing it. I would say भाई रात के 12 बज चुके हैं. It's just like now. तो क्या खेल रहे हैं ये लोग यार? Why are they playing? Like I mean, it's just a dead draw. Why is Magnus still playing? क्या हो गया इसको? And I would just be just sleep in frustration. I would wake up and he would have won the game. So like Mhm. Magnus is like different somehow. Like he's the only one who can win this, I think. बाकी सब के लिए I think it's just a draw. I agree. Oh, I see. Do you see Gukesh's idea, Tiku bhai? Tiku bhai? क्या कुछ इसका idea? Huh? I'm just trying to. I think maybe knight c2, knight b4 Hmm. No, could very be one sneaky. plan. एकदम सिंपल सादा डोसा थ्रेट है. रूक हाँ. C1 करके रूक को 7th रैंक पे लाना है. हाँ. Also nice actually. I like it. So Rook c1. David has to be careful here. Yeah. Rook e6 played. Yeah. Stops it. No rook c1. Possible now because queen d6 आ जाएगा. What do you do now? क्या क्या चल रहा है भाई दुनिया में? Actually, right now, if you had a choice to be in Germany or India, where would you be? भाई tough question. Tough, no? India though, but Germany में चल. भी life है तो can't. Hmm. So, definitely not in Dubai. That's for sure. If chess.com was a country, अभी डाला है उन्होंने post. We would be number हाँ, 5. I saw. Yeah. Anyways. चैट में अलग चल रहा है. हाय दीदी, हाउ आर यू? मी फाइन, हाउ आर यू? भाई चैट में अलग ही चल रहा है भाई. मीनवाइल रुकी के बाद राकेश भाई, एनी होप? क्या हम एच पॉन को दोहरा दें? But Tiku, how are you? आई एम फाइन भाई, हाउ आर यू? I'm fine. Thank you. कैन वी प्ले H4, चेस राकेश H5. भाई? या ठीक है, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं. रुकी 6 प्लेड क्या? नहीं, हाँ प्लेड हाँ. प्लेड. हाँ भाई, साल हो गया खेले हुए रुकी 6. भाई भाई, अरे मैं ट्विटर पे था यार. Can't blame me. Like yeah, it's like in. छोड़ो, मैं क्यों मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में. But हाँ H4 हाँ. H5 is a huge threat for Gookie, and I think it's time to push Harry the H pawn. Let's go. And let's show Tiku bhai chat ko. White Gookie plays H4, हम्म. and David bhai, if he is scared of H pawn coming to H5, opening up some lines, and he goes H5 himself, that's a हाँ. big blunder. Knight F1, Knight H2, Knight F3, Ooh. Knight G5, game over. Ooh. By the start of the end, Rakesh bhai. So I think H4 has, and I would, oh man, okay, I thought times were reversed, but Gukesh to win, like what Magnus also does is he puts pressure both on and off the board. So clock पे भी आपको कहीं ना कहीं you have to force Navara to come under like 3-4 minutes, Yeah. and then he has to play on the increment. Also, I think Magnus forces his opponents to make choices. And H4 forces you to do Yes, that. Like, are you gonna allow yes, me to go this exactly. and open this? Or are you gonna stop me? It's a choice. And that's why it's a good move. But Knight C2 instead played, and apparently Queen C5, black is already even slightly better. Wait, what?
राकेश भाई, so कब खेल रहे हैं हम चेस? What's your chess.com ID? I'm fine. कल खेले फिर? Okay. Not interested. Bye. अच्छा अच्छा, ओके ओके. लूडो? I don't play NMs. लूडो? I don't do ask. भाई भाई चैट में अपना ही अलग चल रहा है भाई, बढ़िया. ये गेम खेल के आया, +3 पोजीशन डिफेंड कर लिया, हाथ कांप रहे थे. Feel like a GM. Like of the 10 things that didn't happen tonight. आप मॉर्फ बनाने वाले थे भाई, आप 500 लाइक करने वाले थे, क्या हुआ? मैं हुए क्या बात से लाइक? नहीं, 389 है भाई, जल्दी से सब लाइक बटन दबा दो और ले लो मॉड, तुम्हारे हाथ में है भाई. Let's go chat. Meanwhile, Queen C4 has been played. Not the best, but I think 93 back is now very likely. But 93 Queen C6 is like a draw offer. Yeah, it is. But I mean, what else do you do though? Knight B4 maybe, but then there's Rook E4 apparently, which is ये चक्कर काटते रहेंगे हम लोग बेसिकली. नाइट D3, Rook E6, Knight E3, ये चक्कर काट सकते हैं पूरा. Oh, yeah, Michael, you will be very happy today because it's maximum focus on Gukesh. What the hell? Air India cancels flights to London, Toronto, Frankfurt, Paris, Chicago flights for. बाप रे भाई, सच में राकेश हाँ भाई मैंने फ्लाइट बोला ना कैंसिल? भाई. हाँ मैं बोल रहा हूँ मेरी फ्लाइट कैंसिल. मुझे लगा सब सब नहीं, सब कर दी भाई. या I don't know यहाँ से क्यों कैंसिल की. मे बी वाया रशिया या नीचे से जा सकते थे, बट ठीक है. मे बी बेटर टू स्टे सेफ. मैं सोच भी रहा था टिक्कू, पता है कि इट्स लाइक अ 4 आवर बस, फ्लिक्स बस चलती है कि मेरे गांव से आई कैन, गांव नहीं मेरे शहर से आई कैन गो टू प्राग मास्टर्स. बट भाई क्या ही है वहां पे भी, क्या ही चल रहा है मतलब. अगर कोई जीत रहा होता then it would have made sense. Yeah, damn. Come on. Bhai, did you see what Kramnik replied to Karyakin in that tweet? हाँ, yeah, this Damn! Why Kramnik is inactive 2753 and he's expected to play a couple of rated games. So वो भी आ जाएगा भाई वर्ल्ड टॉप 10 में. इंडियन प्लेयर्स वर्ल्ड टॉप 12 होने वाले हैं यार. बाद में रुकी टू कैसे घुस गया यार? भाई भाई क्वीन डी3 क्वीन डी ओनली थ्री. मूव. भाई ये क्या लेट हो लेट गया भाई? सीरियस हो गई बैटल सडनली. अच्छा है, मतलब कुछ तो हो रहा है एटलीस्ट. हाँ बट ट्रू. इट लुक्स लाइक ब्लैक इज स्लोली टेकिंग ओवर भाई. मतलब queen e6, I have rook e1 check, then how do you defend that, brother? If I take on d3, like maybe knight d3 and knight c5, there's some chance there. So I don't think we Correct, should correct. take. Yeah, If that's you why I'm telling queen take, e6. Yeah, this is bad, I yeah. agree. But Hmm. queen e6 के बाद, again you have to find an only move because rook e1 is a huge threat. Okay, king Can't take the f1 rook. maybe.
King F1. हाँ, King F1, but still, the king is या weak. भाई एक सेकंड के लिए हार्ट मुंह में आ गया था यार, मतलब एक ही चाल थी वहां पे. भाई आप ये क्यों बोलते हो? हाँ, थोड़ी है मतलब. भाई मतलब सो इंडियंस अभी वर्ल्ड टॉप 10 से आई थिंक थैंक्स 12 हो टू जाएंगे मतलब. क्रैमनिक और कार्याकेन, हु वुड हैव थॉट, मतलब ये भाई साल अब ना भाई कुछ भी हो सकता है. भाई कस्पारोव को भी खेल देना चाहिए एक. वर्ल्ड नंबर 2 सीधा. अरे व्हाट इज गैरीज. अच्छा फिडे अफसर तो चल ही नहीं होगी ना. मैं भी क्या एक्सपेक्ट कर हाँ, रहा हूँ. एग्जैक्टली. बट 27 2800 आई थिंक. हाँ he's 27. I'm not sure if I think he'll be world number 2 behind Magnus I think. 2812 गैरी का रेटिंग. हाँ so world number 2 yeah. एंड अभी भी वो, इवन आई थिंक ही इज अ क्रोएशियन सिटीजन ना, वो रशिया वापस नहीं जा सकते थैंक्स टू भाई इतना समवन. मत घुसो अभी. हाँ हाँ, बट हिज फेडरेशन इज स्टिल रशिया, फीडे पे. हाँ इंटरेस्टिंग. भाई मतलब गैरी अगर एक बच्चे ऐसे कोई रेटेड गेम खेल दे, ही विल बी हायर देन नाकामुरा एज वेल. वो yeah सीधा वर्ल्ड नंबर actually 2 हो जाएगा वो. exactly and we can play the candidates rating spot. भाई आई थिंक Kekamet has got to go. We gave you a warning, but you are out of here. Can't disrespect our players. भाई मेरा कैमरा भी गया साथ में भाई. आप और Kekamet दोनों ही निकल गए हो चैट से. Numbers in, yes, Nagesh. I remember, yeah. Numbers in English. We'll remember. I remember you telling us yesterday. Appreciate that. Hi, Kirtan. Queen trade happening. Michael, maybe. But if David thinks that endgame is drawn, he'll trade queens. But or else I also like just queen dropping back, taking control of the E line in the center, and looks tough for If you trade Guki it to make like this I progress. think at least Gukesh Hmm. has chances. Like this will be a bit difficult to defend I think. Like rook e8 is the only move now. So this is Yeah, what and you Gukesh is saw the hoping bar for. rising, Tiku, matlab, Yeah. after the trade. या यही बराइज करेगा राकेश भाई. रियल गेम में तो मुश्किल है तो देख लो. या दिस इज डिफिकल्ट सो आई थिंक ब्लैक शुडंट टेक. बाय द वे ग्लैड टू सी इंडियन फैंस एवरीवेयर भाई. भाई मैं लड़का हूँ किसी और का अकाउंट है. भाई हमने पूछा क्या. हाउ मेनी इंडियंस वन टुडे. ये क्या था भाई. भाई मैं लड़का हूँ. मेरी एक टक नकली है. ये क्या था. नहीं नहीं, सती सईश भाई, you don't need to go anywhere. We will show you the game results of the result of other games as well. Tiku bhai, can we show the other games? अदर गेम्स कोई है ही Saish नहीं bhai भाई. is having so much fun here. No, no, no. Like Hans का क्या हुआ, for example? अच्छा रिजल्ट्स. सो हाँ, रिजल्ट्स just the वाइज position अगर कुछ है. yeah, Nodirbek Yakubboev lost to Jordan. This was the final position. हाँ ये रहा भाई ये रहा. Yeah, this is better. Yeah, you can see the results chat. Aravindh lost. Gukesh's game is the only one remaining because of course it's Gukesh. And yeah, ये भी draw ही होगा. By the way, Rook E6 played by Ooh, okay. Not uh, Queen E6. Navara. So draw incoming. Why both players under 7 minutes now? No additional time this time. Let's see. Unless Gukesh plays on with some. Okay, थोड़ी how देर did he play बाद on? बोला ना आपने. ईरान का क्या हुआ? परहम ड्रू चैट. परहम saved a very difficult position.
Let's see क्या होता है राकेश भाई. I still have hope that the game, like Gukesh is fighting Rakesh bhai. He's not letting the guard down. I still have hope in this game कि 3-4 में draw हो जाएगा. Ooh. By the way, chat, one big blunder I can show you, like why you have to be tactically very alert is if you think you can jump in with your knight in the center with knight d5, you you can see there is a nice tactic for black. So टिकू भाई दिखाएंगे चैट को फटाफट. हाँ. So knight d5 and then Okay, no, wait, it doesn't translate the point. Knight a6 ट्राई करो या नाइट c2 अच्छा. चलो, नाइट को e3 पे ला, नहीं नाइट a6 ही खेलना पड़ेगा. knight c2 But भी नहीं चलेगा भाई. हाँ, नाइट a6 के बाद शायद the point is हाँ. queen is now like एक defender कम हो गया. So you saw the bar go down, rook e1 check. You can't Yeah. take because your queen hangs, and if king goes up, then queen f4 check is curtains. Yeah. Yeah, it is all but over. Goodbye. क्या गुकी का बेस्ट मूव क्या है वैसे टिकू? Queen c4. Oh really? What is Second best about is to queen play? d2 and repeating. Because knight hanging है, queen hanging है. How do you defend both? Like there's not many ways. Correct, yeah. Like queen David b1, Navara for is example, just super looks confident. weird. Yeah, I mean, I think queen b1 though is a step in the wrong direction. Yeah. Good night, Harish. Yeah, this game will end in a draw. So, yes, Michael, not enough weaknesses in black's position here. Oh, he Oh, knight continues c2. by. Oh, by knight c2 covers the e1 square chat which you were talking about. So now rook e1 check, pin knight into e1 happens. Huh. Very So that important. tactic won't work. But Gukesh wants to fight. Let's go. That seems to be the trend today, Rakesh bhai. Yeah, yeah. Because now can black trade queens and take the draw? Like go for the draw. I think so, actually. I don't think this is like seriously better. I mean, maybe this is slightly better for white because you can't push b4. But now the king would come in, I think, at some point. Right now, I hope it works. Yeah. Like this is too far away from c5. कैसे जाओगे c5 पे? There is no way, actually. You need to come here. Knight a1 पे rook e1 check and knight गया. भाई एक तो जो ट्विटर पे गलत इंफॉर्मेशन देते हैं ना, विच इज लाइक ब्लेटेंटली फॉल्स, इनको ना मतलब इनकी क्वीन कैप्चर कर लेनी चाहिए भाई. इनको मेट कर देना चाहिए इनको. राकेश भाई बिल्कुल शांत. Sorry. राकेश भाई भूल गए कमेंट्री भी चल रही है. Actually, मैं उनको लगा मैं लैपटॉप पे चिल कर रहा हूँ. चिल नहीं यार भाई सर. वही पूरी ट्विटर के नदियों में डीप डाइव कर रहा था. हाँ भाई, ट्विटर अभी ऐसे एक्सप्लोर हो रहा है ना. ऐसा आपने बोला ना मेरे को, ऐसे कोई नींद से उठा था ना, ऐसा लगा सडनली आई वाज. बट लुक एट भाई कितना एक्शन पैक्ड है ट्विटर. एंड हाँ. गेम में नॉट सो मच सैडली. हाँ आई नो भाई, सब शांत शांत है, मतलब चेस बोर्ड पे शांत है, बाकी दुनिया में आग लगी पड़ी है.
बट यहाँ ये वाला पोजीशन इज वेरी काम. क्या पढ़ लिया राकेश भाई? अरे नो नो साउंड आ रहा. अच्छा अरे ऑडियो वाज वर्किंग चैट. वी बोथ वर जस्ट साइलेंट, soaking in the complexity of this resulting rook and bishop endgame. सोकिंग इन. हाँ राकेश भाई पूरा. क्या सोक कर रहे हो आप मुझे नहीं पता, बट मैं तो भाई कुछ सोक चैट नहीं कर रहा हूँ. चैट बोल रही है रिफ्रेश करो. साउंड बैक. Oh, fine and समय valid. भाई I think हमें yeah, क्या भाई, समय भाई, हाउ कैन वी लूज द साउंड मिड कमेंट्री? हम इतना exactly. इंसाइटफुल एडवाइस दे रहे थे, एंड नाउ चैट डजंट गेट टू हियर एनी ऑफ इट. राकेश भाई मैं तो बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा. I am saying get the old producer भाई, मतलब इससे अच्छा. Oh, live ओह board, live. डैम. Yeah भाई chat, it is a live board. नहीं अच्छा okay sorry टिकू, रिफ्रेश लाइव कर दो क्या ना. होता है भाई? व्हाट? अरे क्या अरे हो? नहीं नहीं लाइव लाइव बोर्ड अपने. अच्छा अच्छा अच्छा. नहीं ये अरे नहीं है अपने. भाई, ये नहीं है लाइव पोजीशन. हाँ तो आपके इस पे गलत है. हाँ नाइट C2 करेक्ट. थी एंड रुक E2 वाज प्लेड. हाँ बस ये सही है. भाई नाइट B4 इज अ नाइस मूव हियर. फॉर द ड्रॉ. It's the Indians first preference. गेम इज फिनिश्ड. शाहरुख खान कहाँ आ गया भाई? Oh, he plays it actually. ब्रिलियंसी. टिकू भाई आपका चेस का. What? What? वो भाई ये क्या ब्रिलियंसी है यार? राकेश भाई प्लीज एक्सप्लेन. नहीं भाई. और रुकी 6 बैक. ड्रॉ इनकमिंग चैट. तो क्या तो लगता है ड्रॉ गुकेश होगा? गुकेश could repeat the position thrice, gain 3 brilliancies, and यस. then chill. Bro 3 brilliancy करके आया मैं. ओ बाय द वे, बिग स्टेटमेंट बट नॉट रिलेटेड टू द गेम सो आई विल शट अप. भाई क्या स्टेटमेंट, मुझे तो भेज दो. अरे इजरायली प्रेसिडेंट ने भाई कुछ मैं ये मुझे क्वींस भेज दो यार, ट्रेडेड. आप यहाँ मत बोलो भाई, यहाँ मत बोलो, मुझे टेक्स्ट कर दो. क्वींस ट्रेडेड. Knight A2 played. Okay, stopping the pawn. सागर शाइन बैकग्राउंड, मेरे सागर शाह, सागर भाई थोड़ी है. क्या पढ़ जा रहे हो राकेश भाई? ये मोड़ है. तुमने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा भाई. बट मुझे You समझा guys वो are क्यों लिख रहे. wasting time speaking bad things about Sahil bhai. He is very good comment. He is. They both are very good commentators, and they don't care. Thank you, Didi. Really appreciate your words. Chat, तुम भी रिद्धि की तरह समझो हमें यार, समझो हमें. क्यों राकेश भाई? एग्जैक्टली यार. आई थिंक रिद्धि ने काफी इज अ स्ट्रांग कैंडिडेट फॉर द मॉड अभी. हाँ 8 प्लेयर, लेकिन अपन भी वैसे कैंडिडेट जैसे खेलते हैं. 8 लोगों को चूज करेंगे. 0.1 आगे है नवारा. ओके 0.1 भाई अंगे नहीं नवारा. है भाई. आगे आगे. वो भी नहीं है अरे एक्चुअली, G5 के बाद 0.00. नवारा डाउन टू 3 मिनट्स चैट. हमारा नंबर 1 XP वाला गाय से ज्यादा देखता है और चैट कह रहा है, करता है, कह रहा है दे आर शिट कमेंटेटर्स. क्रिश भाई यार कम ऑन क्रिश. नॉट सो बैड. कम ऑन, नो साउंड व्हाट रियली. अच्छा ओके क्रिश भाई अपने ही है रे, मस्ती कर रहे थे. हाँ मस्ती कर रहे हैं भाई, मस्ती कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. अभी थोड़ा सा मस्ती इनके साथ करेंगे. कहाँ रहते हो कृष भाई? शिट तो है भाई. निखिल भाई थैंक यू, लव द सपोर्ट. नाउ द फेमस किंग वॉक सिंग आलोक. ओ G5 के बाद ब्लैक किंग कैन मार्च डाउन द डायगोनल. हम भी थोड़ा मार्च कर ले क्या है राकेश भाई?
बट क्या ही करेंगे मार, क्योंकि मार तो कुछ सक नहीं सकते। एक्टिविटी। आखिर में किंग को वो अगर हम यहाँ रख दें, तो गुकेश विल विन, बट गुकेश कैन डेफिनेटली विन चैट, क्योंकि नवारा डाउन टू 1.5 minutes चैट। देखो क्या लगता है, कुछ हो पाएगा? क्या? अरे कुछ रिजल्ट भाई, रिजल्ट। भाई नहीं भाई। गुकी जीत पाएगा? नो चांस। है भाई, ये क्या था? देखो ये देखो जो आपको भेज रहा हूँ, मतलब मैं भी कुछ भेज रहा हूँ आपको। आई डोंट नो दिस इज द सेम थिंग और नॉट। सच अ वियर्ड स्टेटमेंट टू मेक। अच्छा, मैं कुछ और भेजा है, आपने इसका भेजा है, ओके। व्हाट? व्हाट? एग्जैक्टली, वो भी आज के दिन पोस्ट कर रही है। भाई बताओ। बताओ चैट। नाउ आई अंडरस्टैंड कि लाइफ में जीके जो बचपन में पेरेंट्स कहते थे, सीखना क्यों जरूरी है, अब समझ आ रहा है। किंग एफ जी8, किंग F7 प्लेड। एक बच्चे ने हाई के नीचे जाके देखा आपने? हाँ। एडिटर्स, दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट। जो अच्छा ब्लैक हाँ, शर्ट में राइट राइट बच्चा है राइट ना, राइट राइट। ही वेंट डाउन हाँ एंड ही वेव टू द हाँ। कैमरा, हाय हाय किड। F3 played. Now Guki also wants to get his king in. केश थोड़ा सा वाओ। प्रेशर तो डाल रहे टिकू, बिकॉज नवारा डाउन टू 2 minutes। या। I think ड्रॉ the करो problem is king जल्दी से। can't move. Like there's no way to cross this. That's the problem. हम्म, exactly. How about rook e3 now, Tiku? Oh, knight e4 also a big idea. Yeah, you're right, chat. Knight e4, knight c5 incoming, Tiku. Oh, तो nice. f3 का वो भी एक हिडन एजेंडा था। अगर g5 खेलोगे, let's say black just passes, then knight e4 पे, okay, there's still rook e8 actually, but ah, देव एन, ओके, आई मराठी जोक, आई गॉट इट। साहिल भाई, दीदी को भी लाइए स्ट्रीम पे। व्हाट? तो कमेंट्री तो अच्छा मेरी वाइफ की बात कर रहे हो क्या? भाई as you might imagine कि वो सो चुकी होगी या सोने वाली होगी। By the way, rook d, नहीं नहीं, I think वो चेस प्रैक्टिस कर रही है भाई। ये व्हाट इज नाइट e4? ओ, दिस नो थ्रेट एक्चुअली, नाइट c5 पे भी आके कुछ कर ही नहीं रहा है। Yeah, I think Navara's got this, bhai. He looks super confident. He's using all of his pieces. D6 का passed pawn is like तीनों ही pieces की नजरें are on that pawn. या So 3v1 that pawn राकेश भाई। ain't going anywhere. वो goofy का 1v1 है ना। If you say so. 30 seconds increment, Gukesh gets to thinking and gets stuck. Yeah, but he's trying to create a winning plan when there is no winning plan. That's why he's thinking a lot. What's Ukesh's strategy over here? Good question. I think it's just to probe for weaknesses. Like, keep playing this game as long as possible and hope that Navara makes a mistake, like when he has 30 seconds, 20 seconds on the clock. But honestly, so far, Navara has shown no signs of making them. And when you take on c4, I will take on d6, and it's a dead draw. So, yeah. Abdul, any good opening gambit for 1100 rated player? You can try Scotch Gambit from white pieces. That's a nice opening. And good luck in your school level tournament. If you learned Italian, that's great. But as a surprise value and a very good opening played by most world champions is known as a Scotch Gambit. Khatam Rakesh bhai, king d7. Yeah.
Yeah, no time to play knight e4 chat because by bishop e4 मारना पड़ेगा ना. Knight c5 is a massive threat for Navara. Yeah. But very simple, no? Just takes like feels very simple Chop actually. Okay, he will chop, get a but you pass don't. pawn. Yeah, don't you connect? Oh, okay. Chop chop, rook d6, rook c4. Yeah. So Guki is still trying. Fe4. Rook e4 was lost, by the way. So don't want to lose. भाई chat क्या brutal है. Warren Buffet at the back. Crazy. Damn. Stuti, sadly, there is no disadvantage of the pawns there, the double pawns for black. But this one pass pawn on e4 is just too little uh, for Gukesh to win. Yeah. टिको भाई कोई जोक सुना दो. यू आर रियली फनी. ऐसे सागर भाई बोल रहे हैं. टिको भाई अच्छा सागर भाई. Yeah, Michael, that's going to happen. Gukesh, after I think rook takes d6 by David Navara, Gukesh will have to take black's pawn, which is beside the rook. Oh, he भाई pushes it. आप लोग लगता है रोने वाले हो. नहीं नहीं भाई, रोने नहीं वाले यार. बिल्कुल भी नहीं यार. हम नहीं नहीं रोने वाले यार. भाई रिद्धि ने एकदम दिल की बात और प्रोड्यूसर की बात कर दिया. भाई कमेंटेटर्स भी बोल बोल के थक गए. एटलीस्ट गिव देम अ लिटिल रेस्ट. एटलीस्ट एक कमेंटेटर तो थक गया है. जो जो शुरू से था. देखो भाई आप रेस्ट कर लीजिए. मतलब नो प्रॉब्लम. आई कैन टेक इट फ्रॉम हियर. हाँ, ये वो था, नहीं नहीं ये वो नहीं. जो जो काउच नीचे से ऊपर तक लेके आए. दोस्त कहता है भाई मैं कमरे तक लेके जाता हूँ ना, तू रेस्ट कर. नहीं वो या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट में लास्ट डे पे ज्वाइन कर. हाँ, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ भाई, तुम लोगों ने बहुत खूब मेहनत किया. बढ़िया. यू कैन रिलैक्स. मतलब मे बी वी कैन By the way, ऑल्सो do you think Mukesh plays रैप इट this? अप. नो आई मीन वी कैन रैप अप द स्ट्रीम. आई थिंक ड्रॉ तो हो गया अभी. Yeah, but I think he might play this on, मुझे लग रहा है. भाई शुभ शुभ You see? बोलो यार. नो वे. उसने स्कोर शीट ले ली भाई. मैं कह रहा हूँ he's गुकेश इज gonna play this. He has a passport. He's gonna play 100%. this for a while. बट भाई इफ ही विंस दिस ना, टिको भाई 10 पुशअप्स चैलेंज. अगर गुकेश जीत गया ये वाला गेम. भाई if he wins this तो कम से कम 5 मेंबरशिप गिवे तो बनता है. हाँ चलेगा चैट. Oh, Navara down to 1 minute. G5 डन played. भाई. If he wins this, राकेश भाई हमें दोनों 10 पुशअप करेंगे. 10 एंड नहीं 50. 50 तो हो नहीं सकते भाई, एक लिमिट है भाई बॉडी बोल की रहे भी. they are going to play till tomorrow morning भाई. अबे G5 is not a bad move, but somehow king का एंट्री बन सकता है व्हाइट किंग के लिए. Yeah. I mean, 50 king pawn पुशअप्स end game बोल is रहा है likely भाई. winning. 50 पुशअप्स. तो rook d3 पुशअप्स is छोड़ो threat है. यार. We'll give you ये क्या बोलते हैं, memberships. Rook d3 is a huge threat, by the way. I think if you play g6, this is winning, is my guess. Really? No. Yeah, king pawn should be Why? winning, no? I'm क्यों? hoping. Yeah, let's go. So, David, I found a way for white to win. They're not done. Oh, he puts king e6. Smart. Navara. He is a strong grandmaster.
थका हारा टिकू बिल्कुल यार भाई. मैं भी. It's been a long day of commentary. करना पड़ रहा है भाई. Navara gets 30 seconds for each move. How is this called time pressure in such a position? No, it is. I mean, time pressure is there, but this position not so much because there are fewer decisions for him to make. Rook c5 on to e5 check, forking the king and the rook. Big threat, but of course, black is not going to fall for that. By rook a6 is just an instant draw, I think. Not much to do. Whenever you push e5, I'm gonna just put the king here and just shuffle. Like there's nothing you can do actually. Even if I okay, let's give white the ideal setup. Black sit up कर रहा है, बस wait कर रहा है. What do you do? Okay, I play e5, king e6, king e4. मैं check भी नहीं दूंगा. क्या करोगे यहाँ पे as white? This is what you're hoping for, right? I'll just wait. Actually, yeah. No Maybe what you words. have is like rook d4, rook d6. Maybe this is what this is a draw, क्या? Yeah, even this is a draw. Yeah, कुछ नहीं हो रहा. Other way, king e6 played, so Navara knows what's going on. Yeah. कल वाली हमेशा बाकी है. True. Rakesh bhai, we have to give out a membership. Let's go. And 2, if chat gets another 70 likes. So Rakesh bhai, let's do a challenge. चलो मैं करता हूँ इस बार. Chat ready or ready लिख दो. If you're ready for the challenge, type ready in the chat. Let's go. Chat, whoever wants the membership, please comment ready so you're eligible for the giveaway. And chat solution है, you have to write the answer and then write your username. तभी it will be counted. So otherwise it will not be counted. ध्यान रखना. And the first person English to write में both. टिकू भाई एक बार rules बोल दो. हाँ, so you have to write your the answer and then followed by your chess.com username to win the membership. The first guy to answer it correctly wins 1 month diamond membership. And chat is ready. Is it a chess question, टिकू? I hope so. नहीं ऐसे ही पूछ मतलब. हाँ. Okay, ready आ गए. Everyone is ready, chat. मैं Okay, क्वेश्चन टिकू, सोच रहा हूँ over to भाई. you. सोच रहा हूँ भाई. 1 सेकंड देना मुझे. Okay, काफी रेडीज आ गए. Like भाई सब लोग ready. हाँ, क्वेश्चन ऑलमोस्ट रेडी है. मैं आंसर देख रहा हूँ क्वेश्चन का. एंड Ample भाई, no, this is for the membership, not for the mod. हाँ, ये कल का पेंडिंग है. सो चैट क्वेश्चन इज, जब गुकेश और डिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हुआ था और डिंग ने खेला था रुक f2, which move number was that? First guy to answer it correctly gets a 1 month chess.com diamond membership by. Which move number was that? Okay, I already see the correct answer. I see 43, no, 51, no. Answer is 55, by the way. And I see I learn quick, Rakesh bhai. वही है ना? I think I learn quick is the first guy to answer 55. Congrats, bhai. You win 1 month diamond membership. राकेश भाई तो है ही नहीं भाई. राकेश भाई चले ही गए. It's like इन सबको करने दो अपना. यही मौका है भागने का. Congrats भाई, आपको मिलती है 1 month diamond membership. मैं ऐड कर रहा हूं अभी. चेक कर लेना प्लीज. Done. So उनको मिलती है 1 महीने की membership. And chat, we will do one more challenge for mod if we reach 500 likes. That's up to you. And it's already 437, so 60 plus likes more. Let's go. अरे rook b4 played, so pawn को बचाने के लिए आना पड़ेगा. Unless you wanna go all in. राकेश भाई left. नहीं भाई, sorry. Someone was at the door. कर दिया भाई challenge. Answer ही मिल चुका है. One guy got the कौन membership. जीता membership? Membership जीते Mr. I Learn Quick.
चेसकॉम आईडी मेंबरशिप दे भी दी बढ़िया मैंने, सो ऑल गुड. नाउ दूसरा भाई चैलेंज होगा मॉड का, इफ यू रीच 500 लाइक्स. ओके चैट लेट्स गो फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो 1 मिलियन इनकमिंग भाई ही मिश्रा इज भाई गोइंग पूछ रहे हैं फॉरवर्ड. आई ओह, मीन, नहीं वैसे मिश्रा भाई कुछ पूछ रहे हैं टिकू भाई दैट व्हाइट कलर के शर्ट पे ना डिड यू सी दैट बाय द वे नहीं. टिकू जो तन्मय भट्ट जैसा दिख रहा है ना चैट के हाँ. मुताबिक उसने गुकेश का फोटो का शर्ट पहना है ओ. हाँ उसके शर्ट पे गुकेश का वाह. फोटो है एंड उसके नीचे कुछ लिखा है सो मिश्रा वाज आस्किंग इफ वी कैन रीड चैट कैन एनीवन ऑफ यू go back and spot it what is written on this white shirt what is written on the white shirt नॉट अभ्युदय लेफ्ट साइड वाला गुकेश के पीछे जो है भाई G4 के बाद रुकी 3 ओनली मूव और वाइट विंस. ओ ओ ओ ओके भाई पर वही खेलेगा ना भाई, और क्या खेलेगा. यू नेवर नो G4 Ukesh, come on G4. G4 तो खेलेगा किंग इनटू G7 इज जस्ट अ स्ट्रेट ड्रॉ चेक में लिखा है कुछ ओके अरे अमन थैंक्स चलो भाई, ड्रॉ हो गया भाई. या जीजी's Yeah, the long day chat. This is going to be a draw. I think we knew it for a long time. And it is a draw for the world champion. Something I don't think he'll be super happy by, but I mean, there wasn't a moment where he was really winning, so not much he can do. But yeah, a draw. Yeah, draw incoming there. Rooks traded. Play turn till Bear Kings, though. Gukesh fought, but just not enough Tiku. But that means Gukesh goes to 1 point out of 4. No wins. And bhai, look at the respect once again shown by David Yeah. Navara. खड़े होके handshake किया. He has respect for the world champion, but not the ideal start for the world champion Tiku. Yep, he's on -1 score. 4 rounds हो चुके हैं, 5 to go. He would David Navara खुद के ढाई है भाई. So Gukesh would love to get a comeback, and who other than Nodirbek, to play tomorrow to get that epic comeback with the black pieces. So Oh, that's yeah. going to be a tough one, bhai. I am already feeling scared for tomorrow. Yeah, chat. So chat, thank you for joining in. Stay safe, stay calm, and कल मिलते हैं भाई, hopefully. And oh, by the way, shout out to काफी लोगों ने चैट में आई थिंक सचिन वगैरह ने लिखा था संचित and Vidushi as well for the translation and decoding what was written on that guy's shirt. We appreciate that and yeah, Tiku bhai ने सब कुछ बोल ही दिया but thank you chat, thank you समय bhai. Hopefully tomorrow is a new day and Indians score a few wins but overall long day. Tiku, take it away. Yeah, it was a long day indeed. I think Aravindh suffered a loss again, so that was heartbreaking. 3 other draws. So tomorrow it's going to be a super important round because it's halfway to the tournament. And kal jo lead kar raha hoga just before the rest day is likely going to win the event. So Gukesh needs to win tomorrow against who else other than Nodirbek, unke arch rival. Reverse versus, Flash versus reverse Flash. Batman versus Joker. I don't know who the Batman is, who the Joker, but the point is, it's a rivalry building up, and it's going to be fascinating tomorrow. So, chat, thank you for joining. Thank you, Rakesh Bhai, for joining. Thank you, Surya, for the production. And we're going to see you tomorrow with some epic chess, hopefully. Goodbye, chat. Good night.